नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन कोलैबोरेशन विद द साउथर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जॉइंटली ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर श्री वी रघुनंदन जी सर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। रघुनंदन सर हमारे ट्राई के एक्स सेक्रेटरी है और टेक्नोक्रेट पर्सन है और आज वो हमारे साथ इंटरेक्शन भी करने वाले हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री मृणाल शुक्ला सर, नीरव मांडेवाला सर, विजय मेवाला सर, वी रघुनंदन सर, SS चंदक सर, निखिल मद्रासी सर एंड रमेश वगासिया सर, अंकित पटेल सर, पुनीत भाई गजेरा। This all dignitary I would like to request to take a seat on the dais. हम किसी भी फील्ड में बस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इस 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरकार पर आके हम आ चुके हैं। इन सभी क्राइटेरिया के बीच में 5G भी अभी तबक रहा है। हमने 2G देखा, 3G देखा, 4G देखा, करंट अब 5G आ चुका है। लेकिन 5G का करेक्ट इस्तेमाल क्या एक्चुअल यूजेस है, वो भी हमें उसके जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से जानना जरूरी है। आजकल 5G एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में काफी तरह से यूजफुल हो रहा है। बस उसी के ऊपर आज हम पूरा टेक्निकल जो सेशन है करने वाले हैं। फिर से मंच पर विराजमान सभी महानुभावों और आप सभी मंच के सामने उपस्थित आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन की शुभ शुरुआत हमें गॉड की आराधना से, ईश्वर को याद करके करना है। सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑल द डिग्निटरीज फॉर द लाइटनिंग्स ऑफ द लैंड। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को हेल्थ हम सभी का हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इस टेक्नोलॉजी से माध्यम से सही रहे, बस उसी प्रार्थना करते हैं। अब हमें कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाना है। हमारे चीफ गेस्ट उपस्थित है, उसका हमें फ्लोरल फेलिसिटेशंस करना है और मोमेंटो भी प्रेजेंट करना है। आज के 5G यूज केसेस इन एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर के चीफ गेस्ट हमारे वी रघुनंदन सर का हमें सम्मानित करना है। मैं सर को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसका फेलिसिटेशन करेंगे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री विजय मेवाला सर। मैं विजय मेवाला सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के हमारे चीफ गेस्ट ट्राई के एक्स सेक्रेटरी श्री वी रघुनंदन सर का फेलिसिटेशन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। रीजनल ऑफिस जयपुर ट्राई से एडवाइजर श्री SS चंदक सर भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी हमें फ्लावर और मोमेंटो से फेलिसिटेशंस करना है। मैं प्रेसिडेंट श्री विजय मेवाला सर को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज के सदस्य एवं श्री SS चंदक सर का हम फेलिसिटेशन करेंगे। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और एंथुजियास्टिक सभी कार्य के लिए हमेशा रहते हैं। ऐसे प्रेसिडेंट श्री विजय मेवाला सर का
फेलिसिटेशन के लिए मैं श्री SS चंदक सर को विनंती करूंगा। ट्राई की ओर से सर आपका फेलिसिटेशन हम करना चाहते हैं। हमारे बीच अंकित पटेल सर भी उपस्थित है, उनका भी हम फेलिसिटेशन करना चाहेंगे। सीनियर रिसर्च ऑफिसर श्री अमित प्रकाश सर को विनती करूंगा कि सर का फेलिसिटेशन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सर का। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। बस आज के इस टेक्निकल सेशन का हमें इनॉग्रेशन भी करना है, सेरेमोनियल एड्रेस भी करना है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जाम पैक आज फूल છે એકદમ ઓડિયન્સ। સવારમાં બધા ચા નાસ્તો કરીને આવ્યા હશો। ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ। આજના સેમિનારમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। ऐसे तो 5G टेक्नोलॉजी बहुत सुना है हम लोगों ने, आप लोगों ने और हर एक ने। बस अब 5G आ रहा है, 5G आ रहा है, 5G आ रहा है। खाली बस मोबाइल को ही, अब हमको सब मालूम था कि मोबाइल में ही 5G आ रहा है, मगर 5G टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ उनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ वो यूजफुल है, वो जानकारी के लिए आज ये सेमिनार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्राई के माध्यम से जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। तो इस सेमिनार में बहुत सारी कुछ जानकारी मिलेगी आपको, बहुत सारा क्वेश्चन पूछोगे, उनका भी आपको सही आंसर मिलेगा। इस सेमिनार में आप सबका स्वागत है। मंच पर उपस्थित भारत सरकारनी टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जयपुर रीजनल ऑफिस एडवाइजर श्री SS चांडक जी, ट्राई पूर्व सेक्रेटरी श्री V रघुनंदन जी, SV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत प्रोफेसर डॉक्टर उपेन्द्र दलाल, नोकिया रेग्युलेटरी अफेर्स एंड इंडस्ट्रीज रिलेशंस हेड श्री अमित भाई आनंद, मेसर्स इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम इन ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंसी अरविंद भाई उर्गंटी, SVNIT सूरत असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र भाई पाल, जानीता एडवोकेट एंड साइबर सिक्योरिटी डॉक्टर निष्णात चिंतन भाई पाठक, ट्राई जयपुर रीजनल ऑफिस जॉइंट एडवाइजर JP गर्ग, અને અમારા હમણાં પધરેલા ફિક્કીના શ્રી અંકિતભાઈ, મારા SGCCI ના સાથી મિત્રો, મારા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, માનદ મંત્રી શ્રી નીરવભાઈ માંડલેવાલા, IT કોમ્યુનિકેશન એન્ડ IT પાર્ક ડેવલપમેન્ટ SGCCI ના ચેરમેન શ્રી પુનિતભાઈ ગજેરા, ચેમ્બરના સભ્ય હાર્દિકભાઈ ચાંચડ, ડિગ્નેટરીઝ ઓન ધ સ્ટેજ एंड ऑफ द स्टेज, IT क्षेत्रना उद्योग साहसिको, वेपारीओ, सज्जनों और सन्नारीओ, आप सौने आजना कार्यक्रम में हूँ हृदयथी आवकारू छूँ। हमारा ग्रुप चेरमेन श्री मितेश भाई मोदी पण अहीं हाजर छे। मितेश भाई मोदी ने पण हूँ आवकारू छूँ। मित्रों, टेक्नोलॉजी भारतना सर्वांगी विकास माटे खूब ज जरूरी है। 5G टेक्नोलॉजी उपयोग थी रियल टाइम डेटा ने कारण उद्योगों द्वारा विविध प्रोडक्ट की उत्पादन प्रक्रिया में झड़प लावी शकाय छे ने आ टेक्निक सप्लाई चेन ने ऑप्टिमाइज करे छे ने ऑटोमेशन में सुधारो लावे छे, जेनाथी कार्यक्षमता वधे छे अने उत्पादन खर्च में पण घटाडो आवे छे। ते ज समये ते सस्टेनेबल प्रेक्टिस द्वारा क्रिटिकल एनवायरमेंट चेलेंजीस ने पण उकेल लावे छे। 5G टेक्नोलॉजी ना उपयोग थी स्मार्ट मैन्युफेक्चरिंग करी शकाय छे। आ टेक्निक थी रियल टाइम मॉनिटरिंग करी शकाय छे। ऑटोमेशन, IT इंटीग्रेशन, ट्रांसपरन्सी, डेटा एनालिसिस, मशीन विजन सिस्टम, रिसोर्स मैनेजमेंट अने कस्टमाइज करीने उत्पादन प्रक्रिया में झड़पी सुधारो लावी शकाय छे। साथे ज प्रोडक्टनी डिजाइन में वैश्विक तबक्के चालता ट्रेंड मुजब डेवलपमेंट करी प्रोडक्ट ने ग्लोबली मार्केट में स्पर्धात्मक बनावी शकाय छे।
આજે દુનિયાના દરેક દેશોને ગ્લોબલી માર્કેટમાં એન્ટર થવું છે અને ગ્લોબલી માર્કેટમાં ટકવાનું હોય છે. માટે આવી બધી સિસ્ટમો 5G ટેકનોલોજી હોય કે આવી જે એડવાન્સ ટેકનોલોજી એનો ઉપયોગ કરો તો જ આપણે વૈશ્વિક બજારમાં વૈશ્વિક કોમ્પિટિશનમાં અને ગ્લોબલી માર્કેટમાં ટકી શકીએ. ને તો જ આપણે મોદી સાહેબનું જે વિઝન છે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની આપણી ઇકોનોમી, $1 ટ્રિલિયન એક્સપોર્ટ, જેથી કરીને આપણે ત્રીજા નંબરની મહાસત્તા 2027 સુધીમાં 2030 સુધીમાં બની શકીએ અને વિકસિત ભારત 2047 અંતર્ગત આવા બધા પ્રોગ્રામોને આધારે આપણે વિકસિત ભારત 2047 સુધી આપણું ઇન્ડિયા, આપણું ભારત નંબર 1ની ટોચ પર આવે એવી આવી બધી ટેકનોલોજીથી આપણે એને સ્થાપિત ને પ્રસ્થાપિત અને એચીવ કરી શકીશું. 5G ટેકનોલોજી લાઈફ સાયન્સ એન્ડ હેલ્થકેર સેક્ટરમાં ટેલિમેડિસિન, રિમોટ પેશન્ટ મોનિટરિંગ અને અદ્યતન મેડિકલ ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ વધારે છે. ઝડપી ડાયગ્નોસ્ટિક થકી દર્દીઓના સારવારમાં પરિણામોનો સુધારો લાવે છે. કૃષિ ક્ષેત્રમાં આ ટેકનિક ક્રાંતિ લાવી છે. એનાથી પાક પર દેખરેખ રાખવા, સિંચાઈને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવા અને ખાસ કરીને ડ્રોન રિયલ ટાઈમ ડેટાનો ઉપયોગ કરી ખેડૂતોને સસ્ટેનેબલ ફાર્મિંગ પ્રેક્ટિસીસ તરફ દોરી જાય છે. આ ડ્રોન ટેકનોલોજીનો અમે એક ઇનિશિયેટિવ લીધો છે કે ડ્રોન ટેકનોલોજીથી દવાનો છંટકાવ કરવો, જેથી કરીને ઝેરી દવાઓ જે છાંટતા હોય છે ગામની રિમોટ એરિયાની આદિવાસી મહિલાઓ કા પુરુષો કા નાના બાળકો, એ લોકોને પોતાની હેલ્થ પર અસર ના થાય અને ડ્રોનથી એ દવાનો છંટકાવ થાય તો ઘણી રોગચાળો પણ બચી શકે છે અને પર્યાવરણને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. એમાં પણ 5G ટેકનોલોજી આપણે અમલમાં લાવી શકીએ છીએ. ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ડેવલપમાં આ ટેકનિક મહત્વની ભૂમિકા તો ભજવે જ છે, પણ તેની સાથે લોકોના જીવન ધોરણમાં, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓના ભણતરમાં સુધાર કરવાની સાથે સાથે પર્યાવરણની પણ જાળવણી કરે છે. આથી આ ટેકનિક વ્યક્તિગત અને આર્થિક રીતે દેશના સમૃદ્ધ ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ટેકનિકને કારણે ઉદ્યોગકારો અને વેપારીઓ આખા વિશ્વના ઉદ્યોગકારો સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને પોતાના બિઝનેસને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જઈ રહ્યા છે. 5G ટેકનોલોજી વિશે આજના નિષ્ણાતો આપણને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપશે, ત્યારે ફરી એકવાર આપ સૌનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આ ટેકનોલોજીથી કલ્લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં જે હતું ધીરુભાઈનું સ્વપ્ન, એટલે આજે તમે ગમે ત્યાં બિઝનેસ કરતા હો એવું લાગે કે આપની પડોશમાં જ છે, ભલે અમેરિકા બિઝનેસ કરતા હો. આ ટેકનોલોજીનો આપણે વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરીએ અને વધુમાં વધુ વિકસાવીએ તેવી શુભેચ્છા સાથે હું ફરી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરવી. થેન્ક યુ સર. સરે ખૂબ સરસ વાત કરી. હા, જેવી રીતે 5G ટેકનોલોજી અને ઓવરઓલ ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે, બસ એની સાથે સાથે આપણા પ્રેસિડેન્ટ્સ અને સમગ્ર ટીમ પણ આપણા સાઉથ ગુજરાતના ઉદ્યોગો છે એમને પણ વિકસવા માટે એમના પણ પ્રશ્નોને લઈને ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે 5G સ્પીડની સાથે. એટલે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ટીમને પણ અમે શુભકામના પાઠવીએ છીએ. નાઉ આઈ વુડ લાઇક ટુ ઇન્વાઇટ ફોર ધ વેલકમ એડ્રેસ એડવાઇઝર ટ્રાઈ રિજનલ ઓફિસ જયપુર, શ્રી S.S. ચંદક સર. Good morning. Good morning. On behalf of TRAI Regional Office Jaipur, I welcome our chief guest and keynote speaker, Shri V. Raghunandan, ex-secretary TRAI headquarter New Delhi. मैं आपको बताना चाहूँगा कि he has taken valuable times. Actually, he had a meeting with secretary DOT. अभी शायद आप लोग को पता हो WTSA की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें करीब 120 कंट्रीज है. हेलो हेलो. सो मैं बता रहा था कि करीब 120 कंट्री से लोग आ रहे हैं और ही हैड अ मीटिंग ऑन 2nd, बट चूँकि वो साउथ चैम्बर ऑफ गुजरात और आप बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते थे, ही हैज़ पोस्टपोन्ड द मीटिंग एंड ही हैड कम ओवर हियर. तो मैं आप सभी से ये चाहूँगा कि यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. मतलब जस्ट आपको सेमिनार नहीं अटेंड करना है, आपको इंटरेक्शन करना है.
और आपको दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम. ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वेलकम श्री विजय मेवावाला जी, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसके अलावा श्री निखिल मद्रासी जी, वाइस प्रेसिडेंट SGCCI, रमेश वकाशिया जी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट SGCCI, नीरव मंडलेवाला जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी SGCCI, मृणाल शुक्ला जी, ऑनरेबल ट्रेजरर SGCCI, अंकित पटेल जी, चेयरमैन गुजरात फिक्की CMSME, पुनीत गजेरा जी, चेयरमैन IT कम्युनिकेशन एंड IT पार्क डेवलपमेंट SGCCI. I also welcome today's speaker, Dr. Upena Dalal, Professor SVNIT, Shri Amit Anand ji, Head Regulatory Affair and Industry Relation Nokia, Shri Arvind Varganti ji, Global Vice President Information Data System, Raghavendra Pal ji, Assistant Professor SVNIT Surat, Shri Chintan Pathak ji, Advocate and Cyber Security Expert. I also welcome all the office bearer and member of South Gujarat Chamber of Commerce and Industries. I welcome my TRAI colleague, students of various colleges, CAG member of Gujarat State, officer and official from DOT, BSNL, other central government and state government and PSUs, executive from telecom service provider, representative from press and media in the seminar Technology Trend 5G Use Case in Education, Manufacturing, Smart Infrastructure, Life Science and Healthcare, organized by TRAI Regional Office Jaipur in collaboration with South Gujarat Chamber of Commerce and Industries, Surat. TRAI Regional Office Jaipur is looking after 4 license areas, that is Rajasthan, Gujarat, Haryana and Punjab, which also cover union territories of Chandigarh, Daman Diu, Dadar and Nagar Haveli. One of the functions of TRAI as envisaged in the TRAI Act 1997 to make recommendation for technological improvement in the services provided by the telecom service provider and to take measures for the development of telecommunication technology. In view of the above, TRAI organized such seminars in the contemporary topics relevant to telecom and broadcasting industries. It involves stakeholders such as central government, state government, academia, college student and representative from the industries. As you all aware, in India 5G services was launched in October 2022. As per the latest information, about 17 crore people are using 5G in more than 7,700 towns. Total number of 5G BTS are more than 4.5 lakhs. It is estimated that by 2029, more than 84 crore people will be using 5G technology. Applications that converge connectivity, intelligent edge, and Internet of Things technology will benefit everyone from gamer to the government. Now we see the collaboration of technology. If we see IoT with 5G, then everything from home thermostat to smart city sensor depends upon the IoT technology. 5G giving devices nearly real-time ability to sense and respond. 5G and IoT are natural pairing that will impact nearly every industries and consumers. Now we talk about smart city AI and 5G. Convergence of AI and 5G will benefit every type of business. Even in the smart city, AI and 5G could correlate traffic data automatically depending upon the traffics. If we talk about virtual reality with 5G, low latency of 5G will drive major innovation in virtual reality. VR applications which depends on fast feedback and response time to provide realistic experience to us. Now we see how 5G will affect different sectors. If we take healthcare, then 5G healthcare use case will enable doctor and patient to stay more connected than ever. Wearable device could alert healthcare provider
when patient is experiencing symptoms of health related issues. If we talk about agriculture and 5G, the farms of the future will use more data and fewer chemicals. Taking data from sensor located directly in the field, farmers can identify with pinpoint precision which area need water and which area require pest management. If we talk in the case of manufacturing, which is prevalent in our Surat, factory floor will be totally transformed by the convergence of 5G, AI and IoT. Due to predictive maintenance, costs can be controlled and downtime can be minimized. Factories will also use 5G to control and analyze industrial processes with precision. Every new technology brings us opportunity as well as challenges. Major challenges in 5G is vulnerability of cyber attack, cost of the new infrastructure, and skilled manpower to handle such huge network. Now I would like to give you details of the topic covered in the seminar. Dr. Upena Dalal will cover 5G technology in Indian telecom network, evolution of 5G ecosystem for development of 5G use cases. Shri Amit Anand will cover 5G use cases in manufacturing, mining and port management. Shri Arvind Varganti will give presentation on 5G use cases in education, life science and health cases. Dr. Raghavendra Pal will cover 5G use cases in agriculture, logistics and smart infrastructure. Sri Chintan Pathak will give presentation on cyber crime and frauds. Prevention lies in awareness. We have very carefully selected the topic and called the eminent speaker in the seminar. I hope that deliberation and discussion in the seminar will be useful for all of us. Thank you. થેન્ક યુ સર. આપની વાત પરથી અમને એવું લાગ્યું કે આ સમયમાં અપડેટ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. જે લોકો અપડેટ નથી રહેતા એ આઉટડેટેડ થઈ જતા હોય છે ને એટલા માટે જ આવા બધા પ્રયત્નો દ્વારા ટેકનિકલ નોલેજ આપણા સૌમાં ઇનપુટ્સ થાય એવા પ્રયત્નના ભાગરૂપે હંમેશા ટ્રાય એન્ડ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પ્રયત્નશીલ હોય છે અને અમારા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના હંમેશા એન્થુઝિયાસ્ટિક સેક્રેટરી પણ આવા પ્રયત્નો હંમેશા કરતા હોય છે. એવા શ્રી નીરવ માંડલેવાલા સરને વિનંતી કરીશ કે આજના પ્રોગ્રામ વિશે આપણને બ્રીફ આપશે. નીરવ માંડલેવાલા સર. મંચ પર ઉપસ્થિત દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડાયનામિક પ્રમુખ એવા વિજયભાઈ મેવાલા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિખિલભાઈ મદ્રાસી, ટ્રાઈના એક્સ સેક્રેટરી એવા વી રઘુનંદન સર, ફિક્કી ગુજરાતના CMSMEના ગુજરાત રિજનલ ચેરમેન અંકિતભાઈ પટેલ, ટ્રાઈના ચાંદક સર, આ કમિટીના IT પાર્ક કોમ્યુનિકેશન એન્ડ IT ડેવલપમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન એવા પુનિતભાઈ ગજેરા, ઉપસ્થિત સૌ આજના દિવસના નિષ્ણાંત વક્તાઓ અને આનો જે 5G ટેકનોલોજીનો જે લાભ લેવાના છે એ આવેલા સૌ ऑडियंस मित्रों. रघुनंदन सर, मुझे आपको आज सूरत की एक बात बताते हुए काफी गर्व हो रहा है. पूरे विश्व में मोबाइल इंटरनेट का मैक्सिमम अगर कंजम्पशन कहीं पे हो रहा हो तो वो सूरत शहर है. मोबाइल नेट के अलावा, मोबाइल यूसेज के अलावा इंटरनेट का मैक्सिमम कंजम्पशन अगर हो रहा हो तो पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे सूरत सिटी आता है. और इसी को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली सूरत में गूगल की टीम ने भी एक विजिट की थी. दे वर फोर्स्ड टू विजिट सूरत के इतना कंजम्पशन यहाँ पे क्यों हो रहा है वो रिसर्च करने के लिए आए हुए थे. और सूरत के एक एरिया को इंटरनेट कंजम्पशन और इतनी IT कंपनी यहाँ पे है जिसकी वजह से एक डिजिटल वैली भी एक एरिया को नाम दिया गया हुआ है. मित्रों, 5G टेक्नोलॉजी उद्योग ने डेवलप થવાની તેમજ ગ્લોબલી સ્પર્ધાત્મક બનવાની દિશામાં પરિવર્તિત કરવા આશીર્વાદ રૂપ છે, જે ઉદ્યોગો માટે નવીનતા અને કાર્યક્ષમતા અભૂતપૂર્વ સ્તરને વધારે છે. આજના પ્રોગ્રામ ટેકનોલોજી ટ્રેન્ડ્સ 5G cases in education, manufacturing, smart infrastructure, life science and healthcare, agriculture with TRAI
માં આ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 5G નું લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ અને રિયલ વર્લ્ડ એપ્લિકેશનોને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે 5G અપનાવવાથી વર્ષ 2025 સુધીમાં વૈશ્વિક સ્તરે ઈ-લર્નિંગ એન્ગેજમેન્ટમાં 50% વધારો થવાનો એક અંદાજ છે. 5G ટેકનોલોજી આ ક્ષેત્રને અવિશ્વસનીય પરિવર્તન લાવી શકે છે. 5G અલ્ટ્રા ફાસ્ટ કનેક્ટિવિટી, ઇમર્સિવ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ અને રિમોટ લર્નિંગને સક્ષમ કરી રહ્યું છે, જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે જબરજસ્ત ક્રાંતિ લાવી રહ્યું છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે પણ 5G ટેકનોલોજી અમૂલ્ય પરિવર્તન લાવી શકે છે. એક અંદાજ મુજબ 5G સંચાલિત સ્માર્ટ ફેક્ટરીઓ વર્ષ 2030 સુધીમાં વૈશ્વિક જીડીપીને $350 બિલિયન સુધી વધારી શકે છે. ઉત્પાદકો રિયલ ટાઈમ ડેટા એનાલિટિક્સ, ઓટોમેશન અને ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ IoT માટે 5G નો કેવી રીતે લાભ થઈ રહ્યા છે અને તેના ઉપયોગથી તેઓ ઉત્પાદનની કાર્યક્ષમતા વધારી રહ્યા છે તે અંગે પણ આ પ્રોગ્રામમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. જ્યારે સ્માર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત આવે છે ત્યારે વૈશ્વિક સ્માર્ટ સિટી માર્કેટ વર્ષ 2030 સુધીમાં $820 બિલિયન ને વટાવી જવાનો અંદાજ છે. 5G ટેકનોલોજીની જે સોલ્યુશન્સ મળશે તેનાથી પરિવહન અને સુરક્ષા પ્રણાલીઓમાં કાર્યક્ષમતા વધારી શકાશે, જે સસ્ટેનેબલ અને ઇન્ટેલિજન્ટ અર્બન એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરવામાં મદદરૂપ થશે. આ જ પ્રમાણે લાઈફ સાયન્સ હોય કે હેલ્થ સેક્ટર હોય કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર હોય, તમામની અંદર 5G ટ્રેન્ડથી શું ઉપયોગ આવશે એના વિશે આજના કાર્યક્રમમાં આપને જાણકારી આપવામાં આવશે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અહીં ઉપસ્થિત નિષ્ણાંત વક્તાશ્રીઓ આપ સર્વેને એજ્યુકેશન, ઉત્પાદન, સ્માર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લાઈફ સાયન્સ અને હેલ્થકેર, કૃષિ ક્ષેત્ર તથા વિવિધ ઉદ્યોગોને ફરીથી રીશેપિંગ થવા, ગ્રોથ માટે નવી તકો ઊભી કરવા, એફિશિયન્સી સાથે ઇનોવેશન કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપશે. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. हेलो, थैंक यू सर. ट्राई भी हर हमेश 5G और एनी टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट के लिए हमेशा प्रयत्नशील होती है और आज हम बहुत गर्वान्वित है क्योंकि आज हमें इस टेक्निकल सेशन में हमारे चीफ गेस्ट मिले हैं श्री वी रघुनंदन सर. वो ट्राई के एक्स सेक्रेटरी है और बहुत ही टेक्नोक्रेट पर्सन है. He retired from the position on May 31st, 2024 and he played a vital role in formulating policy and regulation and various recommendations in telecommunication and broadcasting sector while working as a secretary TRAI. बस मैं सर को ही विनती करता हूँ कि सर आप आइए और आज के इस टेक्निकल सेशन के की नोट एड्रेस और डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस टेक्निकल सेशन करिए. आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री वी रघुनंदन सर. Madrasi sir, secretary sir, Mr. Mira, dignitaries on the dais, and also my beloved friend Sri Chandra, the eminent speakers from various institutions and colleges and universities, and the speakers from industry. So, good morning to all of you. First of all, I may kindly be excused just to giving speech from by sitting here. I had slightly back pain yesterday, so I may kindly be excused. Because I thought of it's not an address or speech. I wanted to make it a more of an interactive session and then tell you about and share some thoughts about the 5G development and then the use cases and then coming technological revolution in that sense. मैं हिंदी में भी बात करता हूँ. In between I mix because इतना I am not that much conversant in Hindi, but फिर भी कोशिश करता हूँ जितना हिंदी में बात कर सकता हूँ तो करता हूँ. And first of all, I am delighted to see the hall full. And then the purpose of coming here, it has been my dream. The first time I am visiting Surat. So I am grateful to entire Chamber of Commerce for actually having organized this along with TRAI and others. Really I am delighted and definitely from bottom of my heart
I share my sincere gratitude to all of you. So the purpose of coming here was, it is the Honorable Prime Minister has launched the 5G, तो 2 साल के पहले किया था, उसके बाद ऑपरेटर्स ने बहुत कोशिश करके इतना 5G फैलाया across India, 7,000, 8,000 towns. It is now approximately more than 5 lakh BTSs have been installed across India. But still, the use cases are yet to be deployed. So इसके लिए हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं. So this is the purpose of my coming here is to interact with you and give some thought processes how Surat can lead and take a first step in being an industrial city. And अभी मेरा साहब बोल रहे थे. So second in the whole of this thing, internet usage, and first in the. So I wanted to tell him that Surat should lead the first in the use cases. That is what my wish actually of coming here, one of these, because it is so much development. I am really surprised to see that one of the most advanced cities like it is there, Surat. So you आपका फायदा उठाना है इसका actually. You must actually take and how to actually linkage, how to have a linkage with so many different institutions and also the policies of the government to see that the 5G use case development is maximized or optimized at least. वही मेरा thought process था. So first of all, let me just tell you, it is not that 5G use case means it is a big use case. So ऐसा नहीं है कि. So 5G use case can come from a small startup. So that is why the government of India is giving a lot of importance to small startups. Even some of the students have developed some of the good applications. But उसको आगे बढ़ाना है. कैसे आगे बढ़ाना है? Actually, that is our. The onus is on all of us to see that these use cases are deployed for the societal benefit and then maximizing the business potential, the employment potential, everything. This is the purpose we should aim at. So I was fortunate to be a part of the 5G recommendation itself. It was around 400-page recommendation which we have given to the government and immediately government accepted, and then the 5G auctions took place. It was one of the smoothest auctions and went through everything smoothly. Then Honorable Prime Minister has launched and then उसके बाद deployment भी हो गया. So but use cases अभी भी develop हो रहा है, not deployed in a large scale. The first of all, one thing which I wanted to link up is the government recently in the recent budget, you might have seen, one of the few things I will share from the budget itself. So upgradation of ITIs. You might have heard about the upgradation of ITIs, Industrial Telecom Training Institutes, ITIs. So that has been one of the focus of government. So nearly about, if I remember correctly, the number around 1,000 ITIs to be upgraded. So they also don't have an knowledge or the idea what I have to do with the upgradation. मैं अभी सुबह चांदक साहब से भी बात कर रहा था. And also, if I remember correctly, NIT, SVNIT is one of the developers for the 5G. For that also they are there. But again, developing the 5G technology may not be fully necessary. 5G is already developed technology. Now, what India needs and Surat needs and all of us need is the exploitation of 5G technology and development of use cases and the ecosystem development. So that is where a small startup can play a major role. Small ITI can play a major role. Small university may a small department and every student can play a major role. So what has to be done now is that I was just discussing few thought process with Chandak sir. वही मैं इसलिए मैंने वहाँ से आए थे just to take part in this. Is that to start with, anyway ITIs have been given some task of upgradation. So they should be upgraded means what they should do. So Chandak sir was telling that anytime we give some funding to some institution, what they will do is first immediately technology को छोड़ देते एक building बनाते हैं खर्चा करने के लिए. But actually your existing whatever infrastructure is sufficient. You have that, and how to maximize that using the technology. So we all talk about the smart cities, smart villages, etc. The villages are all there, and then if you wanted to become smart, what is the component of smartness? That is the information communication technologies. If there is no smartness, the city is good. City is well developed, and say whether a village or city, it could be well developed.
But if you wanted to have a sustainable development and make it more smarter, more energy saving technologies, more connectivity, and then how to maximize the usage of data, etc., that is called smart and sustainable cities. The ITU, International Telecommunication Union, had come out with not smart cities. First, initially smart cities were the development focus of ITU. But now ITU has told that no, smart cities alone is not sufficient. Smart and sustainable development. इसके लिए ICT component चाहिए. How to exploit the technology potential into that, then it becomes smarter. So otherwise city is city and then it is not sustainable. So waste management के लिए technology कैसा use करना है. ये सब then only it becomes smart. I have seen 100 smart cities. India's program is there. So we need to take take it forward. The 100 smart cities का वो component add करके लेके जाना. So for example, ITI, I will just come back to ITI. Maybe a little bit more talk I will, that is why I wanted to sit and talk. So ITI, just what ITI can do for this? I am just starting from scratch. So recently, of course you also, now 16th October is the IMC inauguration by Honorable Prime Minister along with the WTSA. Some of the students from Surat and also from NIT. So they should visit IMC and then see the use cases development already done everywhere. And they will be deployed there and you will have an idea, more idea. So I am just giving one of the such small use cases of ITI. What way 5G can help and then etc. So in fact, Chandak साहब को last time IMC में मैंने उनको लेके गए थे फिर एक बार. So उनको दिखाया था कि see there is something called smart painting gun. So something called it is. So supposing in ITI you are being taught about a spray painting. So if you wanted to do spray painting, ये color करवाना है और उसके क्या होता है वो गन लेके वो पूरा पेंटिंग करना है. इसके लिए पेंट चाहिए आपको, गन चाहिए and then you have to put that and afterwards again you have to remove that and again put another plate for this. आपको सिखाना है. So what happens is the smart gun and then using the AR/VR technology, so you can apply a correct pressure and correct angle and then do some smart painting. So when I did that painting, spray painting, I got around 80 marks. So then I thought, okay, at least pass तो हो गया, मैंने fail नहीं हुआ. Then that person told me, sir, you can just see, it gives a report. आपका angle कितना था वो while painting, angle कितना था, pressure आपने कितना किया, distance कितना किया, ये सब it gives the along with marks what corrections are to be applied. So it will give the correction also. So it teaches you how to improvise. Then again I did my second iteration. So 90% हो गया मेरा. मैंने वाघेला साहब को भी वहाँ लेके गए थे. वाघेला साहब को मैंने पहले ये बताया था, then वाघेला साहब ने 90% स्कोर करके पास हो गए. इसका मतलब यही बता रहा हूँ कि in ITIs you have to identify this kind of a use case where the 5G can be applied. AR/VR में होता है and afterwards AR/VR में होता है पेंटिंग. आप ऐसे करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, दिखता है कि वो आप कर रहे हैं. So that kind of use cases, virtual use cases, you will bring in the ITIs, and not only that. Now we were trying to do something of MSMEs को कैसा जोड़ना है. ITIs also can collaborate with the small and medium enterprises. Where the chamber can play a role in bringing them and then उनको जुड़ा के actually what they can do together. So what is the requirement of MSME and how ITI can develop a small use case. So उनको actually we should bring them and then ITI's upgradation anyway it has to take place. So each ITI can take up, okay, I will take up this and then I will upgrade myself using this funding. So this use case alone. One use case or even two use cases are sufficient for an ITI. Even one use case is sufficient. आप upgrade कीजिए, 5G का deployment कीजिए वहाँ, upgrade कीजिए, then you can वो MSME के साथ जुड़ाइए, and then that is where the technical hubs, वो T-hub हमने हैदराबाद में देखा था, वहाँ actually that kind of a concept. So the small hubs chamber can think about it, where to have such kind of hubs, and then where ITIs and then MSMEs can come together, and then each other can collaborate with others, and then develop the use case. So if I just give a lecture and then go, okay, ठीक है, ये हो गया, बस क्या करना है कभी. So I have given every time, even Tirupati, I had gone to Tirupati a few months back, and then वहाँ SWIMS Institute was there.
Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences. So it is under Tirupati TTD Devasthana. So that vice chancellor was a very close friend of mine. So we had been there. So we have brought not only that, a health का use cases क्या है, वहीं पर live demonstration हमने किया था live. We have brought these startups and then brought them together. So we didn't want to do any seminar or this thing just like that. It will become one-off event and it goes off. People भूल जाएंगे बाद में कुछ नहीं होगा. So we will be wasting our time. Although थोड़ा सा आपको idea मिल जाएगी क्या है 5G का, but इसको आगे बढ़ाना है. That is the purpose of our whole seminar is not to just have a one-off event. मैं चांदक साहब बार-बार प्रेसिडेंट साहब से सेक्रेटरी साहब से सबसे मिलना है और यूज केस का कैसे डीओटी से भी मिलजुल के एक्चुअली हम काम कर सकते हैं. So we can guide that in case of a, so it will be a continual process now onwards actually. So Chandak sir can keep visiting along with the other DOT officers. So that's the purpose of this coming here. So I have given example of ITI. So then actually President साहब भी बोले थे agriculture में drone का usage actually. So drone usage is not that every farmer can own the drone and then he can start doing it. There are some revenue models which are developing. I had a agriculture university at Tamil Nadu में मैं गए थे. We have organized. So what they wanted is farmers. They cannot own the technology and do all these small farmers. So there should be a methodology by which there will be a drone service provider, application provider. So there will be a, now you can see the, think of, have the farmers and then one few persons, chamber can play a role in that, agriculture. So those people will own the drones. They will have the applications. They will come say 1 hour, 2 hours. 2 hours I will come for one. एक एकड़ का क्या कितना चाहिए आपको 1 hour का पैकेज दे. 2 hours का क्या? I had actually close interaction with the on rent pay. This is the model which we can actually work. I had a number of interactions with the agriculturists and the farmers. Farmers alone immediately, if you tell him you own the technology and you start using it, they will not be able to sustain that. So आपका उसके लिए आपको मदद करना है उसको. So ये use case develop करना है. ये use case एक 1 or 2 persons, it will become a business case for him, and he will be contributing to the helping the farmers. And then वो farmer भी उससे economic package मिल जाएगी उनका थोड़ा सा. 2000 में मुझे पूरा इसको ये करना है. So fertilizer deploy करना है. वो कैसा smart farming करना है. Or whatever it is. So this model will develop. And employment मिल जाएगी. बहुत सारा students को है ना ये employment मिल जाएगी. Students are those who wanted to start up and then have it. So they can actually own a small drone and then so one village they can adopt and then one village में जाके आपको पूरा कैसे करना है. Then master it. Then go to the next village. So this is the one which we need to have in the agriculture use cases. So ITI का कैसे जोड़ना? ITI people also can do this. Drone में क्या कैसे करना है वो भी. It's not that ITI should not be part of this. So because the government's focus is on the ITIs, so we should maximize the potential of ITIs का उसको upgradation का क्या use case हम develop कर सकते हैं वो उसमें हमको actually focus करना है. वही मेरा point है यहाँ. और बजट में स्किलिंग का भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्किलिंग का. तो that skilling में ये भी थोड़ा सा actually we can give suggestions to that. So if we interact with ITIs, chamber can interact with ITIs and then NIT can take a lead and guide them that okay, पूरा सूरत में और first to start with सूरत में ITIs को NIT, SVNIT कैसा कर सकते हैं. So this can be the one of the points of action after this meeting actually. That is what I was trying to say. Then another development which government has taken is, in fact, agriculture के लिए 1.5 lakh crores उन्होंने actually government ने thrust दिया था. So we should be able to do this. Skilling का भी है, 1000 ITIs का है. Rural development के लिए 2.6 lakh crores किया था. उसको कैसे actually we can actually we should fit into these kinds of this kind of a situation and then maximize the potential. They don't know. See, 2.6 lakh crores is available and then वो तो development तो होता है, लेकिन बाद में उसका कैसे actually to make it more sustainable. So this is where we have to think about it. So the students have to think about it. And NIT can give them students के लिए एक project दे सकते हैं. आप ये एक project बता दीजिए. So you give the exact project. So 2 महीने में ये project देना है. आपको उसके बाद then link up करना है. Next
Next student batch can do the link up with ITIs or somebody to develop this. The next batch can do, they can keep running this project perpetually actually. So it's a continuous development of certain. So otherwise, unless you come practically and then students को भी लाभ मिल जाता है उसमें, they will also get the idea and they will be a part of the societal development. And you know how many engineering students are coming out of per annum, and then how many are able to get the job. So we have to fill this. So it is not that it is only the job in a regular way. These kinds of employment opportunities we should be able to generate by ourselves. So that is another thing. And government also took initiative of startups के लिए angel tax abolish कर दिया. Startups के लिए, this is one of the key steps actually. It's a great development actually. So to give a thrust to these employment opportunities. Then coming back to I just took a digression from Tirupati Venkateshwar University में. तो 2-3 use cases उन्होंने actually we have finalized. Haptic के साथ मिलजुल के क्या होता है? Haptics मतलब you apply a pressure. That pressure and the touch will also be transmitted through the network. So far we are seeing is only Web 2.0 etc. and all. Now what is happening is next stage में क्या होता है? आपका जितना senses आपको, now you are using the technology only 2 senses, no? One is to your audio and then visual. Only 2 ही है. So whatever technology you are seeing is only 2 senses में आपको use कर रहे हैं. So you are going to use more senses. That is the touch is a part of the next, and then the smell is the next. So ऐसा कैसे करना है ये सब? These are all the things which will go on. So this is all possible only through the technology. So the touch में क्या होता है आपको? If you want to do a surgery, supposing health में क्या है? I have gone through that use case and I have seen that use case when I went abroad MWC में. मैंने स्पेन गया था. At least I have almost visited across the globe. Maybe fortunate to be a part of. I was DDGIR, so that time I have visited almost all the countries. I have seen major conferences, major exhibitions. I participated. Use cases, मैंने पूरा use cases देखा था. I was always dreaming that when it will come to India. तो वो तो use case बना दिया, इसको fine tune करके Indian scenario में कैसे हमको adopt करना है, and then India can become a global leader for the 5G use cases. And Surat can lead. I am just requesting against the President Saab and all the entire chamber that Surat should lead in the use case development. That is my wish and pray that they should lead that. So health use case में, so supposing you just want to do some surgery, there are 2 major things can be done. That if you apply the right pressure and then cut the body using a virtual technology, and then you can apply the pressure and then it just cuts it. If you apply more pressure, the bleeding will come. So you can learn the surgery through a virtual process and then develop that kind of a surgical process through a virtual means. So who will develop? The professor, he will guide them, this is the way you should do, and the student will engage somebody else, third party who is the developer. So there are 3 people who are involved here. And then who are actually going to be benefited enormous number of students. So you will not be able to get a physical body for your dissecting. There is a huge demand supply gap is there. So you can learn the surgery through this process. So that is where the 5G use case will come, and we are trying to do that 2-3 use cases at Tirupati Venkateshwar University. We have already started, and the haptics का भी इनको actually हमने जोड़ा दिया, and they are going to develop this. So probably once it is developed, some of you can visit Tirupati and then they can visit Surat maybe. So it is to be a continuous process. So this is about the other health case about and then it's a health cum educational purpose hota hai, because you are learning through the process itself. So this is where the 5G has got immense potential. Education में आपको इतना देख सकते हैं आप, actually astronomy teaching, any teaching for that matter. Even ITIs में आपको कैसे cut करना है, ये सब teaching है ना. You can teach them through virtually and make them expert. Then you go and do one physical. Then what will happen is you will become a major expert in that. Your skill is going to enhance multifold. So that is where we have to play a role in this whole process. The AR technology and then etc. So these are the few thoughts I will share with you about the health, education, agriculture, and then industrial applications. कैसे develop करना है, कैसे आगे बढ़ना है.
and fortunately we have SVNIT is here, and then chamber is the very active chamber. You can actually start up this process. Now coming back to the security part of the telecom development, I just wanted to share some few thoughts about this. Is invariably I used to always part of the awareness programs, we used to talk about it. TRAI and then DOT have been making a huge effort, because you might have seen that quite a bit of frauds are happening through using telecom resource. So we must actually prevent. I think one of the cyber security experts is talking today. He will be talking actually. So they will also be doing and innovating, and then the universities are all involved, can be involved in this further development. And हमने क्या किया था? I think one of the experts, he is here, Mr. Organti is here, blockchain का. So blockchain technology TRAI is using and then trying to do that. So उसमें हमने क्या किया था? Simple things which we have tried to implement in TRAI and then DOT also. So what we wanted to do is, whenever you are getting a call or message, you are getting, now I will come to little 5G का हो गया. थोड़ा सा मेरा ये पार्ट में आ रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी का पार्ट में आ रहा हूँ, और फ्रॉड प्रिवेंशन का और क्या स्टेप्स हमने लिया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए आपने क्या होता है, आपको वेदर टू लिफ्ट ए कॉल और नॉट टू लिफ्ट ए कॉल, यही है ना, सभी को यही प्रॉब्लम है ना. आप बोलिए, कॉल लिफ्ट करना है नहीं लिफ्ट करना है. लिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है, नहीं लिफ्ट करेंगे भी प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर मिसिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल somebody, or if you lift there is a fraud call. So कैसे इसको prevent करना है, this is a very important aspect. So what we are trying to do is that any marketing call, if you wanted to do a simple business, anybody and everybody, every institution, if you wanted to do a marketing calls, related calls, you must only call, you have to take a series number starting with 140 XXXX. उसी से लेना है आपको, एंड उसी से कॉल करना है. अब सपोजिंग इट्स अ जेन्युइन पर्सन हु वांट्स टू डू मार्केटिंग, ही विल टेक दैट सीरीज एंड इट विल, द कॉल विल कम, यू कैन लिफ्ट इट. ठीक है, मार्केटिंग है आपको, इफ यू आर फ्री एंड इफ यू आर एबल टू टेक द कॉल, बिकॉज दिस 140 अलॉटमेंट विल हैपन ओनली आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस. ए नॉर्मल नंबर 10 डिजिट का आप लेता है तो वो मिल जाता है, उससे कॉल करता है, आपको 10 डिजिट में आता है, आपको पता नहीं है वेदर लिफ्ट करना है नहीं लिफ्ट करना है. लिफ्ट करेंगे तो ये फ्रॉडस्टर आपको क्या डराते हैं, और ये करो वो करो करके प्रेस 0 प्रेस 9 करके प्रेस 0 कर देंगे, आप फंस जाएंगे. तो यही तो प्रॉब्लम है. सो इसके लिए हमको क्या करना है, सो 140XX से ही कॉल आता है तो आपको सम बैकग्राउंड वर्क हैज बीन डन एंड अलॉटेड 140, देन यू आपको कॉल मिल जाता है, आप मार्केटिंग कॉल ले सकते हैं. और आपको अभी HDFC से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आपको सर्विस रिलेटेड कॉल्स आते हैं. सपोजिंग यू मेड ए ट्रांजैक्शन ऑफ say 20,000 rupees फ्रॉम a क्रेडिट कार्ड, आपको तुरंत एक कॉल आता है that whether you have made the call or yes or no, आपको कंफर्मेशन के लिए आता है. तो सर्विस कॉल, ट्रांजैक्शन मैसेजेस भी आते हैं तुरंत. आपको क्या होता है, इफ यू विथड्रॉन मनी फ्रॉम say HDFC, 10,000 has been withdrawn, ऐसा मैसेज आता है. These are called service messages. Invariably these messages are to be delivered to you. Invariably these calls are to be lifted by you. So उसके लिए हमने क्या किया था, 160 से ये calls आ जाते हैं आपको. Then you must lift the call because it is a service call and there is an ये important call है आपके लिए, सर्विस ट्रांजैक्शन के लिए आए हैं, आपको लिफ्ट करना है. हमने सिंपल बना दिया, ये पूरा इसका है ना. तो 140 से तो मार्केटिंग आता है, 160 से जुड़ा रहेंगे तो आपको ये कॉल्स आता है, आपको लेना है. So it will be safe because this 160 also would have been given a due diligence करके ही अलर्ट करते, ऐसा नहीं अलर्ट करेंगे तो उसको आते हैं. ये दोनों के अलावा आपको कॉल आता है तो क्या करना है, हमको लिफ्ट नहीं करना है. बट वो कभी कभी लिफ्ट कर सकते हैं, कभी नहीं लिफ्ट कर सकते हैं. नाउ आई शुड ऑल्सो अप्रिशिएट सर्विस प्रोवाइडर्स. एयरटेल का कोई आया है यहाँ? हाँ, एयरटेल का पूरा आया है. हाँ, एयरटेल का है. उन्होंने अभी yesterday उन्होंने लॉन्च किया था, लास्ट yesterday मतलब 2-3 दिन के पहले उन्होंने लॉन्च किया था एक सर्विस, probably spam, suspected spam. So what they have done is they have done the AML technology, introduced it. So if this call is coming from one person to many across this thing, because when I am starting, when I taken a SIM card,
I will have some 10 people, 100 people, maximum 100 people are my target population. वो 1000 people के लिए एकदम कर रहा है तो इसको there is something definitely suspicious. तो क्या होता है ये AML में जो एनालाइज करके उसको कॉलिंग पैटर्न व्हाट दे आर डूइंग इज ये इतना कॉल्स कर रहा है तो उसको थोड़ा सा हमको सब्सक्राइबर को बताना है ये सस्पेक्टेड स्पैम है, सस्पेक्टेड स्पैम है. सो आपको कॉल क्या आता है, आई गॉट अ कॉल दैट सस्पेक्टेड स्पैम करके कॉल नंबर भी आते हैं नीचे लेकिन उसका सस्पेक्टेड स्पैम आता है. मैसेज भी आते हैं, मेरे पास भी मैसेजेस अभी शुरू लास्ट 3 डेज से मेरा हो रहा है, मिल रहा है. सो सस्पेक्टेड स्पैम ऊपर आता है, नीचे मैसेजेस आता है. दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. सो दिस इज द थर्ड थिंग विच वी हैव डन. Another thing which TRAI has taken initiative is that if these are all the things which are reaching to you, but we don't want even reach you the fraud messages itself, or if it is reaching you by chance, it should be a safe link. So क्या होता है then इसमें आपको मैसेज में 2 होता है प्रॉब्लम्स. If you analyze the whole thing, billions of messages, हमारा तो 1.2 billion connections है per day. Even if you take 2 message per this thing, 2 billion होता है एक दिन में. So if you just analyze the whole thing, there are 2 ways of fraud analysis में. एक तो आपको लिंक क्लिक करेंगे उसमें, आप कहीं भी कहीं और जा सकते हैं. और क्या होता है वहां से आपको फिशिंग लिंक में जाके आपका पूरा डेटा लेके वो दे विल डू द फ्रॉड. सो दैट इज वन थिंग. द सेकंड थिंग इज उसमें कॉल बैक करने के लिए बताते हैं. इफ यू कॉल बैक दैट नंबर तो क्या होता है देन दैट नंबर विल बी अ फ्रॉडस्टर्स नंबर एंड देन यू विल लैंड अप इनटू द प्रॉब्लम. सो हमने क्या किया था, ये ट्राई ने मैंडेट किया था कि व्हाटएवर लिंक्स if it is coming from a registered HDFC bank ऐसा आता है तो these things should be as invariably whitelisted. ये fraudster तो whitelist नहीं करते हैं. एक whitelisting का separate जगह होता है वो cloud में, उसमें highly secured है, वहाँ whitelist कर देते हैं. Supposing I am a HDFC bank, so I will whitelist all my links, HDFCbank.com, HDFC credit card, ये सब हम whitelist कर देते हैं. उसके अलावा HDFC BK, HDFC BNK, so ये सब भी हो सकता है. But these are all not whitelisted. It's a fraud hostess link. So क्या करते हैं हम देखते हैं वो HDFC बैंक का है, हम क्लिक कर देते हैं उसको. But what we have tried to do is उसको क्या करते हैं whitelist करते हैं. Other than whitelisted हम स्क्रीनिंग करते हैं उसको. If it is not whitelisted, the message itself will not be sent to the customer. It is dropped. So आपको मिलेगा भी नहीं है. So this is the one which we have. It is called whitelisting process. So आपको वो भी आपको मिलेगा भी नहीं. So you are actually being in the sense you are safe from the fraudsters messages. So this is another thing which we are trying to implement that from September onwards. अगर आपको ये सब करके वो if it is escaping all these things आपको ये मैसेज आता है probably spam. So आपको ध्यान रखना है. So these are 1, 2, 3, 4 steps we have taken. Simple steps है, but effective steps है. So which we can control or rather make it more safer for the whole 1.2 billion messages. So these are the things I thought I will probably share with you. And then also government is also likely to introduce, DOT is likely to introduce the SINA. आपको नाम भी आ जाएगी बाद में. आपको name along with the number, आपको name. Supposing if it is there in your ये एड्रेस बुक में है तो एड्रेस बुक से लेते हैं और आपको मिल जाता है नंबर. सपोजिंग अदर देन द एड्रेस बुक फ्यूचर में क्या होता है आपका एक्चुअली देयर इज अ ग्लोबल एड्रेस बुक व्हिच वी कीप ट्रैक और लाइक सिमिलर टू दैट प्रोसेस. सो उसको क्वेरी करके आपको आपका केवाईसी में क्या एड्रेस है वही केवाईसी का एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स विल डिलीवर यू दैट दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज कॉलिंग यू. सो आप उनको जानते हैं तो आपको कॉल लिफ्ट कर सकते हैं. अगर नहीं जानते हैं तो probably spam भी आ जाता है उसको. These two you can link up. So you have a 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are several steps which are simple and effective. The DOT and TRAI is they're both collaboratively working together to see that it is all done. So that is going to be introduced after the currently there is a process going on, testing and verification pilot project at Haryana going on. उसके बाद ये introduce करेंगे.
ये 4-5 steps मैंने I thought I will share with all of you. You please spread this message to others also. So then there is a digital consent acquisition process है, वो अभी नहीं बताना चाहता हूँ मैं. I think you will be bored if I talk too much on these things. So I thought the first part is our continual engagement future with the chamber, and then the second part आपको awareness के लिए ये security के बारे में बताना चाहता हूँ. And for giving me this opportunity, I once again sincerely express my gratitude to sir. Definitely gratitude to you. And I hope you will pardon me for talking to you by sitting. Thank you very much again. Bottom of my heart. थैंक यू सर. सर के पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इतना नॉलेज है कि हम पूरा दिन बैठे तो भी कम पड़ जाए. थैंक यू सो मच सर फॉर द एनलाइनमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सूरत. और सर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एज ए सूरती वी आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही सूरत को इकोनॉमिक ग्रोथ हब जाहिर किया है, और उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस पर भी सूरत हमेशा इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी है. बस हम इस इनॉग्रेशन सेशन को समाप्ति की ओर जा रहे हैं, बढ़ावा देंगे क्योंकि मैडम अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे बीच आज 5G टेक्नोलॉजी और उसको बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके पर बात करने वाले हैं. Guided 24 PhD national and international level publications of nearly 200 including 50 plus SCI publications and 7 book chapters. She has nearly 1100 citations. She authored 3 books with Oxford University Press in wireless communication domain and edited 1 book with Inter publication Vienna, Austria. She is recipient of many honors and awards including 5th IETE NV Gadadhara Memorial Award. She is reviewer of renowned international journals like IEEE, Wiley and Elsevier. She delivered more than 60 expert lectures at various places in India and abroad. बस हम साथ में मिलकर मैडम डॉक्टर उपेना दलाल जी को ही विनती करते हैं कि आज का इस टेक्निकल सेशन को शुरू किया जाए. वैसे हम लोगों को बोलने की आदत है. I am normally delivering the lecture in a class of 100 and 200 students. So I am audible, I hope. Yes. But थोड़ा शायद recording का issue है, so I am using the mic also along with. थोड़ा English, थोड़ा हिंदी. ठीक है. Gujarati, like terminology wise, it's very difficult. I am Gujarati actually. I can speak in Gujarati, but थोड़ा terminology में बहुत comfortable नहीं होते. फिर सारी चीजों का गुजराती करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So let us start with the subject domain. I think some students are coming, some attendees are coming. Should I start? जल्द ही अपने ग्रुप और कॉलेजेस के स्टूडेंट को आप कॉल करके बुला लीजिए. टेक्निकल सेशन चालू हो रहा है. सभी स्टूडेंट से निवेदन. So good noon all of you. Technology trends in 5G scenario in Indian telecom network, evolution of 5G and ecosystem for development of 5G use cases. This is the title given to me, and of course it is a very big domain. And I was a bit confused that how much I should cover in 1.5 hours, because it's the whole day session which we can cover. That much bigger is the subject domain.
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन पार्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। बहुत सारे फेसेस यंग है, तो काफी लोगों का मतलब बहुत पुराने सिस्टम से तो पाला नहीं पड़ा होगा, बट ये फ्रंट रो में है, इंक्लूडिंग मी। हम लोगों ने वो जनरेशन भी देखा है when the first generation you can see over here, it was somewhere in 1980s, जहां पे एनालॉग मोबाइल फोन सर्विसेज की शुरुआत हुई थी, which was एनालॉग, मतलब कोई काम का नहीं है आज के जमाने में। It was very noisy scenario and मतलब एक कम्युनिकेशन हो रहा था, that was the only thing, without any quality, basic voice service, analog based protocol, okay? And अगर मैं बिट रेट में कन्वर्ट करूं, वहां पे कोई बिट रेट नहीं था, अगर मैं बिट रेट में कन्वर्ट करूं तो it was 2.4 kbps, not more than that, अगर मैं करना चाहूं तो। Then somewhere in 1990s, जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जनरेशन क्या है? जनरेशन पूरे सिस्टम की है। हम एक चीज, एक सर्किट, एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे। इट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट। ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बिट रेट, इन टर्म्स ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस। ओके, तो सारी चीजों में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है वो हम जनरेशन बोलते हैं। अभी मैं जनरेशन को 3, 4, 5 साल में इवेल्युएट करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं, बट आप 10, 12, 15 साल में इवेल्युएट करो, आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। ठीक है, सो उस तरीके से हर एक टेक्नोलॉजी में एक जनरेशन है। जैसे अभी वाईफाई की मैं बात करूं, वाईफाई 0, 1, 2, 3 जैसा कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट द अर्लियर स्टेज ऑफ वाईफाई। उसके बाद वाईफाई 4, 5, 6, 7 एंड नाउ पीपल आर वर्किंग ऑन वाईफाई 8। तो वो एक जनरेशन है, एक सिग्निफिकेंट चेंज है जिसमें आपको बिटरेट में चेंज दिखेगा, बहुत सारी चीजों में, एंड द एप्लीकेशन इतनी सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी उसमें। जैसे आपको लाइक आप अपने खुद की बात करो, हमने तो बहुत चेंजेस देखे हमारी जनरेशन में। आप खुद की बात करो, आप बच्चे थे तब और अब यंग हुए तब, आपके रिसोर्सेस में कितना फर्क है। लॉट मेनी एप्लीकेशन, एवरी डे कुछ नया आता रहता है, एंड दैट ग्रोथ इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मुझे याद है, मैं जब छोटी सी बच्ची थी, रेडियो सुना करती थी। दैट वाज माय अमेजिंग एंटरटेनमेंट सिनेरियो। अभी रेडियो सेट को कोई हाथ नहीं लगाता बिकॉज दैट इज द ओल्ड टेक्नोलॉजी। AM FM साइड में चलता रहता है, कोई उसको नहीं पूछता। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वीडियोस। अभी ऑडियो में किसी को मजा ही नहीं आता, वीडियोस चाहिए, वीडियो कॉलिंग चाहिए। ठीक है ना, ये सब अपनी बात सोच के हंस रहे हैं, है ना? सो मुझे पता है बिकॉज मेरे पीछे वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पीछे बैठ के मोबाइल के में वीडियो देखते हैं, एंड दैट डिस्ट्रैक्शन इज देयर इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि ये जनरेशन के पास इतना कुछ है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर इंटेलिजेंट होना पड़ता है। ठीक है ना? सो देन 3G somewhere in 2000, see 2G में क्या आया? It was designed for voice communication, especially GSM. Okay, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ GPRS सिनेरियो में, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विसेज एंड ऑल। और जो अगर हम वो बिटरेट में कन्वर्ट करें या बिटरेट मेजर करें GPRS, तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 64 kbps, क्योंकि वो डिजिटल एरा था, PCM कम्युनिकेशन था। तो वो कम्युनिकेशन हमारा GSM सिस्टम से फिर मॉड्यूलेशन में भी वो कन्वर्ट होता है। जैसे वायरलेस सिस्टम बना
तो मॉडरेशन में कन्वर्ट हुआ, तो GMS के सिनारियो उसको बनाया गया, ओके, GMS के मॉडरेशन टेक्निक। सो ऐसे ऐसे फिजिकल लेयर में चेंजेस आते गए। सो दीज थिंग्स वेर देयर इन द सेकंड जनरेशन, बट बाकी खाली सेलुलर सर्विस, थोड़े बहुत मोबाइल टावर्स वो सब हुआ करते थे, ओके। देन 3G, पहली बार 3G आया तो द फर्स्ट वर्ड विच वॉज इंट्रोड्यूस वॉज स्मार्ट। 3G से हमें स्मार्टफोन ऐसा इन्वेंशन हुआ, ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल होने लगी। वहां से हमें डेटा सर्विसेज की इंपॉर्टेंस का पता चला। जहां से 3G थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे डेवलप हुई, टेक्नोलॉजीज मैं बोल रही हूँ ना, हर एक डोमेन में चेंजेस आते गए, ठीक है। सो इट वाज डिजाइन फॉर वॉइस एंड डेटा। ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इम्पोर्टेंस सबको पता चलने लगा कि भाई हाँ, अभी डेटा की इम्पोर्टेंस है, बिट रेट की इम्पोर्टेंस है, हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। पहले वो जो कुछ डाउनलोड करते थे तो ऐसे चक्कर 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 आपको स्क्रीन पे दिखता था, ओके, वो अभी नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर हैविंग द फास्टर सर्विसेज नाउ, ओके। फिर समवेयर अराउंड, मैं एक और बात बताऊं, ये जो 98 में जो मोबाइल फोन आया था, इट वॉज वेरी कॉस्टली सर्विस। 10 रुपया 15 रुपया पर मिनट का चार्ज अप्रोक्सीमेटली, हाँ। और अभी बहुत सारी चीजें आपको बल्क में मिल रही है, लेकिन सस्ता भी मिल रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूज मार्केट। दोनों चीजें साथ में हो रही है, लाइक जनरेशन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ मार्केट। एक फिगर मैंने ली है, उसमें वो सब चीजें भी होगी। देन फोर्थ जनरेशन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सप्लोर्ड। वहां से ये आप यंग हो गए फोर्थ जनरेशन में, जो अपने यंगस्टर दिख रहे हैं ना पीछे, और हम बूढ़े हो गए उसमें। नहीं, मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानती हूँ, बट वी आर 50+। सो फोर्थ जनरेशन में जब हम मतलब 50s में आए, तब हमें फोर्थ जनरेशन की एम्यूनिटी मिली, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTE सिस्टम, ठीक है। इन दैट we have rather nearly 100 Mbps speed, lot of growth of digital communication technologies, lot of growth of, we will see that how the things are evolved gradually. So IP based protocols, all IP concept, lot of changes in the architectural support, बहुत सारी चीजें होने लगी. So you can say it's a true mobile broadband service, जिसको हम रियल सेंस में ब्रॉडबैंड सर्विस बोल सकते हैं. एंड उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई वायरलेस कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज क्या है, कहाँ हम पहुंच सकते हैं. एंड देन द ग्रोथ was tremendous, and that we are in the age of 5G communication. So 5th generation, our expectation, theoretical expectation is 10 Gbps, 10 gigabits per second. इतना हाई बिट रेट हमें एक्सपेक्टेड है. 1 Gbps के आसपास तो मिल भी रहा है. ओके, वायरलेस में ऑलवेज आपको बिट रेट थोड़ा कम ही मिलेगा, बिकॉज वायरलेस चैनल इज अनरिलायबल चैनल. बहुत इश्यूज है वायरलेस चैनल में, शेडोइंग है, फेडिंग है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इतनी सारी प्रॉब्लम है वायरलेस में. आपके जो भी रेज है वो सब रिफ्लेक्ट होके मिलते हैं एक जगह पे. सो इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली the quality might be little bit restricted due to the channel properties, bitrate जो हम बोल रहे हैं. बट फिर भी हमें जो पुरानी टेक्निक से या टेक्नोलॉजी से उससे तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है. बहुत जगह पे चेंजेस हुए, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में चेंज हुए. पहले हम सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज किया करते थे, अभी आई मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक लाइक OFDM. इन मेजर ऑफ द सिस्टम्स OFDM technology is used. उससे हमें इतना अच्छा बिट रेट मिलता है. इट कैन कॉम्पेट ISI ऑल्सो. ISI जो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसको पता होगा वो समझ ले, बाकी छोड़ दो. इट इज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, मतलब दो बिट के बीच में एक इंटरफियरिंग सिनेरियो चैनल प्रोपोगेशन की वजह से होता है.
ठीक है। एंड नाउ हम लोग अभी 5G पे तो आके स्टेबल ही नहीं हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द 6G. पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 6G बिकॉज अभी ये डायरेक्शन में रिसर्च, डेवलपमेंट, कमर्शियल एस्पेक्ट्स, हर चीजों में इतना फास्ट ग्रोथ होने लगा है. सो द ओवरऑल even government is also trying a lot to enhance the technological aspects in this direction. Okay, so यहाँ पे एक छोटा सा समरी ग्राफ जैसा है. जैसे जैसे हम years increase हो रहे हैं, हमारा expectation and bit rate दोनों चीज बढ़ रही है. Okay, so TBPS is the expected bit rate in our 6G scenario, somewhere which might be launched somewhere around 2030. ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिखाने की जरूरत ही नहीं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है. हम रॉकेट स्पीड के लिए तैयार है अभी, है ना. जो भी चीजें डेवलप हो रही है उसमें हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत करना पड़ रहा है. शुरू में खाली जीएसएम टावर थे with the cellular concept. Of course cellular planning is required for 5G scenario also, but पूरा अप्रोच बदल गया है. पहले हमारे पास एक BTS हुआ करते थे, उसका एक कवरेज एरिया था, उसमें सेट ऑफ चैनल्स एलोकेटेड हुआ करती थी, और was a very simple architecture जिसमें एक बेस स्टेशन जिसको हम मोबाइल टावर बोलते हैं, BTS, सपोर्टेड विद बेस स्टेशन कंट्रोलर एंड एक मोबाइल स्विच, उसके साथ एक होम लोकेशन रजिस्टर, VLR विजिटिंग लोकेशन रजिस्टर, ऐसा हुआ करता था, जिसमें हमारे लाइक हम लोग जो सिम कार्ड लेते हैं उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, एंड वी आर रजिस्टर्ड इन अ पर्टिकुलर लोकेशन. वो लोकेशन के बाहर जाते हैं, वो एरिया के बाहर, देन वी आर एक्चुअली विजिटिंग लोकेशन पर्सन्स. ओके, तो वहां पे हमें टेम्पररी एक सर्विस मिलता है फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद जो BTS थे इसको हमने रीनेम किया जब 3G सर्विस आई. ऑफ कोर्स उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक चेंज हुआ, बहुत सारा, वो CDMA बेस्ड सर्विसेज आई. आपने सुना होगा रिलायंस था जब, तो रिलायंस ने CDMA कुछ टाइम के लिए लॉन्च किया था, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बाद में बंद हो गया. रिलायंस ने उसके लिए वो फाइबर भी ले डाउन किए थे, WLL सर्विस और ये 3G सर्विसेज के लिए. वी रीनेम्ड द BTS, जिसको हम मोबाइल टावर बोलते हैं, जहां से मतलब वो एंटेना के साथ वाला टावर, नॉट ओनली टावर, एंटेना एंड टावर टुगेदर इज कॉल्ड बेस ट्रांसीवर स्टेशन. इसके साथ उसका एक हार्डवेयर होता है ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ. क्लियर? वहां से सिग्नल रेडिएट होते हैं. तो BTS वाज द ओरिजिनल नेम गिवन टू GSM बेस्ड, मतलब 2G सेकंड जनरेशन सिस्टम. 3G में उसको नोड भी कहा गया, 4G में उसको E नोड भी कहा गया, और 5G में अभी उसको G नोड भी बोलते हैं. अभी नया नाम बाकी है 6G में. वेरी सून द न्यू नेम विल कम अप. सो ये सारी चीजें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी इतना होता गया, और हमने पुरानी चीजों को थ्रो नहीं किया है. GSM सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज आर स्टिल वर्किंग. ओके, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हैं, बट फिर भी हमें अभी 3G, 4G, 5G, ये आप ऊपर देखते होंगे जब आपको सिग्नल मिलते हैं. सो दैट एडेप्टिव स्विचिंग सिनेरियो इज देयर. So we are able to get the various available services on the basis of signal strength, okay, SNR condition, signal to noise ratio condition. So बहुत सारी चीजें, आप एप्लीकेशन भी देखो, वो पुराने वाले फोन थोड़े मेल मैसेजेस वगैरह कुछ करते थे पहले, उसके बाद हम थोड़ा और स्मार्ट हुए 3G में, बहुत सारी एप्लीकेशन आई. 3.5G तक ट्विटर, फेसबुक, वो सब आ गए थे. मुझे याद है मैंने फर्स्ट फेसबुक अकाउंट समवेयर इन
2009 या 10 में खोला था पहला फेसबुक अकाउंट, पर वो थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था, बट देयर वर वेरी फ्यू कनेक्शन। मेरे इनिशियल कनेक्शन 12 या 15 थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था फेसबुक का। अभी 4000-5000 कनेक्शन है। सो द थिंग्स आर ग्रोइंग इन दैट वे ऑल्सो। एक सोशल कनेक्ट भी बनने लगा, लोग टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखने लगे। ट्विटर, अब ऑल ऑफ यू नोज। बाद में जब 4G आया तो जो वीडियो का बूम, यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया। वीडियो कॉलिंग, अभी सिंपल वॉइस कॉलिंग से तो चलता ही नहीं है, वीडियो कॉलिंग। सो ऑल दोज सर्विसेज वर स्टार्टेड। सो दिस इज द जनरल the growth in the technological domain, you can say. बस अभी मैं आगे की बात नहीं करूंगी। Now we will focus on डायरेक्शन ये रहे, इस डायरेक्शन अभी ये आज का सिनारियो, दिस इज द 5th जनरेशन सिनारियो। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा 80s, 90s, समवेयर इन 2000, 2010, 2000, अभी हम लोग 20s में हैं। तो एक 10 साल के अंतराल में हमें इतना सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ मिल रहा है, और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना टाइम तो जाएगा obviously. Okay, this is the present scenario. Now our expectation is everything is to be smart. सब हमें स्मार्ट चाहिए। What is that smart? What is the meaning of smart? स्मार्ट में आप क्या करोगे? वो डिवाइस स्मार्ट बन जाएगा, आप स्मार्ट बन जाओगे, क्या होगा? What is smart? Yeah. So you are actually now, अभी नई टेक्नोलॉजीज जो है उसमें इतना चेंजेस है, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड सी। एक तो ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर, आईटी, जीपीयू, सिग्नल प्रोसेसिंग, ये इतना सारा हो चुका है। देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, एआई टेक्नोलॉजी इज देयर। वी हैव लॉट ऑफ ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इतनी सारी चीजें और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इतना ज्यादा है, तो ये सारी चीजों को मिला के हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्मार्ट मतलब आपकी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो आप डिवाइस में डाल रहे हैं। एआई, मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, उसमें आपको एक डेटाबेस लेके सिस्टम को ट्रेन किया जाता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेनिंग you can have the real time decision making for any event or incidents. Okay? अभी मैंने एक ऐप देखा था वेरी रिसेंटली, एक लड़की बोल रही है, उसको पहले हम लोग क्या करते थे, एक डॉल या किसी को डेकोरेट करना है, पीछे मतलब उसको चीजें लगानी है, सजानी है, पर्स डालना है, अलग अलग बाल करने हैं, जो अभी वो बोल के वो चीजें करती है। I need blue background, I need pink chair, मतलब वो बोलेगी और पीछे आ जाएगा। So you know, processing इतना fast हो रहा है with the help of AI, lot of decision making is taken in a very quick manner. So ये चीजों को स्मार्ट बनाती है, ये हमें fascinating। I request you all, she is giving such a informative. Thank you. So you can observe over here the future with 5G, और कुछ सालों में आपको future with 6G भी मिलेगा। Okay, so we need agriculture and autonomous machinery, we need very high data storage, edge data centers, smart homes and IoT solutions, smart city, public transportation,
traffic light, e-governance, etc. Manufacturing and connected intelligent devices. Now, intelligence comes from the features which you are adding, maybe in terms of AI or maybe in terms of the various other capabilities. So, new technologies like virtual reality. All of you might have heard about augmented reality and virtual reality. वो जैसे स्पेक पहन के आपको एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट मिलता है. Okay? So these things are possible if and only if you have high data rate services. Augmented तो चलो ठीक है, वो उसमें बहुत, पर DR में तो चाहिए ही चाहिए. So wearables, monitoring and tracking of vitals, video streaming, transportation, especially the self-driving car. इंडिया में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट फॉरेन कंट्रीज आर वर्किंग ऑन दैट बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रैफिक सेंस ही नहीं है. ओके, बाद में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आपको ऑटोनोमस ड्रिवन कार करना है तो व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम यू रिक्वायर. ओके, सो हेल्थ केयर, रिमोट सर्जरी, लॉट मेनी फैसिनेटिंग एप्लीकेशंस. मतलब स्वर्ग में जो चीजें होती है वो धरती पे आ गई ऐसा लगता है. These things are actually people are working like foreign countries में. तो आप खुद foreign countries में ट्रैवल कर चुके होंगे many of you, ना आपने देखा होगा चीजें वहाँ कितने सिस्टमेटिक है. मोदी जी यहाँ पे भी वो चीजें लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अगर आपका साथ हो तो. ओके, एंड सबका साथ सबका विकास ही होता है. So like people should change their mindset. अगर वो mindset नहीं change करेंगे तो they will not be ready for 5G and 6G scenario. Lot of things are changing, but वो अपने mindset के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ है. ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल रही है तो उसके साथ एक sophistication भी मिल रहा है. Isn't it? ऐसा नहीं कि बस अकेले अकेले बैठ के मोबाइल में स्मार्ट चीजें देखते रहे, ऐसा कुछ नहीं है. There are lot of other things. जो भी चीजें हमें चाहिए उसके साथ एक sophistication भी डेवलप हो रहा है. So, see, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका माइंडसेट भी चेंज होना जरूरी है. जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसके साथ आपका खुद का अपग्रेडेशन, एक माइंडसेट, बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी है. These things you have to adopt. You just see this is a heterogeneous architecture. मतलब all over the world ये चीजें डेवलप हो रही है. And there are lot many systems in which we are applying the solutions for 5G technology. जैसे ये आप एक मैंने मीटर दिखाया है, it is almost towards 5G. वो रीच कर गया ऑलमोस्ट. और यहाँ पे आप देखो डिप्लॉयमेंट सिनेरियो में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं. बिकॉज आई विल शो यू शॉर्टली दैट फॉर 5G रिक्वायरमेंट देयर इज अ स्पेशल न्यू रेडियो स्पेक्ट्रम प्रोविजन. जो हमारा कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम है वो सफिशिएंट नहीं है. वी हैव द डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल विद अस. सो 4G में हम लोग नॉर्मली ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन की बात करते थे एंटेना में. अभी 5G में एक बीम फॉर्मिंग टाइप ऑफ सिनेरियो इज आल्सो अडॉप्टेड एंड मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन इज आल्सो अडॉप्टेड इन दैट आई विल शो यू वेरी सून. तो आप यहाँ पे देखो, आपको आप प्रिसाइजली ऑब्जर्वर, बिकॉज टाइम नहीं है मैं थोड़ा फटाफट बोल देती हूँ. इतनी सारी चीजें लाइक वी हैव द वेहिकुलर नेटवर्क्स, वी हैव डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, we have intelligent transportation services, we have IoTs, we have massive, IoT means massive machine type communications, we have GSM, GPRS, WLAN, 3G, LTE advanced. ये सारी सर्विसेज तो है ही, ये सारी सर्विसेज है. जो पुरानी है वो थोड़ा बहुत मतलब उसका मास हमारा कम हो गया, बट द सर्विसेज आर देयर. ओके, एंड ग्रेजुअली वो वैनिश भी हो सकती है if the new technology is set properly. Then we have the connection with the non-terrestrial communications. We have the marine, defense, हर जगह पे 5G in all the domains. जो भी आप इमेजिन करो, हर जगह पे चीजें स्मार्ट हो रही है and they are actually more connected to each other. जितना हो उतना हमारा कनेक्शन उसमें बढ़ रहा है. आप देखो हर चीज को आप घर बैठ के
ऑनलाइन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें लाइक द कनेक्शंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो एंड 5G में एक और चीज़ है, उसमें वो 4G में भी था रिले बेस्ड, मतलब आपको एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन मिल रहा है रिले, वहाँ से आप रिट्रांसमिट कर सकते हो सिग्नल को। सो यू मे हैव different type of antenna deployment scenario in 5G. So 4G के comparison में हमें कितनी ज़्यादा flexibility 5G scenario में मिली। Now ये एक scenario overall है। 5G में एक और amazing task ये है कि हम एक macro level की system तो establish कर सकते हैं, but we can have our own premise in which we can have our और एंड सिस्टम, अपना खुद का एक पर्सनलाइज हम लोग 5G नेटवर्क भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री या जो भी मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो जहाँ ये सारी चीज़ों पे ये इकोसिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगी। ओके, सो व्हाट 5G इज अबाउट, it's smart wearables, smart mobility, smart parking, smart car, nice water quality measurement के साथ, then car to car communication, utility management, connected houses, security, surveillance, then domotics, application beyond imagination, entertainment की application हम लोग बहुत क्लोजली एसोसिएट, टेली वाला जितना है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली मेडिसिन, ये सारी चीजें इसमें अच्छी क्वालिटी से पॉसिबल हो सकती है। स्मार्ट ग्रिड्स, ई हेल्थ, ट्रैफिक प्रायोरिटी, ओके, बहुत सारी चीजें ना, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये चीजें आ गई हमारे पास। बहुत लंबे डोमोटिक्स इज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हैंडलिंग, जैसे हम होम ऑटोमेशन करते हैं तो हम कहीं पे जाके उसको हैंडल कर सकते हैं। सो देयर आर 3 मेजर टास्क व्हिच इज एक्चुअली व्हिच आर एक्सपेक्टेड इन द 5G सिनेरियो। एक है मैसिव, क्योंकि हमें अभी इतनी सारी चीज है, उसमें बाइफर्केशन करना पड़ेगा सिस्टम में कि हमें क्या क्या चाहिए और वो किस टाइप की सर्विस है। वो नॉर्मल सेंसिंग टाइप सर्विस है या कोई रियल टाइम सर्विस है, मतलब यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होना है, या फिर हाई बैंडविड्थ सर्विसेज है जिसमें हमें बहुत स्पीडी डेटा या HD क्वालिटी डेटा चाहिए या जो भी है। सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, the 3 major categories are identified in the 5G scenario. One is massive Internet of Things, IoTs, आपने सबने सुना होगा, IoT बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चे, सबसे फेवरेट है क्योंकि वो इजीली हो जाता है। AI एंड IoT ये सब सारे स्टूडेंट के फेवरेट डोमेन्स हैं। ओके, देन मिशन क्रिटिकल कंट्रोल, इंडस्ट्री भी थक रही है, URLLC जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी सॉल्यूशन, मतलब आपको विद अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपके सिग्नल को दूसरी ओर जाना चाहिए। देन ओनली ऑटोनोमस एप्लीकेशंस, रिमोट सर्जरी, रोबोटिक ट्रैकिंग, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, ये सारी चीजें उसी से पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट, मतलब वेरी लो लेटेंसी सॉल्यूशन यू कैन से। ओके, and enhance mobile broadband, this is third type of category। ये कैटेगरी क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब आप इकोसिस्टम देखेंगे ना, आप नेटवर्क सर्विस को पूरा स्लाइस कर सकते हैं। एंड आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंसेप्ट, मतलब आप कंट्रोलर एक जगह पे रख के पूरे नेटवर्क को गवर्न कर सकते हैं। यू कैन स्लाइस द नेटवर्क, यू कैन डिवाइड द टाइप ऑफ सर्विसेज, और उसके लिए हमारे पास अलग अलग बैंडविड्थ का प्रोविजन भी है। ओके, सो पहले आप देखो, ये सेम चीजें हैं। दिस इज अ स्लाइड फ्रॉम वलपम प्रेजेंटेशन। जस्ट सी द एप्लीकेशंस, हमें क्या चाहिए, हमारा विजन क्या है। सो 3D एंड सी, पहला मैंने बताया हमें बहुत हाई डेटा रेट चाहिए। 3D
HD अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मतलब HD से भी ज्यादा। अभी हम HD पे तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ अच्छा मिल रहा है हमें, बट उससे भी ज्यादा चाहिए। देन अल्ट्रा HD वीडियो टेली प्रेजेंस, आपको ऐसे ही लगेगा कि बाजू में बैठ के बात कर रहे हैं। ओके, सच अ हाई बिटरेट कम्युनिकेशन। देन टैक्टाइल इंटरनेट, जिसे टच से हम उसको परसीव कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी वीडियो स्ट्रीमिंग, डिमांडिंग कंडीशंस लाइक वेन्यूज, ये एक मैच का सिनेरियो है जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी बिकॉज इट्स अ बिग मास। ओके, एक स्टेडियम का सिनेरियो, तो उसका भी छोटी छोटी चीजें हम अच्छे से देख सकते हैं। देन फाइबर टू होम सर्विसेज एंड सम वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड तो बहुत लोग यूज करते हैं, वर्चुअल रियलिटी इज बिट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ऑगमेंटेड आप सबने वो इंस्टाग्राम पे पपीज और वो सब फेस लगाते हैं ना, दीज आर ऑल ऑगमेंटेड रियलिटीज। ओके, बट उससे भी ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए हमें वर्चुअल रियलिटी में। देन नेक्स्ट इज मिशन क्रिटिकल। मिशन क्रिटिकल तो बहुत खतरनाक रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू, अगर आपको थोड़ा सा भी सिग्नल या इंस्ट्रक्शन मिलने में देर हो जाए तो वो सर्जरी हो रहा है ना, उसका कट गलत जगह पे हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा बेचारा। सो वी नीड सच रियल टाइम सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस। सो ऑटोनोमस व्हीकल्स, व्हीकल को अगर गवर्निंग नहीं किया प्रॉपरली तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, देन रोबोटिक्स, ये जितने भी रोबोटिक बेस्ड एप्लीकेशन है उसका अगर आपको रिमोट गवर्निंग चाहिए, you need the URLLC solution या mission critical solutions. Energy and smart grid, industrial automation, aviation services, drone वगैरह जो भी है उसका भी, and some medical services, जिसमें हमें remote communication तो चाहिए, but that solution should be with real time solution. Okay, so next please. Yes. मैम बेसिकली यू हैव सेड दैट कि हम लोग को पूरा का पूरा जो आपने जो लास्ट स्लाइड में बोला कि भाई मेडिकल और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को सर्जरीज के टाइम पे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो इट कैन रिस्क टू डेथ, इट कैन रिस्क टू डेथ, राइट? इट कैन रिस्क टू डेथ। सो अगर वही चीज़ पे हम लोग अगर ज़्यादा सिक्योरिटी ना रखें तो भी वही सेम प्रॉब्लम होगी ना। बिकॉज अगर कोई भी पर्सन की सर्जरी चल रही है, कोई भी रेप्यूटेड पर्सन की, फॉर एग्जांपल MLA की अगर कोई भी सर्जरी चल रही है, सो उसको अगर उसकी अगर सर्जरी में किसी ने भी उनको मारने की कोशिश की और हैक करके उन लोग का जो है वो कट कर दिया तो फिर पॉसिबल, हम किसी चीज में डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि लाइक जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना, we try to get the solution for that. So possibilities तो बहुत सारी हो सकती है, but normally wireless hacking is very difficult. Wireless hacking is very difficult, पर कोई और तरीके से आप अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। In vehicles also it is difficult because इसमें क्या होता है, there is something called slicing of the network and there is a tunneling. Yes. So there is a, madam will explain maybe, I will give that idea. That end to end such mission critical applications के लिए from end to end there is a separate slicing होता है. So for that critical purpose, so end to end tunnel होता है. So then somebody cannot intrude that and then try to do that. So that is how it is actually managed through the network. And sir, we can also use network gapping. In this type of situations, we can also use network gapping. Network gapping कर सकते हैं. Currently, what is being done using this is slicing. Slicing. Madam can. May I please add on? Yeah. Just to Hello. Just to give you a brief background, I am a registered patent attorney and scientific advisor for the Indian Patent Office, as I explained to some of you in the interactive session just now.
Now, just to add on to what Madam said and what this guy, this boy has very nicely raised this question of security. As of now, we are dependent on 4G, 5G, 6G, as Madam has said. But what about the security systems? Why does the hacking happen? Now, there are professors of SVNIT who are attending this session. They would appreciate that there is a certain concept called as qubits, which is based on quantum science. And once we go from bits to qubits, right now our system is working on the basis of bits, that is 0 and 1, 0 or 1. Now this qubits is based on quantum science, where this security system is immediately, if anyone tries to hack, it is intervened at that source itself, and there is a very secure, faster internet connection which is received at the receiver's end, and that way the chances of risk of death during robotic surgery is also taken care of. So this is what the new thing, and there is a institute called as Argonne National Laboratory in US. So I would request the students who are interested in this, who are not interested in just doing gossip mongering out here, please listen to the facts which are being projected out here, which are very important, because you are going to be the executors of this technology which is being developed as of now. And please go to the website of Argonne National Laboratory, and I'm really happy that one student at least is very serious about this session and he came up with this relevant question. So this Argonne National Laboratory is a pioneer in US in developing this quantum science qubits technology, and as of 6G, which Madam just said, that in this current year, the latest scenario is that at least 800 patents have been filed in India in 6G. In 6G technology, at least 800 patents have been filed in India. And I feel very proud of that, that 10% of this is from Indian scientists from IIT Chennai and IIT Mumbai. So that is a very good step, that Indians are coming ahead, coming forth and making their presence being felt all over the world with the, this kind of innovation. And that is the key to success. So thank you very much. What she said, yeah, quantum physics and the application of quantum physics is very much in practice. Even in our, we see the standardization in quantum cryptography in the working group, group number I forgot. So that is also done, and I mean that is under process. Okay. Separate quantum mission is there. Yes sir, yes sir. So DCC, I am also part of it. So we are having that discussion continuously. Sir, like massive IoT, this is also one very useful implementation in the system for what you can say, the sensing of the parameters and the decision making based on that sense activities. Okay, so smart cities, smart homes, utility metering, wearable and fitness devices, many of you might be using it. Okay, मैं बहुत ज़्यादा technical detail में नहीं जा रही हूँ, otherwise I would have explained you the IoT implementation scenario, embedded system, lot many things are there, but I think I'm here to give you the ecosystem, so it's the overall scenario. Okay, so remote sensors, actuators, object tracking, there are lot many. आप imagine करते जाओ, इतनी sensing की applications हैं. So normally this data is actually transferred to the cloud. अभी तो edge cloud, edge computing, fog computing, बहुत सारा, मतलब आप जितना localized data store करना चाहो, वो possibilities भी बढ़ने लगी, rather than every time sending it on a cloud. Cloud is a common resource over which you can have the data storage collectively. Resource sharing भी उसमें हो सकता है. So of course उससे security issues भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, but still
people are finding the solution. Edge device and edge cloud is the most immediate solution. Cloud से बहुत सारी चीजों को हम अगर restrict करना चाहे तो, secure करना चाहे तो. So actually coming to the spectrum, earlier GSM system was operative on GSM 900, 1800, 1900 megahertz frequency ranges. Then उसके बाद 3G आया, okay? 3G, 4G was somewhere around 2100, 2200 megahertz, okay? And now for 5G, the new radio spectrum is defined. Actually, 5G works on licensed spectrum, shared license spectrum, and unlicensed spectrum. Okay, so we have the different ranges of frequency. I think this figure will give you the better idea. The various frequency ranges are highlighted, and everything is very systematically planned. And our frequencies FR1 is somewhere around 6 gigahertz. Now, as I mentioned earlier, based on the application requirement, our frequency ranges are also divided properly. So for for IoT applications, we don't require very high bit rate or bandwidth rather. Okay, so we have 6 gigahertz or sub 6 gigahertz ranges for IoT applications. Of course, हमारी 2.4 gigahertz Wi-Fi वगैरह भी वहीं पे चलती है. And beyond 24 gigahertz, we have the millimeter wave communication, which we can use for high bandwidth, high bitrate services. जो मैं बोल रही थी ना आपको 3D, ultra high density, वो सारी services के लिए. But उसका एक drawback है. Millimeter wave services cannot be in a very good coverage. So आपको बहुत सारे छोटे stations या microcells launch करने पड़े उसके लिए. उसमें massive MIMO communication is also possible. Okay, millimeter wave communication. Now actually आप detail में जाओ तो हर एक छोटे domain के लिए आपको एक research का topic मिलेगा. हर चीज में एक छोटी चीज है. I am simply highlighting the words. आप उसको कनेक्ट करके वहां से कुछ ना कुछ टेक्निकल रिसर्च डोमेन वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो FR2 is a millimeter wave communication and presently it is extended 70 gigahertz to I think 100 gigahertz तक भी जा रहे हैं 6G के लिए. So and बीच में जो है वो हमारा मिशन क्रिटिकल सर्विसेज. So we have different spectrum for different applications. We have different bandwidth requirement for different applications. We have different frequency ranges. So this figure says that we have lot of diversity in the deployment of and the coverage region of the antenna systems. Okay, so lot of diversity. You can have millimeter wave applications, we can have the lower coverage regions. Accordingly we have to set. So I mean this is a like very critical thinking requirement. You need the experts to find out the solution of the various deployments in the practical region. Okay, so this is in general. Now when you are installing your 5G system in a particular premise, you can have your own प्राइवेट 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो हम लोगों को अभी मिला है. मोदी जी हैज गिवन 5G यूज केस लेबोरेटरी सॉल्यूशन. सो वी हैव आवर पर्सनलाइज्ड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क विद सर्वर, एज डिवाइसेस, IoT nodes, IoT gateway, AR/VR devices, video with artificial intelligence capabilities, then 5G mobile phones. Okay, so we have our own personalized premise, and we are doing based on this. We are doing some different research work. We have taken up, and of course,
when these kind of systems, I think I will take this along with the ecosystem, because without reference you will not understand. This is the conceptual slicing scenario. कोई भी सिस्टम को आपको डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली करने से ही वो अच्छे से फंक्शन करेगी. Okay, so we have the different types of services. Even in the personalized premise also, you can have the proper slicing. Slicing means it's a, there is a different bandwidth, different types of packets, maybe there different types of applications. So all these things you will channelize properly. That is called the slicing. उसके लिए अलग-अलग algorithms and software defined networking concept is suitable. ये थोड़ा better figure है for the slicing. So if you have the mobile broadband applications, you can collectively use certain maybe deployment wise and maybe control wise. You can have the virtual zoning also of the services. So that is what actually highlighted with this particular figure. Without that it is very much impossible. सारे पैकेज, सारी सर्विसेज एक दूसरे में अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हुई तो we cannot handle it in a proper manner. ठीक है? This is the slide which I was referring to. Yes. For his answer, this will have a tunneling method. Tunneling. End to end, using madam's qubits का हुआ है. So that will be protected completely from. Yes. And I think quantum cryptography will also help in that. Yes. Yeah. So this is खाली एक रिलैक्सिंग स्लाइड है, कुछ नहीं है इसमें, खाली देख लो, वो आप खुद बैठ के नेट पे सर्फिंग कर सकते हैं. जो सोफिस्टिकेशन हम चाह रहे हैं उसके सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस है, सोफिस्टिकेटेड यूज केसेस. अभी हमें इतना सोफिस्टिकेशन चाहिए तो फिर इकोसिस्टम भी हमारा सोफिस्टिकेटेड होना जरूरी है. I'll just add one point here. Quantum madam was referring. So these networks are actually, this is very important thing for you to know. Quantum mission also we are coming up. These are called quantum safe networks. They are going to be of a quantum safe network. Because in quantum safe network क्या होता है? There is a tunnel. Madam has shown that. So there is a tunnel there. Here comes this tunnel. This tunnel is there. This tunnel is having a quantum key encryption. Supposing somebody breaks that, even quantum car. So then what happens is that in order to prevent that from being that, so end to end the servers are there. So those servers of the quantum cryptography of the order in which normal keys cannot be broken. So these are called quantum safe networks. So that is what is actually being evolved, quantum safe networks. Madam can throw more light on that, because I have been a part of some of the meetings and discussions on this issue, which India is looking for. India is going, quantum mission is also formed in India, chaired by earlier ex-HCL person, and then all the members of their IIT Chennai is one of the key players in that. So this is what is actually development happening in India. So the relevant question of this thing, many things are being taken care to ensure that the networks are quantum safe ultimately. So basically, this is not done yet. Networks are, it is in pipeline. So actually these use cases have not come. That's what I am telling you. The critical mission critical applications use cases I have talked about morning in the only the other two. Yeah. So other two are being done. This is yet to be fully developed. So by then this will be in place. So basically this is in research in and pipeline. this No, is not in research. The applications are developed, but they are yet to be in place. Okay. Just a minute, sir. Normally what happens in critical operations and like robotic surgery and all those things, Yes. always there is redundancy. See, redundancy concept is once normal signal will be there, apart from that one more signal will be there. Like madam has told that
one signal will be at a particular frequency, other will be at a different frequency. So for hackers also it becomes very difficult to get into it. So redundancy, wherever critical operations are there, so redundancy concept is always there, because suppose main signal fails somewhere, so redundant signal is there, that will take care. So in critical operation it is must that okay, redundancy should be there. So we should not think that, as that student has pointed out, that some hacker comes and surgery goes, the blood oozes out. So that is not a case. Whatever these implementations are there, that are being taken care before, means that is called suppose in Japanese one this QC is there, what wrong can happen, so that we have to take care, that is some analysis is there, then only these concepts are implemented, otherwise those are not implemented at all. But sir, if we're thinking about hackers mindset, so they can also do they can also create the same frequency na, because that is okay. वैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग उन लोग ने अगर दो फ्रीक्वेंसी बना के रखी है पहले से ही, तो अकॉर्डिंग टू हैकर्स अगर हम लोग उनके माइंडसेट से अगर हम लोग समझ में जाए, that is what I was not remembering the concept, that is called pokayoke. In Japanese it is called pokayoke. Means what it goes to the extent that what wrong can go, what wrong can be done. So all those concepts are taken, then what it is YY analysis. If suppose this happens, what will happen? If this happens, what will happen? So that is pokayoke concept that is implemented before taking anything in line. Yeah, good. So these are few pictures just to enjoy the sophistication what we are expecting. This is actually the introduction to industry protocols 1, 2, 3, 4 and 5. So there are others are the old conventional methods and the conventional solutions of it. But when you go for industry 4.0 and 5.0, you will find that there is a use of almost all the latest technologies like AI, ML, cobots, IoT, blockchain, digital twin, metaverse, that is AR, VR, then quantum computing and 6G and beyond technological requirement. So this is also actually like 5G अकेले कुछ काम नहीं करेगी. You need to develop so many other parallel protocols. आपको frequency को standardize करना है, industry protocol को standardize करना है, Wi-Fi को channelize करना है, like everything. Bluetooth में भी BLE हो गया, Bluetooth low energy उसमें mesh networking आ गया, like हर एक चीज में आपको upgradation चाहिए. So that will be the overall upgradation in the system. So what we are expecting in industry 4 and 5 is the human and machine interaction and involvement, simultaneous interaction and involvement. So these are some of the pictures which are highlighting those requirements. ये 4G में अभी already चल रहा है, and there's a key differences in industry 4 and 5. Normally हम लोग अभी जो भी मतलब 5G onwards जितने भी development हो रहे, they are all user centric. What is the requirement? Based on that the solution, rather than lot of standardization. Okay, so focus on delivering the customer experience is there, hyper customization, responsive and distributed supply chain concept, then experience activated and interactive products, return of manpower to factories. Okay, so all these are the key aspects which we have actually started implementing in our present scenario. These are some key enabling technologies. We have already like gone through it so many times. इसमें थोड़ा और ज़्यादा detailing है. Edge computing, AI, cobot, 6G, वो पहली वाली slide है, उसकी ही next slide है, उसमें ज़्यादा detailing है.
then big data analytics, Internet of Everything, blockchain, etc. So these are all इंडस्ट्री 5.0 के लिए जो की एनेबलिंग टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पे। एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी, मैंने आपको बताया कि 5G सिनेरियो कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ प्राइवेट बेसिस। सपोज मुझे एक बड़ी इंडस्ट्री में वो सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना है, तो आई कैन आइडेंटिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस इन द सेम प्रेमाइस। मुझे मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन मतलब IoT डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन भी चाहिए। आई नीड अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी सॉल्यूशन जिसमें मैं रोबोट्स या रिमोट ऑपरेशन से या कोबॉट से हम लोग कुछ काम करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, काउंटिंग का, शिफ्टिंग का, बहुत सारी चीजें, ट्रैकिंग ऑफ दैट। एंड वी कैन ऑल्सो हैव द वर्चुअल रियलिटी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस इन द सेम प्रीमाइस। मतलब एक ही प्रीमाइस में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। नोकिया से पर्सन है यार, नोकिया का पर्सन, हाँ, he will cover that because their factory I visited. Yes sir, yes. Chennai, yes. So इसीलिए हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। सो एक छोटा सा इंडस्ट्री का सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए वो एक यहाँ पे एक सिस्टम बताया गया है, जहाँ पे मैंने नेटवर्क स्लाइस भी हाईलाइट की है, वेर यू कैन हैव द सेपरेशन ऑफ द टास्क, ओके, और द टनल्स और द चैनल्स यू कैन क्रिएट। We can have connection with the public cloud and we can have our own private cloud in the same premise with a firewall protection. So these are some of the solutions. Means एक इंडस्ट्री के लिए आपको ऑपरेटर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. So you will have all the requirements in your personalized premise. ये एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। कोई चीज विद द कॉमन रिसोर्स शेयरिंग, स्मार्ट ऑटोमोटिव्स, इसकी एक रिक्वायरमेंट, इकोसिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। वी नीड नाउ, इसमें हमें बहुत सारी चीजें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो होना है, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी उसके हिसाब से चाहिए, 5G सर्विसेज भी चाहिए, रोड साइड यूनिट्स भी चाहिए, कनेक्टेड व्हीकल्स भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। देन एंड देन ओनली यू कैन हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन। उसमें फिर ट्रेन मैन पावर भी चाहिए। You have to improve each and every domain. Okay, so accordingly we can have the various vehicle to vehicle, vehicle to roadside unit, vehicle to pedestrian, vehicle to any infrastructure, what kind of communication you need, yeah, if you need the autonomous car, driven car. So these are all the varieties of like requirements in the complete ecosystem. ये पूरा ecosystem है with the vehicle cloud and the various requirements, network operators, entertainment providers, hackers, attackers, connected vehicles, सारे इसके पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। Then vehicle manufacturers, OEMs, dealers, मेंटेनेंस, रिपेयर, हर चीज, मतलब आपको एक सिस्टम डेवलप करना है। यू हैव टू हैव द कनेक्शन ऑफ ऑल दीज एंटिटीज विद द मेन सिस्टम। दिस इज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत मस्त फिगर, इसमें बहुत सारे एक में एक आपको काम मिल जाएंगे रिसर्च के लिए। ओके, स्मार्ट हेल्थ केयर। नाउ ऑलमोस्ट इकोसिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स विल हैव द ऑलमोस्ट अ सिमिलर रिक्वायरमेंट। मतलब आप सॉल्यूशन वो हेल्थ केयर में यूज करो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, ऑलमोस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विल बी द सेम। दिस इज द हेल्थ केयर इकोसिस्टम।
ये मैं आपको बता रही थी ऑगमेंटेड रियलिटी का पिक्चर. You can have such real time or reality based experience to the doctor. You can have the big screens in the room and you can have the proper visualization of each and everything. So I think you can have the complete healthcare ecosystem in this particular scenario. आपको क्या क्या चाहिए? होम केयर, रिमोट मॉनिटरिंग, वर्चुअल कंसल्टेशन, रोबोटिक सर्जरी, रियल टाइम मेंटेनेंस, एम्बुलेंस सर्विस, फील्ड बोट्स, ड्रोन जल्दी चीजें मतलब एक से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा रिपोजिटरी सिस्टम एक्सेट्रा. सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. मैंने जैसे बताया हर चीज में आप एप्लीकेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. IoT based applications, real time services and high bandwidth services. तो बेसिक अप्रोच आपका सेम रहेगा. उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी और वो सारे सॉल्यूशंस भी डालने होंगे. ठीक है. ये एक यूएसए की लेबोरेटरी का इकोसिस्टम का डायग्राम है. फिलिप्स एजुकेशन सिनेरियो. I think this is the last one. This is just a small representation of the smart solutions, like how you can have the flood monitoring, how you can have the smart agricultural monitoring, how you can have the wildlife monitoring. So all these are sensor based applications. You have to use number of sensors in this, and you have the implementation of the sensor network scenario, and you have the aggregator through which you can take the data to the cloud server, and from the cloud you can take it to the remote places. Means whenever, to the place where it is to be taken for control purpose. So this is ecosystem based on the smart solution, IoT based smart solutions. This is the market trend. Obviously 5G has taken up a big market. I think I can skip this slides because these are world level key players of ecosystems in 5G. So thank you all. जल्दी हो गया, but time constraint है, तो otherwise we would have taken up each and every technical aspects in detail. So if you have any query, you can ask. मेरा रोल इवोल्यूशन का था, like आपको 5G एरा के तक लेके आने का. So I think I am successful to bring you to the 5G level. ठीक है. एक विजन आपका डेवलप हुआ कि नहीं, बस वो आप देखो. Then gradually people will learn. जैसे चलेगा वो कर लेंगे अपने हिसाब से. So thank you so much, and I thank you. I thank TRAI and SGCCI both to invite me over here and to present my, to share my knowledge with you. Thank you so much. Your presentations will ensignment so many points in evaluations of 5G and ecosystem for development of 5G use cases. Thank you so much. I would like to request TRAI official bearers to one photo session on the dais. You are all apt at using internet much faster and efficiently than me. Of course, please note down these sites and go through the projects and the kind of let the photo session get over with. And the infringement of patents which are being granted by the Indians and which are being infringed by foreign big companies.
So Nokia people have already faced such a situation. They've won it also. I have the details with me. So Ranganathan sir, I think Chandan sir will brief you about my query and messaging. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you for this question, but I can tell you from the Government of India point of view, because we are interacting with them also on this topic. So of late, from DOT, sir would be knowing that there is a sovereign patent fund of India. This is being launched by DOT under DDSRIT, right? So earlier Mr. Robert Ravi was driving it, now he has moved to BSNL, but his replacement is already driving that. And that is one. Second is on SEP, Standard Essential Patents. The discussions are on how it will be formalized. It's a long journey, because everybody, academia, local, our industry guys, and I would say the startups, they need to contribute. So that's the reason, if you see the vision of PM, that from 5G to 6G there is a long time still pending. On 5G we have come at par with the world, but now in 6G we want to lead. So to lead that, the academia, the startup, the industry, all has to come together. So that's the reason there is a focus from government, and Minister is after it. He on daily basis, he is visiting different industries, different academias, having Bharat 6G meetings, which is led by Mr. Pathak. So a lot of things are happening. So SEP will also, I'm sure it will see the light of the day in near future. The government is focused on it. They have put up a fund. The fund is very small compared to the global other countries like the European countries, Germany, Finland, or other country puts in. So I think that fund is it's around 1,000 crores only. But there it is in 8 billion, 10 billion kind of thing. So it is, you can imagine that what is the amount it has to. People like you and Ranganathan sir can. Another thing which we need to know is that yes, here the basic thing which other countries like US, why they are leading the whole world. The research work is not always outcome direct. We should not be always dependent that if we are spending hours, people and other things, and it will result always into something. Research is a continuous process which will keep on happening. So here we just see that is my ROI, when my ROI is going to come, so then research will fail. So just to help tell you that SEP, this is a focus on the Government of India has already focused on that. Thank you. I just wanted to highlight this fact. No, we are already visiting daily basis to DOT. Thank you. Thank you so much, sir. Little bit changes in the schedule. First, our secondly keynote speaker, Shri Amit Anand sir is present right now. So we are taking first his session, and then after we'll go through the lunch. I would like to welcome on the stage Shri Amit Anand sir, who has head regulatory affairs and industry relations Nokia. He has envisaged 5G use cases in manufacturing, mining, and port management. First, I would like to felicitate to sir. I would like to invite JP Garg sir to facilitate Shri Amit Anand sir. Please give a big round of applause for Amit Anand sir. Amit Anand sir has a 29 plus years of diverse and multi-domain telecom experience in sales and account management, consulting and business development across technologies. Sir's representation towards key industry bodies like DOT, COE, TRAI, TEC, etc. for IFI, BIF and other for the 5G Advanced Industry 4.0 and 6G also. Driving private wireless and industry 4.0 engagements across the verticals, creating 4G, 5G partners ecosystem and industry relevant IoT use cases for digitizations and automation. Sir also represented Nokia in key industry event as a speaker and panel, 6G and Industry 4.0 evolution with deep tech. Digital Leadership Conclave 6G India 2023 by Cyber Media for 5G evolution and 6G.
TRAI seminar at Siliguri on digital inclusion, universal access to information and communication technology. TRAI seminars at Hyderabad, AI and ML, use cases in telecom and agriculture. TRAI seminar at Tirupati on 5G and healthcare use cases. Now I would like to present Shri Amit Anand sir for his keynote speaker. Thank you to Mr. Garg and the TRAI, Raghunander sir, for guiding us from the TRAI side and inviting over here. For this year, actually, I have been visiting a lot of TRAI locations. I started from east, then south, and now we are on the western part, nearer to Delhi. So thanks for these invitations. And one more apology, I am between lunch and you. But rest assured, I will make this session very interactive for you. And if the audience is full of students, so I am telling you that as a students, as a startup companies, Nokia really encourage people, and we invite startups and students to bring their innovations in the college of the startups, and we give them the platform. So I'll make sure that you have something to capture and take back home, and maybe then we can interact later. Before I go to the use case and 5G and all, let me just try to give you a brief intro about the Nokia. So, Nokia India is one of the largest locations for Nokia global. We have around 17,000 employees in country. These are our major hub locations. So we have major locations in Delhi, Gurgaon, Mumbai and Bangalore. Bangalore is our R&D center, Chennai is our R&D center, and Chennai is our manufacturing hub for India, where we say it is make in India products for all 2G, 3G, 4G, 5G, and fixed network OLT and ONT products we are manufacturing in India. So this is just to give you a glimpse of this. Can you give me extension here itself? So just to give you a glimpse, I think Madam might have captured all the points on 5G, but I will take 3-4 slides to give you an idea that how 5G is, getting into the whole world. So if we talk about, if you see there are around 320 networks which have been rolled out globally over 118 countries. So many devices are available, around 3,000 plus devices are available. So 5G has two variants, it's a non-standalone variant and standalone variant. Which is non-standalone means that it is riding on 4G network, and standalone is it's a pure 5G network. So where in country, let's say Jio has rolled out pure 5G network, which is called standalone architecture, but rest of the two operators are doing NSA. And in future they are also migrating towards standalone architecture. And this is the kind of count which we foresee that operators are investing over here. 2.6 billion subscribers globally are already on 5G network. And the target is that which we based on the forecast from GSMA, by end of 2030 we will have 5.5 billion when the 6G is going to get ready in the rest of the part of the world. 5.5 billion subscribers will be on 5G, and 40% of the world population is already, they were end of December 23, they were already covered with the 5G. Let's see the graph how the technology is basically subscription is moving on the mobile subscription. If you see from here, as we move on for the next years, the 5G subscription will keep on increasing, and 4G and other things subscription is going to go down. So, and this is the kind of, and on the right hand side, if you see the kind of revenues which operator will generate,
out of the 5G rollouts and the subscriptions. So that's a kind of forecast for 5G. And this picture depicts that right now the traffic is on 4G network, but how the traffic shape will change maybe 25 and 26 onwards. We are seeing that it will be a mix of 50-50, and then onward the traffic on 5G will increase going forward in the next years. So we will see that the 3G has already sunset. So we will see that 4G maybe another 10 years. Then in the sunset of it is going to happen. Then 5G and 6G will coexist going forward from next years. The device ecosystem. So as you are talking, there are different spectrum range. So kind of device ecosystem which is launched globally over here. And then this out of the total device systems, how the 5G devices in total, the non-standalone, the standalone devices. And on the other side, you see that dongles. So why the industry 4.0, like what Madam was talking in the earlier session, why it is not picking up, when it is going to pick up. So we see right now the only thing is the phones are there for 4G or the 5G. The other thing which is going to change the whole dynamics of 5G monetization will be when the dongles and other devices which capable of 5G things comes in, 5G modems comes in, then we will see the more proliferation of 5G in the networks. Just to give you a glimpse of India, we started, you might have heard PM also and that Minister of Telecom also, that how in 1822 once we are launched starting from 23 March 23 till 31st March 24, we have rolled out almost all operator inclusive around 4,35,000 BTS sites. So that's a kind of rollout which has happened over a period of 22 months. And then we see that how the traffic is increasing on our sites, and we see that how the traffic will increase on 5G, move from 4G to 5G. Again, it is going to hit in the end of 25 or 26, that it will be 50-50 mark, similar trend which global is going to have in India. And then again, we see the traffic, how the traffic is being shifted from 23 to 24 within 12 months, how the traffic is moving from 5G to 4G, from 4G to 5G. So that's a kind of India glimpse, which is again a trend which global is also following. And then we will talk about what next beyond 5G. Just another glimpse. In 22, we were able to download only 18 Mbps as the average data rate. Now with the launch of 5G, we have reached to 96 Mbps data rate downloads, average. So that's the curve we have taken in the last from 22 to 24. Now 5G use cases, which we are saying that how 5G will be monetized. So it is now 5G, first of all 5G is not only for consumers, it is for industries and beyond, right? So if you see the phases of various 5G, we divide that 5G into three different phases, phase 1, phase 2, phase 3, which means in the phase 1 we say it's EMBB, enhanced mobile broadband subscriptions, right, which is fixed wireless access, more broadband at your phone, higher speeds and all. But then we move to the next things, which is massive machine connectivities and URLNCs, basically ultra reliable, low latency kind of applications where you are looking for. That is the kind which is going to follow in phase 2 and phase 3, which is release 16, release 17 onwards. So that's the main basis of where 5G will get into beyond consumers, which is in industry and other research domains. So how the things is going to happen, how 5G is going to happen. So if you just look at this graph, there are different applications which you see on these things. Now these applications are either bandwidth hungry or latency hungry. So if you make it in the 4 different quadrants, you can see the kind of the normal sensors we put at our home or offices or different location. They require only very few kbps kind of data upload. But when you move up on the right top quadrant, then we see the AR, VR kind of thing, autonomous vehicle, haptic experiences. And even future we are talking of the remote surgery, then V2X kind of things, where we require the extreme throughput requirements and the ultra low latencies. So from this side, if we move from top, then it is a kind of bandwidth requirement, and from this side, if you see, then it is a movement of horizontal axis is the kind of ultra low and low latency requirement for different applications. So these are the applications which are falling into a domain which will be supported by 5G. So we can say that yes, right now 4G can also support application, but if we have to see that when the volume of applications comes in or volume of device or subscriber comes in, then because of spectrum limitation for the 4G, it is not going to happen. Because in 4G we used to have 20 megahertz, 30 megahertz kind of spectrum, but now 5G we start with 100 megahertz. And then efficiency also because of technology inheritance,
gave a higher efficiency compared to 4G. So these are the applications when we got into the more domain, they will be supported through 5G. So real-time experiences, real-time upload, download, all those will be supported through 5G. Now let me come consumer side. We have discussed that from phone we are either seeing YouTube, Reels or whatever study items we are doing on the Google and all things. But now let's see how 5G is going to really get benefit the industry as well as the monetization part for the CSP. So that's the buzzword you might have heard. You were just listening in the previous session, Industry 4.0 and going forward Industry 5.0. So Industry 4.0 is what is actually it is Industry 4.0. Why people need it? Because that's going to help enhance efficiency, productivity, agility, connected workers, health, safety and sustainability. Sustainability operations are the major requirement of this world these days. Because you know everybody is talking of all these climate factor changes in. We are also part of the COP, Climate COP 26, 24. Now where we need to do all these sustainable operations. Our ports, our airports, our coal plants, those has to be fully sustainable. Only then we can survive. Otherwise this growth is going to kill us. So basically 5G is going to support all these things. And while maintaining that you don't need to change your assets. Assets means that whatever investment somebody has done in the industry, the heavy machines which they purchased 5 or 10 years back, we can augment them with the dongles or other ways and means. We don't need to throw them away and purchase new things. So which means that by augmentation of actuators, dongles and other things and bringing more software applications, we can really take help of 5G as a connectivity and then bring all these kind of things which we are looking for. Just to show you a glimpse, then I talk further on top of it. Okay. Volume please. When it comes to transporting materials, autonomous mobile robots really deliver. The coverage, reliability, and other features of private wireless give these next generation of intelligent AGVs the context awareness they need to avoid obstacles. They can use plant data to stay updated on production changes, and data from cameras and sensors can improve collaboration between themselves and workers. A digital twin puts a data-rich model of an object or process in your hands so you can understand and act smarter and faster. You can improve OEE by reducing downtime and improving performance. The aircraft turnaround process can be a big source of inefficiency. Pervasive private wireless connectivity can change that, giving real-time data, increasing automation, and helping move planes, baggage, and people faster and more accurately. Safety is another big concern. Using wireless CCTV cameras that reduce blind spots, PTZ cameras on common use in emergency vehicles, even body cams with push-to-video, airports can get faster, detailed operational awareness of the entire site, and zoom responders to emergencies in no time. With 360-degree situational awareness, you can get the widest possible picture of safety and sustainability. Connect machinery, vehicles, staff, and IoT sensors for remote health and safety monitoring. Get data from sensors, cameras, drones, and more. And use video feed analytics to remove workers from hazard. Autonomous vehicles push all the right buttons for productivity, efficiency, and safety. Power autonomous drilling and hauling for 24/7 operations. Use AI and predictive alerts to avoid obstacles while monitoring remote automated operations in real time.
Private wireless covers virtually every corner of the terminal with mobile broadband, passing data between vehicles, cranes, and employees. This improves yard operations in many ways, from empowering better operational control and worker safety to enabling real-time monitoring of reefers with incident alarm data for rapid response. A data-rich private wireless network also provides sweeping situational awareness from drones, sensors, and other devices. Highly reliable voice connectivity keeps communications clear, while push-to-video and wearable sensors boost effectiveness and employee well-being. And throughput can be improved with real-time workflow optimization enabled by advanced analytics. Private wireless connectivity empowers distribution automation for grid applications that improve reliability, outage and voltage management, and distributed renewables integration, enable fan convergence for better cost and flexibility, and extend proven IP MPLS LAN service, security, and management to critical devices at grid edge, optimizing performance and simplifying operations. Pervasive wireless connectivity lets you rapidly access required data for predictive maintenance that reduces unexpected asset failures, lost productivity, and premature replacement of assets. Nokia industrial-grade private wireless, powering the new age of industry from now to next. Nokia. So with this video, I have tried to give a glimpse of different use cases which are possible in different industry verticals. Now I will show the actual thing. It is not just a video, how it has been actually implemented. And as we speak, the private wireless network, which we are just listening, whether it's on 4G technology or on 5G technology, we are the leaders in implementing those things, and more or less around 800 networks, 760 plus has been rolled out by us globally in different industry verticals. Right. So now let me just share with you the manufacturing part, really what is going to happen and how divided, and you people can think of in your second year, third year projects and future, how you can think of targeting one segment and develop use cases in that. Because industry is looking for use cases. Technology is there, connectivity is there, but use cases which is reliable, and then you can multiply it, just customize it for X industry or Y industry because base remains same. So in case of manufacturing plant or a processing or a discrete industry, we divide the plant into 4 different categories. One is the digital campus. Second is the plant automation. Then the worker, which is very important. The health and safety of worker is very important for your productivity efficiency. Then the asset management. Again, once we do an investment over there, we need to take care for the longer years, maybe 10 years, 15 years, till the life cycle of that product. So all these things, if you are able to manage, then whatever we saw on the initial slide, that productivity, agility, efficiency and all the things, connected workers, all will drive by itself. So how it is going to happen? Let me further break down. On the digital industry campus side, so many things start from entry from your gate. If you just remember, not to be remembered actually, the Corona days when it started, the whole of world was on a standstill, but factories operations were running different on the whether for medicines or different manufacturing. So how to make the employees, ensure that employees who are coming to the factory or shop floor, they are fully protected. So even using the technology, we put up the cameras in our factory, the thermal scanning, the PP kit check, and on a continuous monitoring of this temperature, we were able to identify that yes, the employees who are entering or who are working on shop floor, they are in a safe zone, they should be allowed to work, else they were quarantined or sent back home or to different destinations. So it starts from the gate of your factory, the use case. Security surveillance, digital twin of the whole plant. When we say digital, I'm sure you understand the whole digital twin. It's a physical asset which is getting converted to digital. And then you have to make insights out of that digital. That how the behavior of this trend analysis, predictive analysis from that product, those equipment we need to make out. So facility management, multifunction drones you can do for surveillance part. Then in case of automation, how the man-machine and machine-to-machine communication can be made with the help of IoT sensors. Quality management, robotics. I'll show all the robotics and the AGV and AIVs. So AGV is auto-guided vehicles and auto-intelligent vehicles. Once you train them, all these are robots. Once you train them, they will do their own tasks. Like we do and go there,
pick up the material from other place, they will do the same job by themselves. So which means we don't need to waste our manpower just to travel in the factory or shop floor. I'll give you one example of that of our factory. Then so many things for the workers. So I'll give you show one slide where a worker can be fully connected, which means a jacket, helmet mounted, cameras, sensors on his, and he can give a signal from wherever he is located, what kind of environment he is in a safe zone or not. So all those signals can be captured at a control center. Then on the infrastructure side, asset management, control, maintaining the environment part of it, of different industries. So these things can be done into different domains. This is called Industry 4.0 for manufacturing environment. And not many use cases are industry centric also. This is maybe you can think of, for automobile, 80% of will be the same will be required. For other manufacturing process, for medical facility, let's say in Gujarat, I have discussed not many with the companies who are manufacturing the medicines over here, like Lupin or Sun Pharma and all. So they are getting into this domain. But only first thing is they have not digitized their assets. So first and foremost thing is that you need to have a digitization, which means in your handset you need to put SIM card. Otherwise, having a empty handset doesn't make anything. So first you put a SIM card which makes you digitally connected, and then you load applications and run it. So then it's an automation process which happens. Or you give a command to Siri do this or that, or what other thing, Alexa and all. But first you need to have a connectivity for that. So 5G or 4G is enabling the connectivity part of it, and use cases industry centric and dependent. Now, Raghunandan sir were talking about Chennai factory, so I am just trying to give you a glimpse of our Chennai factory, where auto-guided vehicles and auto-intelligent vehicles are running, and they are traveling almost 23 km a day in a shop floor. And our shop floor is 42,000 square meter area. The factory is around 150,000 square meter, but the shop floor is this one. So in this, the auto-guided vehicles and these auto robots, they travel around 23 km a day. So you can think of a person, or in 3 shifts, they have to travel, how much wastage of time and human resources we are doing. And they are taking of heavy material, small material, spare part management, everything is handled by these guys. So whatever we have done in our factory, we divide into 4 different categories. One is a digitization, which means we are connecting the complete assets. We are able to do the indoor positioning, accuracy. Like we use GPS for our part. Every asset of our industry or the factory shop floor is within a 5 meter, or I can say within 1 meter proximity, we can find out where the asset is lying. It is a real-time positioning of that asset which is there. Then spare part management, augmented reality and virtual reality based thing which you just heard. So we are using video analytics and augmented reality to see when the person on shop floor they are working, whether they are doing the right job or not. If they are putting the card or something else in a different fashion, straight away the camera will take the image with the AI and video analytics. It will stop him and give a wrong signal that you need to correct it. Only then you will be allowed to move to the next steps. So these are the kind of use cases which you can see on this. Then robotic. Robots are doing all this, repetitive tasks which human always dislikes to do. The repetitive tasks are assigned to the robots. So it is a completely automated lines which is done by the robotics. I will talk about it. Then automation is fully automatic. We are manufacturing 5G radios. Fully automatic manufacturing line is there for that. Then digital twin, I talk about it. Third eye is for surveillance. So this is a complete view of that what kind of use cases someone can implement. And almost I would say there is no such industry guy, no such government dignitary left who has not. Even last Friday we had a visit of MOC, Minister of Communication, where I was there along with him also to showcase all these use cases. So he was just again thinking that what we can do beyond industry 4.0, how we can move forward. Any question? So this was the manufacturing side. Yeah. हेलो सर, जो डिजिटल ट्विन है, आपने जो बताया डिजिटल ट्विन के बारे में, तो सर उसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस कर सकते हैं? क्योंकि जो लेटेंसी चाहिए होती है वो तो बहुत लो चाहिए,
इन माइक्रोसेकंड से भी कम की लेटेंसी चाहिए होगी, तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और कौन से लेटेंसी पे फिलहाल अभी डिजिटल ट्विन्स हमारे पास अवेलेबल है? So first we need to divide the digital twin into 2 or 3 categories. First part is that first of all we need to create a replica of this, our complete assets. So you are bringing the complete 360 view of physical assets into a digital environment. So that's a offline thing, you don't require any technology for connectivity part of it. The second thing is what you want to do once they are on digital, real time, then what you want to do out of it. So the behavior of those assets, you need to take out, upload it to your data center where the analytics will be done on top of it, right? So this is an offline process. So whatever data you are capturing, it is going to your data center and some analytics, data analytics and their applications have been done to find out the behavior of different products, right? So that analytics is an offline process. You don't need to do anything on top of it. The third thing is that if you need to interact from remote, then 4G, dedicated 4G for that, or 5G will help to interact with the machine and the individuals together in a, what we say, the virtual world environment. There you require, yes, high upload throughput and low latency. So I would say around 10 to 15 millisecond will work for that, not microseconds. Microsecond as a technology, no technology, wireless technology can provide. Because you see, from a base station, when the signal comes to your handset, and from handset it goes, you are pressing some application, it goes back to the base station, and from base station it goes to core network, from core network it goes to the application data center, and then it comes back. So if you see the round trip time of the whole of application, it itself takes time. So the 5G technology, the connectivity has a minimum time for the let's say round trip time, but getting the application and continuous support from the application data center, that's the maximum time which consumes in the round trip time. So that's the reason if you see that YouTube or other people where you are using the reels or from the Facebook, they are putting lot of servers across the world. Let's say in India also, if they are putting one in Delhi, one in Bombay, or one in Pune or central part of it, so that subscribers they do the analytics that what kind of applications or the apps which are being used by the Gujarat people. So they will try to populate all the such applications to the localized so that you have less time to on this application side. So it's a combination of things which happen. Accordingly, we need to plan. But if I do access anything from remote, then 10 to 15 millisecond latency is good enough to work. I will answer to his question. But that latency is within a technology network between base station and the mobile handset. But then we have to go to the transport network latency, then the application latency, core network. If you add all the things, then it adds, instead of 5 microseconds, it becomes 10 to 15 milliseconds. Battery bus and all those. Yes. So all this, let's say, different protocols which work on the industry, let's say CAN bus and other things, your Modbus and all. So there we need to see how they behave by themselves. Anything else, or I move to next chapter? So on the mining side, so mining, any miner, they are measuring their operations in 3 different directions, and rest everything fall under that. One is that how the safety, all the safety prospects they are taking. Second is the productivity happening per ton, and third is the efficiency cost per ton. How much he is spending in terms of total other resources, people, equipments, machine, and other power and other infrastructure to get out 1 ton of ore. So these are the 3 measures, and to achieve this, so many use cases are required, or they are seeing it. They need to train their people with augmented reality and virtual reality environment, because you can't send anybody and everybody to the mining, especially in underground mines. And then how to use the drones, how to use the robots, geolocation, geotagging, which is very important in mining operation. Where the employees are, how far they have gone, where the vehicles are, how many, what depth they have gone to. So all those things, these are the kind of use cases which are driving the mining guys to get into automation, digitization and automation zone. So as we speak, a lot of people, from whether we talk about Coal India, we talk about Adani mines or any other major miner in country, they are looking to do the digitization part. Currently they are, partially they have digitized with the help of Wi-Fi, but that is not solving their purpose. So cellular connectivity is must for them to get the complete digitization and automation.
kind of use case. So first of all, if you see, this is the underground mine kind of environment, and the upper one is the open pit. So there are different kind of mines where we are extracting the metals, or let's say coal is from the underground mines, for example. So kind of use cases which are required. So we need one thing, we need to maintain the temperature pressure also on those areas. Humidity is how much. You might have seen that in the coal mines, workers are stuck out and all the things. So how the complete environmental monitoring, that's a very important thing. So many use cases are there, geo-tracking, geo-tagging. Then other thing is that how to remotely manage the equipments. The one who is a digger or hauler, how we can remotely manage these guys so that they are drilling by themselves, they are unloading the things, they are uploading the things and coming back to the ore location. So all those things can be remotely monitored and remotely controlled. So for this you require a robust cellular connectivity. And to do all this, we, especially in the open pit mine, we need to plan the network at different layers of the network, because as we go below 400 meter, 500 meter, even 800 meter down, you can't radiate from the top level of the earth. We need to put the cell on wheels, cows you might have heard of. So all those planning we have to do. Then the micro link has to be put up over there, because you can't lay out fiber in the mining area. So all this planning is required, and then you are able to control all these things, kind of use case you can develop. And it is not that on day one you require the use cases. It is a journey which has to be done over a period of time. When the people will start that I need to digitize and automate my mining operation, and then what actually they will achieve. So I will share you what the business, different consultants have found out with a kind of research work they have done with us. I will show you what is the intent they are looking for. Just one example of connected workers which is applicable for any industry and everything. Then I will show these things. So you can think of this jacket mounted, the helmet mounted. They are used in oil and gas, mining areas. Cameras are there, sensors are there. They can even have a mic along with it. So all these things are there with these guys. So which means that with single these 2-3 devices, so many use cases can be found out, and the workers, the health and safety of worker can be maintained in this our mining or oil and gas operations. This is a research or a kind of study which has been done along with McKinsey for real mining operations in different parts of the world, whether it is in Australia or Finland or Europe part of it, or somewhere in Brazil also, because Africa is a lot of mining is being done, and the most industry 4.0 applications or the mining are being done in Australia as well as in the Africa area. India is just starting to follow. So this is the kind of economic impact. Okay, sorry. So this is the kind of economic benefit we are seeing, that up to $370 billion when we are able to do the complete digitization of mining automation. Kind of the fuel saved per truck, per hour, manpower saved, zero lost time in terms of if we are able to avoid injuries, kind of million hours which are saved. So all this will result in the productivity part of the whole mining operation, and it is applicable for any industry. Next, I want to move to the ports and airports. So efficiency of port is, because you are from Gujarat and you know Kandla port, how much time a ship takes to get out. If a ship arrives and how much time it stays there, any idea? It takes 12 to 24 hours for one ship, and that ship has to go to Sri Lanka and other part of the world also, because it is not just carrying the material for Kandla port only. So I'll show you that if we are able to digitize, if we are able to increase the crane which is the Q crane which we say, then the moving cranes and then the rail cranes, how they are able to fast movement and taking out the material, fast container movement, how he is going to change the complete, and the government is thinking very aggressively on that. So all these things, the Sagarmala project which is there, that is coming into this, but it is going to take time because of all bureaucracy as well. So even in Surat also port is there. Even in Surat also port is there. Hajira port, Adani port is there. Yeah. Surat also. Hajira. Surat, Adani port is there. Adani port is in Mundra port, na, basically. Surat also is there. Because Mundra port I have visited Mundra along for Adani to do all this such activity for Adanis. So kind of use case which are required in port. So you will be able to relate now that
Some will be common in manufacturing also. Some will be in mining operation also. So that's what I was trying to say. That 60 to 70% use cases are common. You need to tweak that flavor of the use case, and then you will be able to, you know, get it to the right set for modified or customized for the respective industry. So predictive maintenance for the assets. Communication is very important because these are far away, and we need to take care that how communication is effective communication, which is required for any application to be run over on this. In one port, in a day, more than 5,000 trucks in and out happens. And you don't know which truck is idling where. So if even 10 trucks are idling, you know how much time is lost in the traffic management itself. So we can make use of drones, again connected workers over here, wireless connectivity, video analytics we can do of different assets. So all such use cases are we can implement in the port environment also. And then just to give you how it is going to benefit the ports. This way. Drones for vessel navigation, mission critical voice and video communication, push to talk, push to video we can do, asset monitoring we can do, predictive maintenance we can do. So a lot of things which can be done, and from here we can, once it is the ship is offloaded, then how fast we can move the containers. How containers are being tagged with the RFID and QR codes. We know which destination it has to go. So in one day, we can move, instead of one train, we can move 10 trains on the DFCA corridor, and then you know how the things will improve. The logistic cost will come down. So it is the end thing which is going to happen, which we are envisaging over a period of time, that how it is going to impact the cost of the product which is going to the end consumer. So everything adds. You know, logistic cost is highest in India. If you compare to China or America or even to Europe, logistic cost is the more thing which kills us. And you can think of when we talk about the onion and tomatoes are expensive in the market, they say we are selling at 50 paisa, but you are getting at 50 rupees or 100 rupees. Apart from in between commission of the profit of the people, but the logistic cost is also added to that. Fuel cost. Some credentials. These are credentials from the people who have implemented use cases in port industry. That how they are able to improve the crane movement. If you are putting IoT sensors over here, how we are able to maintain the health of these cranes, move these cranes, we can align the cranes when the ship is going to come, everything is ready, moment ship is coming, all the 10-15 cranes are ready, and they are ready to offload the ship. Instead of 12 to 24 hours, we can move empty the ship in 4 to 6 hours. So that's the kind of productivity. Then you can have 3 ships at a time when we are doing 1 ship only. So without going much into detail, but these are certain credentials that how the terminal workflow will going to happen, predictive asset management, how reducing the maintenance cost, and then ultimately it's the complete productivity and efficiency, and the end user consumer cost will also come down. Talking about airports, nobody might have thought of that airports also, do we need that or not? But just to tell you, when a plane lands, there is a 350 to 400 GB of data which plane has to offload and give it to the ground staff, and that too in 40 minutes, because the turnaround time of plane is around 40 to 50 minutes. Right, sir? So, but we are struggling with 5G to roll out on the planes, airports, because of that altimeter issue. Anyway, but right now they are trying to do with Wi-Fi or some dongles and all, but at some places we have done some use cases, not to offload the data, but to do the maintenance, because when a plane lands, after one flight, a complete check has to be done for that plane so that whether it is fit for the next flight or not. So there are certain use cases which has been done with the Lufthansa, where the complete video analytics things has been done. The fins are checked, engine is checked by video analytics, and the person sitting at remote area, they are able to monitor that it is good to go. So you don't need to send in a warm weather or in a rainy weather to say something what is happening over there. So the cameras are mounted over there, they can monitor it, and then they say it is pass. And the AI works on top of it. Yeah, we can give, but only thing is that the ecosystem for 5G on a 26 GHz, the dongles and other things, it is not picking up. It is not available at the economy of scale. Like the 5G handset is on 10,000, 12,000 rupees. That the dongles are quite expensive and they are not available in bigger numbers. So if you see my initial slide, more is on N78, 3.5 GHz. On 26 GHz, 38 GHz, nobody does picked up in that great way. Neither in US or in Europe also. So all this stuff, I have done with this discussion with GMR also, and this Mumbai with Adani team also, Mumbai airport, that how we can do such use cases implementation. Basically, they want the complete control
from the, one moment you come out from this place, air bridge, from the tarmac to the air bridge, the complete control can be done by the 5G application use case. Communication between vehicle, asset tracking, download of the data, all these multiple things which you have thought of, and then there is no end for any use case to be thought of which can be developed in the future. So this is just an idea which we can throw over here. One most important thing which I am saying from the beginning, that it is not, like ma'am also said in the previous session, that it is not only the technology which is going to work. So we need to work with the service providers who are having the spectrum in the country or who are having network in the country, as on date in the current scenarios. Then we need to talk to different industries who are the masters making equipments for that respective industry, that how their machines are going to work, connect, how we can take out the data from their machines. You are seeing the smart AC coming in, but from that smart AC, whatever the data we are taking out, if it is running for 10 or 12 hours, am I getting the alarms? Am I getting some analysis, trend analysis that when this AC is going to get failed? So similar thing we need to talk to these guys. If this dealer or shovel is working over here in a complete heat environment, when it is going to get out of work, we will know from the trend analytics. So we need to interact with these guys, how the dongles are going to fit. Other thing which we were testing with Rani in the mining area was that when this machines works over here, there is a heat, there is a temperature, there is a vibration. Whether the equipment we are mounting on this, whether it can withstand that, all those things or not. So unless until they are certified, nothing is going to work that way. And third thing is system integrators. Because if you have to save the cost, then we need to see the use case provider and the system integrators spread out of the country. Only then we can do in a multi. Otherwise, if somebody is flying always from north to south, it is not going to get cost effective. Moving to farming, I think agriculture was also an important topic, because for India we are taking 5-6 major things. So in agriculture, there is no basically area where we can't use 5G as a technology with IoT sensors and all, drones, video analytics. Right, so all such use cases are available, starting from plowing, tractor management. The company called John Deere, Escorts, they are working on this connectivity. Even in Australia and Canada, their tractors are augmented with IoT sensors, and they are fully connected like the mining equipments. Maintaining the health and the food of animals, which is very important for us. That if we see the Amul as one of the big things, so how we maintain that kind of the food which we give to them, the quality of that food, how we maintain the humidity, temperature, pressure of those things, or the area of that air. So many use cases are there. Most important thing is that when the yield is out and it is being kept in warehouse, so how to maintain the temperature of those warehouses. That is most important. We are not wasting the yield over there. So all such use cases are possible without a manual intervention. So that's a glimpse I want to give. And then environmental sensing I just talked about, that we all can wait, try to monitor all these things over there, like the insect monitoring, pesticides spreading and all the things. And accordingly we can do precision farming. Now the new term which we are saying is a precision farming, or dripping. We have seen dripping irrigation. Now precision farming is talking about spraying the pesticides as per the need of the crop, as per the need of the soil, as per the need of the area and geography of that locations. So I'll share one of the things, partners from Bangalore who are doing drone-based precision farming in almost 10 states of the country. One thing we did with Vodafone, I think some colleagues from Vodafone are here. I understand somebody was there, right? So with Vodafone in MP and Maharashtra, we did use cases on 4G technology, which can be implemented in 5G also, where we put around 263 sensors for environment, pest control, soil monitoring, and if you see that how our sensors are put and what we are monitoring over there. So there is a complete video, we run this around for 3 to 6 months over there in the field, and it was to be implemented, though it was done through a CSR project, but it was done in 2 or 3 different fields in the Maharashtra and MP areas, and different things were done. So video analytics based crop management was done in the warehouse, or the stock where the yields were being kept. Soil monitoring, all the sensors. Then remote control, it is completely remotely monitored and controlled.
and farmers are informed about the complete information about what's happening in their requirement or whatever application they are subscribed to. Smart agriculture, I'll just share the next slide actually. This is one of the companies, a startup, and now this is having a good business in India with around 10 to 12 states, starting from all the northern states till MP and I believe in Maharashtra or Karnataka also now, because they come from Bangalore itself. The name is General Analytics, and they have these drones. If you see this bucket, they are able to put the even water or the pesticide, and they drip the irrigation dripping over there. So just to mention how they do it. So they have developed a complete ecosystem. If you see the ecosystem, basically they talk about they have a complete application for farmer that even they are selling directly or through the intermediaries also, right? So they are able to provide mobile application direct to the farmers. So the cost of this is also very nominal. That's one thing. That's the reason it is being adopted in more than 10 states. So companies like Bayer, let's say, who are supplying pesticides, they have subscribed this service to these guys and they offer to the farmers in the field. This is how the application is divided. You can have everything on your handset. The farmer will have everything on their handset from the remote location or the control center. Different roles are defined for these people. They are for the farmer. What is the role for how the drone is going to monitor? Reseller means direct selling or through some reseller, the service. Then maintenance technicians are there. How they are able to do the drone management service. So they are able to do one field, I think they said 1 acre of area within 5 or 7 minutes. So that's the time and effort which is saved by the people. So we brought this partner to India Mobile Congress in 2022. There's a lot of partners which, that's why I said in the beginning, that a lot of startups and ecosystem players, we promote them and we brought to our booth in India Mobile Congress. I think we talk about warehouse and logistics area also. So some use cases are just highlighted, not to go because I think people are getting jittery for lunch. So material is enough. This is for retail chain again. Asset management, tracking, indoor positioning. One single video analytics application can do multiple things. So you just need to think of. This is one of the low-hanging applications which people are looking for. One last topic and then I'll leave you with the future. 4 or 5 slides, not more than that. So basically what we are seeing is till now we have seen external connectivity, then we talk about industry, but the most important thing is where we spend our time. If you see the time spent by any individual is mostly indoor, or when he is static and using the application sitting on a bed or a sofa or somewhere else, or in the office. So these are the certain areas where the time is spent by individuals, whether the events, digital venues, transport, airport areas, again just showing the different high-rise buildings, and then industry I have spoken about. So in these areas, we need to see the highest connectivity and where the connectivity is really poor because of this penetration and technology part of it, where the indoor coverage is required. And there I have some suggestion method, though TRAI has come out with a lot of consultation on indoor solutions or neutral hosting and all. So even 2 weeks back also there was some discussion happening. So just I want to highlight that how this can be addressed actually. So these are the reasons that I just mentioned, that 90% of time is spent in indoors and the traffic, 80% of traffic is generated through indoors only. So that's a calculation. We don't see movies while walking and all those things. So what to do about this? There are so many kind of technologies which can take care of all this digital connectivity, smart infrastructure. In a high-rise building, in any stadium, in any mall, in any hospital. Because nowadays these people are looking for more robust and wireless connectivity, not the fixed connectivity. So to address all such things, we need some kind of indoor solutions which can take care of this requirement of heavy throughput. Like you said, 26 gigahertz, sir. So this is going to work really in indoor environment. And there you can think of small cell, Wi-Fi, active dash, passive dash, all these things will work. But only thing is now we need to see whether active dash can really help or not. Because indoor neutral host solution is going to help much better compared to this active dash. So in this domain, the most important and interesting thing which is happening is the IP vendors, the infrastructure vendors,
or the digital infrastructure vendors, I would say now globally, which is being called out, they are getting ahead and taking the load of CSPs or the operators and getting into deployment of such use cases and the technology by themselves. One such implementation we have done along with one company called CloudXL in India, where the Mumbai railway stations, they are providing a complete as a neutral of service to both Vodafone and Airtel, and the subscriber, you can see the cloud when the train comes and goes out. The complete network is being shared by CloudXL. It's a neutral of service provider, and they are providing heavy throughput to all the users who are on the railway station. Because from outside the coverage was not good enough for any subscriber. Now these kind of things are being done, and they are going to. RailTel is working more on such models now. So basically, we can think of how neutral of service provider, IP infrastructure providers, they can help in building densification, even rural coverage. Wherever you see the gap, those guys can become the neutral host and provide service kind of things. Then private wireless is for industries. Another thing is the new thing is PPDR services you are talking nowadays. So that's again public safety is one of the things which has become part of smart infrastructure. In Japan, we are using all this private network and drone services for warning, whether tsunami warning or any other warning. This is being used over there. Now, this is the important thing for you guys. I am just trying to give you one slide that in 2022, in our Nokia booth in Indian Mobile Congress, which happens now in this month is happening on 15th, 16th, 17th, 18th October. We have invited all these partners, including Indian Institute of Science, Bangalore, to demonstrate their capabilities in our booth itself. So there was no Nokia equipment, no Nokia technology. It was all only the partners and their use cases in different domains, whether healthcare, agriculture, social, AR, VR, augmented realities, and other things. So if somebody is having some use cases available and running, they can reach out to me, to sir, or any other contacts, and then we can think of it. Welcome to Nokia Chennai factory, situated at Oregon. By 2030, the world as we know it will be dramatically transformed. The line between digital and physical will blur, and intelligence will flow seamlessly through everything. Possibilities for interaction, collaboration, and productivity will multiply. The metaverse will open up endless opportunities across consumer, enterprise, and industrial sectors. What sort of technological possibilities does Nokia envision in 2030? Digital-physical fusion will allow industries like manufacturing to create advanced and interactive digital twins. These innovations will absolutely revolutionize all aspects of operations, from design to testing to real-time monitoring and remote maintenance. Supply chains will also be transformed. Business systems will interact with partner systems in real time to plan and forecast supply needs. Sensors will capture key information across all stages of the operation to enable dynamic production scheduling. Human augmentation will improve how people interact in a combined physical and digital reality in a safe, productive, and immersive way. Unlike ever before, the network will be critical to realizing the promise of the world in 2030. It will need to become inherently intelligent, dynamic, scalable, and secure, with an emphasis on performance and consumability. The network will evolve to be open, enabling a rich multi-party value ecosystem that will unleash innovation and opportunity, creating sustainable solutions for some of the world's biggest challenges. This is our vision for 2030. Together, we're creating the future. Thank you. Any questions? Okay, I think now the lunch. Thank you so much, sir,
for your wonderful enseignements with 5G use cases in various sectors. And I would like to call upon the stage all TRAI officials to make one photo session with Amit Anand sir. And only half an hour break is there, lunch break at Platinum Hall Banquet. After TRAI, in collaboration with the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, seminars on technology trends, 5G use cases in education, manufacturing, smart infrastructure, life science and healthcare and agricultural. I welcome you all again. आज का एक तीसरा सेशन हम 5G यूज केसेस इन एजुकेशन, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर पर हमारे आज के गेस्ट स्पीकर श्री अरविंद वर्गांती सर को इनवाइट करूंगा मंच पर। फर्स्ट हम उसका फेलिसिटेट करना चाहेंगे। मैं सर का फेलिसिटेशन करने के लिए ट्राई के सीनियर रिसर्च ऑफिसर श्री संजीव मीना सर को विनती करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट और चीफ स्पीकर श्री अरविंद वर्गांती सर को हम फेलिसिटेट करेंगे। सर का मैं बायो दूं तो वो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है इंफॉर्मेशन डेटा साइंस और प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Mr. Arvind sir is a distinguished leader in the blockchain technology domain, recognized among the top 40 blockchain leaders alumnus of IIT Hyderabad and Liverpool Business School in UK. Mr. Sir has led informative initiatives across diverse industry verticals. His expertise spans a wide range of areas including central bank digital currencies, asset tokenization, supply chain optimization, telecom, edtech, healthcare, agritech, and energy accounting and more. Under Mr. Arvind's leadership, IDS blockchain practice has generated numerous awards from CII, Entrepreneur India, and Business World for its groundbreaking solutions, showcasing his commitment to innovation and excellence. सर आपसे विनती करते हैं कि आज के जो टेक्निकल गेस्ट स्पीकर की वजह से आप 5G यूज केसेस इन एजुकेशन, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर पर हम बात करें। Good afternoon. I know most of your tummies are full, but the hall is half. But at least I'll make sure you won't sleep for the next 40-45 minutes. Okay. So presentation. While all the previous speakers have spoken on multiple use cases of 5G, I'll throw some light on blockchain, AI, and convergence of all these technologies with 5G. Okay, and I will present two initiatives what we are working on. One is Polyversity, an educational metaverse, what we have been building for last 2.5 years. And then I will talk about certain use cases of 5G and blockchain in healthcare and life sciences. Okay. So first of all, I'm sure you might have heard lots of terms from the morning, but let me make these terms a little easier to correlate. First of all, we are in Industry 4.0, moving towards Industry 5.0, right? And all this Industry 4.0 or 5.0, all they need is just five technologies. And it is very easy to remember: A, B, C, D, E. AI, blockchain, cloud, digital twin, and E is extended reality, which is AR, VR. As simple as that. So these are the A, B, C, D, E's of, like, say, next 20 years throughout your career. These are the 5 technologies predominantly you will be working on. And all these 5 can happen only when there is 5G or 6G, which brings them together, right? And when you saw the evolution of, say, from 1G to 2G, 3G, 4G,
with every generation of telecom infrastructure, new services, new possibilities, new business models opened up. And with 5G, industry specific or use case specific integrations got possible. So how many of you know service oriented architecture? APIs? Guys, you are all second years, third years? Which year? Second years, third year. CSIT? Okay. So you all know when there is a server in the backend, it can always talk to the backend, but an application also can talk to other applications. Yes? This is very fundamental concept of service oriented architecture, where through an application programming interface API, two applications can talk with each other. And the beauty with 5G is 5G supports service oriented architecture so that our traditional internet or traditional enterprise applications can talk to telecom network. Previously, it's very limited and it's not as seamless as what is possible with 5G. Okay, so this is one bottom line you need to understand why all the technologies are converging in the era of 5G and beyond, whatever, 6G, whatever. Okay, so this is one fundamental bottom line. Okay, now whatever connectivity, whatever speed, latency, low latency, hyper connectivity and low cost connectivity, this is what brings any technology's adoption at scale, right? So this is the second fundamental thing which you all need to keep in mind, that 5G makes adoption of many other technologies at scale, which was not previously possible with other previous generations. Okay. So now let me talk about polyversity. So this is, so in the previous speaker spoke about the physical world and digital worlds are converging, right? They are becoming, the difference between them is becoming thinner and thinner. So what we are creating in the field of education is polyversity, the next generation phygital university ecosystem. So when I say phygital, it is both physical plus digital, that is a virtual campus or digital twin of the physical campus, and then learning getting into more and more metaverse. Now I'm sure till now metaverse and augmented reality, virtual reality are seen same, but let me tell you, both are not same. Metaverse is greater than AR/VR. AR/VR is only the user experience layer of metaverse, but metaverse has multiple layers in it. Okay, so I will demystify some of these aspects as I take you to the polyversity metaverse. Okay. So anyways, this is, from ideas, so we are working across multiple industries. So let me skip, yeah. So how many of you heard about this metaverse called Decentraland? Anyone? Oh. Credly, verifiable credentials, and Upwork? Okay guys, yeah, okay, very few, okay, good. So first of all, this polyversity metaverse is something what we envisioned 2.5 years back, and it was launched by our Honorable Higher Education Minister Dharmendra Pradhanji at AICT Auditorium. And what we are trying to bring is Web3 enabled metaverse or permissioned metaverse. Okay, so it has multiple components: immersive learning, verifiable credentials, and skill-based economy and creator economy. Say all of you as students, as you progress into your professional lives, this is what you will be eventually getting into. So how many of you know that today we are in creator economy or skill-based economy? Okay. Guys, the future of learning, the future of work is more skill-based, not your degree or education-based. It's more your skill that matters. And creator economy is something where the future of work is all creativity. Because at the end of the day, with AI, most of the rudimentary, routine jobs are getting automated, and the future of work is fully creativity.
all you will be getting compensated in your job is for the creativity and customization what you bring to whatever service or whatever industry segment you work in. So in that context, 4 important things are very important in future of education. 1, immersive learning. Why? Why do you need immersive learning? All these decades we have been learning in our traditional classrooms. But why do we need immersive learning today? Anyone? Students? First of all, today generic coding skills are no longer relevant because in a chat GPT I can just put up the algorithmic logic and I can generate the code. Yes? So, the ability to write code is no longer relevant. Yes? Second, today like you, there are 4 lakh engineers who are graduating every year from Indian higher education system. So if all of you have that generic skills, how can you differentiate yourself? How? Only with domain specific knowledge. That means manufacturing, say telecom, say supply chain, pharma sector or energy sector. So the point is, the future of learning and the future of knowledge or skill is domain specific. That means all your generic coding skills or generic understanding of engineering will never help you or will no longer help you. You can only be employable when you have domain specific skills. And such domain specific skills can only happen through experiential learning. For example, let's imagine you want to, as a mechanical engineer, you want to get into EV vehicle manufacturing company for a job. All your traditional mechanical engineering knowledge will no longer be relevant. It is only foundational concept. But imagine if you get an opportunity to visit Tesla manufacturing plant and you have experience of going through all the value chain of manufacturing a EV vehicle, then your knowledge or skill will make you employable. You are getting? So, from the previous presentation, you can understand that any industry, you can create a digital twin of it. Correct? Now, when you create a digital twin, one use case is you using the digital twin to monitor the manufacturing plant, for example, or whatever. But the other use case is using the same digital twin to learn, to understand how the business processes go, to understand how the technical processes go, and develop domain specific skills or knowledge. And do you think all the 4 lakh students will get access to Tesla manufacturing plant or say some manufacturing hub or a supply chain or whatever? It can't. And that can happen at lower cost only when you can build digital replicas of that. And that is what we are trying to create. That is an educational metaverse. Okay, understood? So that means these metaverses will not replace your traditional classrooms. It will not replace. Rather, it will augment it. Okay? And of course, if you want to access a metaverse in your computer or in your virtual reality headset, obviously the download is of a 3-dimensional data. Now, for you to seamlessly download that 3-dimensional data, obviously 5G comes into the picture. Clear? Got it? So the convergence of metaverse and 5G clear? Yes? So yeah, this is during the launch by our Honorable Higher Education Minister. And soon India is launching a e-university. And do you know today, the gross enrollment ratio of higher education is hardly 12 to 18%. That means out of every 100 who completes intermediate, only 12 to 18 are getting into higher education. Why? Cost. Second, accessibility. Now to make education accessible, we are all seeing the era of online learning, correct? But do you know all the online learnings which we do in our 2-dimensional, screens,
Do you know during COVID, the completion rate of online certification programs or online learning is 10%. That means out of 100 who started doing an online program, only 10 completed it, whereas 90% couldn't complete it. And the reason? We are more accustomed to experience world or learn in a three-dimensional environment, whereas the online learning today is more two-dimensional. So that dimension is missing, and that is what we are trying to address here. So, first of all, so this is how in a VR environment which you have seen so far, it might be a typical classroom or typical office space where someone can jump in as an avatar. So how many of you know avatar? A virtual reality avatar? You can jump into an environment and all. But what metaverse is a digital world altogether. It is like our physical world which will have land parcels. So how you have, say Surat has a land registry, correct? A municipality who manages all land ownership, and all that land ownerships is what distributes, and ownership of the people is measured, right? But now we are trying to create an educational consortium or an educational metaverse where multiple universities are in one same ecosystem, in one digital world. And today in physical world, all the universities are scattered across the country, correct? And how rare it is for you to interact with a student of other college, only during events or some networking. But now imagine in a virtual world where multiple universities are in same vicinity, what is a kind of quantum of collaborations and networking which can happen, right? So this is what we have built, which is nothing but a 6-petal inspired from lotus flower, and each petal has 27 land parcels. Now I am also describing you what a typical metaverse is. Now in metaverse, the first layer, the user experience layer, is same 3D-dimensional world like AR, VR. But the point is, now imagine there is a land parcel there which is allocated to VIT, Vellore Institute of Technology, for example. They are one of our academic partners. Now, for me to assign ownership of that land parcel to a university, whom do I approach? Can I go to traditional municipality and ask, please issue a registration for this digital land parcel to a university? Can you do that? Because this is altogether a digital economy which doesn't come under the purview of the physical economy which we are in. So traditional government do not have governance control on these virtual worlds. So who will govern this virtual world which is getting created? Anyone? That is where blockchain comes into picture. The underlying layer below this virtual world is blockchain, a decentralized governance model. Now, let me not go so deep into blockchain, but to make it simple, blockchain is again a digital infrastructure. Once you put data on it, it can't be tampered. No one can tamper it. Not even insiders. That means if I am owner of the application and the network, still I can't do it because I don't. In blockchain, there is no concept of admin. It's all protocol driven. So completely protocol driven, decentralized governance. If any change has to happen, multiple stakeholders in the system should agree to it. So that means single person or single organization can't manipulate. So for this, we have built altogether Bharat Blockchain Network, where 130 plus universities across 18 states are maintaining nodes or servers to this network. That means on a decentralized infrastructure which is in the control of academia, the ownership of the land parcels or the virtual world on the top is controlled or governed.
Clear, you are getting? That means if a university land parcel is assigned to a particular university, the transaction of buying that land parcel is on, not on one server, it is on hundreds of servers. That means if I were to attack this and manipulate data, I need to attack 51% of nodes in the network. So to attack a blockchain network or to manipulate data on blockchain network, it is very, very tough. Got it? So now you have AR, VR as one layer, and then the governance of that virtual world is in the blockchain layer, right? But where are all these nodes maintained? On-prem or on cloud? So you have another layer, infrastructure layer, which is on cloud, right? So this is what we are trying to create. So now each of these land parcel, a university can upload their 3D building and that becomes their campus, as simple as that. Okay? But is it only learning which is supposed to happen in higher education? So that's why we have added multiple other avenues to our Polyversity Metaverse. So you have Opportunity Park. Now imagine you are a student of, say for example, I am an alumnus of IIIT Hyderabad. Okay. Now can I put my verifiable credential on blockchain? Why not? I am an alumnus of IIIT Hyderabad. If I put that on blockchain, what does it mean? No one can fake it. No one can create a duplicate credential and fake it. And if you have that verifiable credential of being a student on blockchain, that means with that permissions you can access only your campus. You can't go to other campus. So did I create permissioning? Yes. So I created economy, transactions. I created permissioning in virtual world. Then you have your hard physical VR headset, and each headset has some identity, a serial number. Now can I also put that on blockchain? Yes. Now for a 5G network, can I create an exclusive 5G network, a private software defined network, whatever, network slice, explicitly for this physical university ecosystem? Yes, I can. So now connectivity, infrastructure, identity, and on top of it economics, governance, and then on top of it virtual reality or virtual real environment. Now how many of you saw this recent Meta's announcement of Orion glasses, AR glasses, right? So now tell me, from my physical classroom, can I jump into my virtual classroom just like that? Yes, why not? Can you? Can you join a Zoom link just like that? Every one of you? Now similarly, all of you can put up that Orion glasses, and all you do is just click on it, or a link or access point, and all that asset management again can be regulated or governed. So all I want to tell you is, so far in last century, we have added technology to life. Yes? But now, from past few years, we are actually adding life to technology. Please understand this. Very, very important. We are actually flipping. So far, on the physical world, digitalization happened. But in future, you will altogether create a digital economy, and the physical economy interacts with it wherever relevant, whenever relevant. So when such economies get created, multiple economies, your identity is no longer just your Aadhaar. You need an identity which should go beyond multiple virtual worlds. Correct? And that is called as decentralized identity. And there also your 5G or your device, which can be uniquely authenticated by your 5G network, can play a very important role. So we have Opportunity Park,
where now Google said that all 2000 developers who have Google certification can get and apply this internship opportunity. Today, how does that happen? Today, what is the process? There are student clubs, message goes, WhatsApp messages, and then they all get some notification, a link, do you apply, all this process, correct? But in this virtual world, once Google says something, whoever has that upskilling, that certificate has an NFT, a non-fungible token, and all of them specifically get a notification that you are invited to the Google's virtual office, and you will all teleport yourself as an avatar to that office immediately on the go, and you will apply and you will get. So work, learn will go hand in hand in future. You're getting? So opportunity park. Now, do you need verification to be done when you enter into that space? Not required, because your identity, verifiable credentials are already there. Okay. So then innovation hub, you can team up as a group of students and start working on your idea. And then entertainment arena. So how many of you, like say 4 or 5 friends of you, can go to a metaverse, metaplex? How many of you heard this concept, metaplex? 5 or 6 of you as avatars can jump in, put your virtual, and you all are seeing a movie as a group, and whatever chit chat it is only in that private environment. So the point is, the future of engagement with the digital world is changing, and the economics of it also is changing. So will you buy a Book My Show ticket for that metaplex? No, obviously. You need altogether a different digital transaction system, and again that is fulfilled with blockchain again, and connectivity coming again from 5G. Okay. Then esports pavilion, shopping square. Now recently Modi ji was talking about esports. Why suddenly a raise in esports? Because you can earn millions of dollars or hundreds and thousands of dollars today through esports, gaming, and all such economies can happen. And the beauty is, you will have one profile, a universal profile, which talks about your working credentials, your learning credentials, the time you spend in esports, the time you spend in entertainment, everything is captured. And that is how we are creating altogether a next generation digital university ecosystem. Now did you understand what ecosystem means? Hello? It's not just one organization or a group of organizations. It is group of organizations who are continuously transacting with each other. That is what ecosystem means. So this is how the 3D virtual world, I mean, in the interest of time I couldn't show you a demo, but so this is how the virtual world, all the buildings and all will look like. So this is the kind of solution architecture. So the connectivity, identity, applications, marketplace, metaverse, all that comes into this. Clear? Any questions? Okay. So now let me move on to next presentation. Started, I mean, the virtual campuses on Polyversity, and soon we are phase by phase we are onboarding universities. So all the top universities are already on Polyversity. Okay. So now let me talk about 5G, convergence of 5G, blockchain in healthcare systems. Okay. So I'll quickly take you through this. So let me tell you a story this time. I will not explain the features, rather I'll take you through a story. So first of all, the future is like this. A patient-centric healthcare doesn't just treat diseases, but it nurtures an individual. And that personalization is the future of healthcare. And that is possible with multiple technologies coming together. So let's try to understand how it works. So first of all, 3 technologies is what I'm going to talk about, right? That is what I told you. One is blockchain,
second is 5G, and third is XR. So while blockchain, I told you already, blockchain is not like this or this, the centralized or distributed. It is decentralized, the third one. Okay? And all the nodes in the network maintain same copy of data. And it is driven by protocol, and it gives data integrity or data immutability. Now, this is one layer, and this is connectivity. Anyways, 5G, everyone spoke about this already, I need not talk about. And AR, VR, which is the user experience layer of the applications. Now, what does blockchain bring? Data immutability, digital trust. Now, let me ask you one simple question. You are going to get a remote operation. More than the doctor, the first thing you need to trust is the digital system, which is which is being used to operate. If someone can hack it, if someone can get into it as a single point of failure, right? If it is a centralized IT system, it is single point of failure. If I can attack it, your operation is the other way around, right? So now you need some system which should be as seamless as with respect to speed, but as secured, and you need to have digital trust. See, the biggest problem in today's digital era or digital transformation processes or efforts is digital trust, and such digital trust can only happen with blockchain. Okay, so data immutability, digital trust, data ownership, data integrity, smart contract driven operations, privacy, these are the capabilities what blockchain brings. Then 5G and then XR, both which every speaker have covered already. Now let me take you, so meet Arun, a hypothetical character. Okay, so a day in the future, and let's assume all these three technologies converged so much, and that is what I am talking now. So first of all, Arun got some, he just woke up and he is not feeling good. So obviously there is a remote doctor appointment. So seamless and secure remote consultants. Do you think it's not happening today? It's already happening, Practo or whatever. But the problem is, today all my electronic medical records are scattered across. My health journey or electronic medical records are, so with one hospital I visited, I have a siloed data, and then another hospital, another siloed data. And today we have Abha ID, but still every hospital gives their own ID, and the medical record is stored in their own centralized IT system. So do we have data silos today? Yes. But is it correct? Now when I want to go to a doctor, today there is no holistic way of curing. You got some fever? Take this medicine, that's it. I don't care about your history, your body, your previous conditions, whatever. So is it a proper healthcare? Today doctors do not, any doctor in the hall? Okay. So I can't comment on few things, that's why I asked. Okay. So obviously I'm not asking PhD doctor, you're a physician. No, yeah, physician. A doctor, okay. Today doctors have a time slot. Like, okay, 2 minutes, 3 minutes, this is my unit economics. Beyond that, I don't have much attention time, man. Okay. So that is how the healthcare is today, right? But that can get changed. If you have a decentralized hospital infrastructure where all the electronic medical records, those stored individually, independently across the hospitals, but still the patient has control over all the records access. And that is what blockchain can bring. Whereas 5G is useful for real-time communication, real-time monitoring, whatever. So now there is Medical Chain, a company which is working on this exact part of the journey of a patient. So what does it bring? Security plus speed. Recently for Practo, I just got an appointment on my brother's name, a different age. Is there a way to verify my identity? Today that layer is missing. Okay, so now things will change. So in the era of digital health, privacy and real-time access
are not just needs but rights of every patient. Today, you know, all your electronic medical records, your health data, diagnostic data is sold openly for clinical research. Hello? Any consent of yours taken? Why? Because the data is with them. Why do they care about you? Hello? You're getting? But with blockchain, yeah. I'm a immunopathologist and I know that there is a concept called as medical transcription which is going on since many years. And hospitals abroad, they hire the medical transcriptionists from India. Their main function is only to hear to the what they speak over there in US or in Canada or in Europe, and they jot down all those details on a screen and they share that, even including medical bills with them. So that kind of data is all over. Correct. So there is no privacy today. Yeah, there is no privacy. There is no ownership of the data. There is no. So even if you choose to share, you should be incentivized because you are contributing your data with them. So all this is again possible with blockchain, because in blockchain, data access is through a wallet. All your data ownership control is with wallet. And even if the service provider has to access your data, they have to take permission. Okay, so that is how privacy, real-time access and security can happen with the convergence of these technologies. And now the scene 2. So Arun is not good. The doctor felt he should get some diagnosis, but he's very busy man, an IT architect. He can't go to hospital. So then comes Philips Health Suite, which is like a remote diagnostic. So here comes IoT or sensors. So from a remote location, the data can be pulled back into the central. Now tell me, at the time of sharing the data again, if there is a human intervention or if there is some intervention, again the data manipulation can always happen. So 5G's impact is with respect to high speed and low latency capabilities, so that the data which is being shared is reaching. Then IoT device role, the identity of the IoT device. Again, critical health data near real time it is capturing. So real time with remote is possible with 5G and IoT convergence again, right? So he got the medical kit and he shared his critical parameters, health parameters remotely to the doctor. So now what happens with IoT and 5G is every home can be a node of care. So it's not like people going into hospital, but hospital going to every house or home. And that is what is possible in future. So another 5 minutes, okay. So I know the next speaker is looking at me when he will leave. So now comes insurance, because from the diagnostic data, the doctor found that Arun is not good, he needs a operation. But now comes the next drama of the whole healthcare supply chain. What is that? Insurance. And what is the beauty of health insurance today? You buy an insurance, at the time of buying, they sell you a story. And at the time of claim, they tell you another story. And in between what happens? Policy changes, rules changes and various things changes, but we are not aware. But there is one clause where any changes are made are discretionary to the insurance company. You signed it now? Right? Okay. So now all I want to tell you is, any policy, if it is codified as a smart contract on blockchain, even a code can be made immutable when you put on blockchain. That means when you buy at certain conditions, irrespective of what changes happen, obviously that is to be enacted or enforced. Now today policy is on paper, a physical paper. That's why even the regulator is not able to kind of figure out and regulate and make sure the compliance is happening. But if that is executed on blockchain and the regulator is maintaining one of the node on blockchain, he can
near real-time monitor what is happening in the whole insurance claim processing. And this is what, if the world is becoming digital, the regulator also should become digital, and regulation should become programmable, logical, right? And that is what is possible with blockchain. Again, with convergence of other technologies. Okay, so the programmable regulation is future. Okay, so now blockchain in insurance assures that whatever insurance policy which is sold to you gets executed automatically. Second, fraudulent claims, double claim can't happen. Today double claim is one of the biggest problem. So I got a health problem. My name is included in my wife's insurance policy also at her office. So I'll claim from my office, I'll claim through my wife's office also. Why is this happening? Because no insurance, there is no shared data mechanism within the insurance companies. But without disclosing critical data, can there be shared data? Yes, that is called zero knowledge proof. This is also one of the capability of blockchain, where without sharing the data, you can check whether two data are same or not. A mathematical proof. Okay. So now with blockchain, quality of service plus operational efficiency is achieved, and insurance policy is automatically, because today a doctor's document, sign, everything is to be submitted to a third party claimer, so that they submit it to the insurance company and then comes back. So all this process can be made seamless, and that is what, again, the convergence. So Avanir Health is one company who is already doing the same. So blockchain transforms health insurance into a seamless, transparent and user-centric experience. Now comes the supply chain. And this is from my personal experience. Couple of years back, my dad got a pain in heart, and when we went, they said he need to get some stunt or whatever. And we never, even today, don't know whether it is really needed or not, but we are just trusting. Okay? But the point is, when I got the bill, they said we gave 3 life-saving drugs, which each cost 25,000. Amazing, right? 75,000 in one shot. But the point is, can I really verify whether the 3 medicines which are given, what are those serial numbers, and whether they are sold to my dad or not? How many of you got your vaccine shot? Everyone? Yes. How sure are you that from manufacturer till the clinic where you got your shot, right temperature is maintained and it is authentic vaccine shot? Only one knows, the God. Yes? Today, do you have visibility? You trust on multiple things. One, on the clinic. You trust government is regulating effectively. Third, the logistic player, the driver. He will make sure he is going at right speed, right temperature maintained, and you are assuming that it is there. So today, the end-to-end supply chain of critical medicines or vaccines or whatever, 30% as per World Health Organization, 30% of the drugs in the market are counterfeit or substandard or spurious. Okay, so that is basically the present pharma sector. So now, can you bring the drug provenance on blockchain? Yes. Yes. Now let me take one relevant use case of Surat. So boys, ever tried giving a diamond ring to someone special? And you went to the girl and you showed the diamond ring, and suddenly she asked, is the diamond original? Okay. But if you can put that provenance from where the diamond got sourced, where it got cut, where it got into jewel, and all this journey stored with video analytics and every proof on blockchain immutably, then the girl may trust you. Okay, so this is one use case which Surat industry should definitely look at. Okay, and then comes drug provenance and IoT for storage, monitoring and all. And Trust Flow is our product at IDS. So we worked with the largest pharma companies in the country,
And today our blockchain-based, enterprise-based supply chain product Trust Flow is being used across multiple pharma companies for their end-to-end track and trace of the medicine. Okay. So what happens in the blockchain and IoT-enabled supply chain? Every link is strong, transparent, and accountable. And if right temperature is not maintained, the medicines go spurious and a smart contract gets executed and all those batch IDs can never be sold. So in the entire supply chain, if someone tries to invert, the smart contract will say that it is spurious, it's not maintained at right temperature. So that is how the whole ecosystem can be brought onto one platform. Okay. So next, last slide. Finally, insurance got cleared. Authenticity of the medicines and everything is verified by the patient, and he is now sure that he is in safe hands. But the point is, the doctor said, I will do a remote operation. Okay. So now here comes the XR in surgery. Okay. So of course today a lot of remote surgeries are happening, critical surgeries are happening because you have precision robotics plus XR to see what is happening on ground, and then super good 5G connectivity to make sure that the surgeries are happening good. And then Arun came out happy that his surgery is good and he is healthy back. So AR and VR in surgery are not just tools, they are new eyes for medicine, offering clarity and confidence when it matters most. So and the story continues, he lives on. So that's all from my side. And if you have any queries or no sir, user need not have node. Because he wants to control everything. No, he has a wallet and the public-private key pair. Have you heard Web3? What is Web3? Virtual reality. No, that's what. So again, misconception. Okay, Web3 is nowhere related to virtual reality or 3D world. 3D में 3 है, Web3 में 3 है. Okay, so both are same. No. Okay. So what is Web3? Let me tell you. Web 1 is our early internet, where you have only read-only web, static websites, no write. You remember? Yes. You may not because you are not born at that time. At least the elderly people. You know Web 1, static websites. Yes. Then Web 2. Now you can say yes. All YouTubes, TikToks, shorts, everything. What is this? Read and write. You can read, consume data, but you can also write. But the beauty with Web 2 is, imagine your Instagram account got blocked. Any girls in the student? Any girl students? So you are allowed with Instagram? Yes? No? Okay. So imagine your Instagram account is blocked. What happens to your data? It is still there in the servers, but you can't access it. Because Web 2 is all about account-based access, where a user has a username, password, and the data control is with the service provider. Okay? But now enter Web 3. Web 3 is read, write, own. Own. You will own your data, because Web 3, which is powered by blockchain, the access is wallet-based access. That means all your data is stored on a decentralized infrastructure. That means a public infrastructure, and without your consent, no one can access it. That means today, Web 2, service provider is controlling the data plus giving you a user interface to access the data. But in Web 3, service provider will only give you a user interface, that is application for you to access, but data ownership is still with you as a user. So that means without your notice, no one can sell your data like Facebook. Okay, so that is what Web 2 and Web 3 is all about. Okay, thank you. Presentations, and
we appreciate to give time. Once again, thank you so much. Now, I would like to call upon the stage all the office bearers to take one group photos with our speaker. Sir, okay. So we are just going for the next session. I would like to call upon the stage Dr. Raghavendra Pal sir, who is Assistant Professor SVNIT Surat. He is discussed with us 5G use cases in agricultural, logistic and smart infrastructure. First, we would like to felicitate the sir. I would like to come up on the stage, and I invite Shri Sanjeev Meena sir to felicitate to the sir. Please give a big round of applause for the sir. Dr. Raghavendra Pal sir received a B.Tech degree from Electronics and Communication Engineering Department, Tezpur University in 2014, and M.Tech degree Engineering in Communication System from Department of Electronics and Communication Engineering of Motilal Nehru National Institute. He completed his PhD in the Department of Electronics and Communication Engineering from Allahabad in 2019. His research interests includes 5G V2X communications, Internet of Things, machine learning in wireless communications and networking, ad hoc networks and device-to-device communication. Sir, se binti karta hu ki please present your presentation. Good evening, everyone. So my topic is for this presentation is the use cases in 5G use cases in agriculture, logistics and smart infrastructure. So 5G, everybody knows what is 5G. So 5G is a fifth generation of mobile network technology. It is designed to meet the needs of a connected world. Since there are a lot of applications which requires high data rates, extremely low latencies, and the capacity should be very high. Caters all these things. However, the 5G is still not in its full capacity. We have not deployed yet. Many researchers are working in this area. So currently we are focusing on, see what are the key advancements of the 5G. So we have not achieved it yet, but yeah, we are trying to achieve it. So it is the speeds up to 100 times faster than 4G. Okay. So the latency means delay. It should be as low as 1 millisecond. Means what AMBV. So in AMBV, what we expect extremely high data rates. Okay. The second is URLLC, ultra reliable low latency communication. So low latency communication means, I told you in the previous slide that the latency means delay. Roughly you can understand it is delay. So the latency is expected to be 1 millisecond. Okay. So some of the applications require that. Like suppose the previous speaker was actually talking about the surgery. So in surgery, the security is obviously required, but not only security, this low latency communication is required. Suppose you are calling somebody, normally you might be making some video calls on a daily basis. So many times you see your video is lagging, or if you call somebody on WhatsApp, you might have faced this issue that you are speaking, they are listening after a few seconds, and when they are speaking, you are listening after a few seconds. So the connection mismatch is there. So it is because of the latency issue. Now in that case, you might be facing the delays in seconds. Now what we are talking about? We are talking about 1 millisecond. Okay, the 1,000th part of a second. So why? Because suppose a doctor is performing a remote surgery and the same issue happens. Okay, so 1 second delay is there. Okay, so he or she cannot respond to the actual, means whatever is actually happening. Means if it is giving instruction,
the doctor is giving instruction from its end, and after 1 second, the command is executed at the patient end, then it is very, very unfortunate. Sorry. Okay, so that is why the ultra reliable low latency communication should be there. The latency should be very, very low. Up to 1 millisecond it is targeted. Now the third is the massive machine type communications. So massive machine type communication is basically designed for the IoT devices. Everybody must have done, if you are the BTech students, you must have done some IoT project. Okay, everybody does that IoT project. If you are from obviously electronics or computer science, you must have done the IoT project. So IoT is there since a long time, maybe 15 to 20 years. But now our requirements are changing. So 5G should be there. The connectivity technology what we use nowadays, anybody knows that? What connectivity technologies we use for our IoT devices? Bluetooth, everybody knows that Bluetooth is there, Wi-Fi is there, some long range communication is there. These are the connectivity technologies, those we use nowadays. But here what is written? The massive machine type communication supports a vast number of IoT devices such as sensors in agriculture, smart cities and industrial applications. Okay. It ensures efficient communication with minimal energy usage. So you are using an IoT device at your home, that is a single device. Okay. If suppose you use another device, then you use a third device, you use 10 devices, then 100, then 1000, then millions of devices if you use, then obviously they are not going to communicate properly with each other. Why? Due to the inefficiencies of the protocols or the technologies that you are using to connect your devices. Okay. So the massive machine type communication is targeted for that purpose only, to reduce or to eliminate those inefficiencies and allow you to connect a large number of devices with minimal energy consumption. So that is very, we are targeting in this area in case of IoT. So energy consumption should be minimum in IoT. We will talk about it further. Okay, so these are the 5G specifications. These diagrams are given by the 3GPP only. So ITU and 3GPP. So here you can see what are the expectations of 5G. From 5G what we are expecting. See the latency, means the delay is 1 millisecond. It should provide the connectivity to a person or a node that is going at 500 kilometers per hour. So that is, currently we can say it is unrealistic expectation, but yeah, we are working on it. The spectrum efficiency should be 3 times than the 4G. Okay. Then the user experience data rate, what you actually experience, should be at least 100 MB per second. The peak data rate you should be experience, means what is the peak data rate, that is 20 gigabits per second. The area traffic capacity is in a particular area, what means how much data you are going to receive per unit time, that we are expecting it to be 10 megabits per second per meter square. So that is very huge data. So network efficiency should be 100 times more than the 4G. So see, 5G devices consume more power than the 4G devices in normal scenarios. But we are targeting to it to be 100 times more network energy efficient than the 4G devices. So how it is going to happen? We have to do some research, we have to do some protocols, or we have to use energy harvesting, you might have heard about. Then the connection density should be 10 to the power 6
devices per kilometer. 10 to the power 6 means 1 million devices per kilometer square might be there. So we should be able to tackle these challenges. We should be able to achieve all these things. Now the applications which we talk about are given here. The sensor network, the voice communication, which is close to which of the service category. The sensor network is actually IoT only. So it is related, it is near to the massive IoT. Then the self-driving car, it comes under the service category of URLLC. Means because if a car is self-driving, it should be able to receive data quickly with very low latency. Then many other applications are there, like in EMBB, the augmented reality comes between the URLLC and the NH mobile broadband. Okay. So in this lecture, we are going to focus on three areas, three use cases for the agriculture, logistics and smart infrastructure. Okay. So are you, Miss, first I want to know how many of you are currently doing your engineering? Anybody? Okay. From electronics? CS or IT? IT. Okay. That is fine. Accordingly, I will modify my lecture. So, have you ever made anything related to IoT using simple Arduino? Have you connected it to internet, or have you communicated? You have transmitted data from Arduino to another Arduino. Have you done that? No. Okay. Okay. So, see, MMTC is massive machine type communication. The primary goals of it is high connection density, minimal battery consumption, low cost and complexity. So this service category is related to logistics, agriculture, infrastructure, smart infrastructure and similar other areas. Means whenever we are talking about, see, massive machine type communication means you always keep in the mind that we are going to use a large number of devices in a smaller area. Okay. So in logistics, agriculture and smart infrastructure, we are going to need that. So, okay. So in agriculture, so what are the use cases in agriculture? Precision farming. Have you heard about precision farming? We check all the details of the farm constantly. Accordingly, we will regulate the water supply, we will regulate the pesticide. Okay. So these things are happening, but not at a larger scale. So the real-time monitoring of crops and livestock. So we can, if we install a camera or we deploy some sensors, we can actually monitor in real time our crops or livestock or animals, and we can control the irrigation as well. So smart irrigation means if the water content is low than the expected one, so using the sensor we can actually check it and we can start the water supply. When the moisture is sufficient, we will stop it. So that is the thing. So at least in your BTech level, you should try to design these things in a small area. Okay, these are very interesting things. Okay, so 5G technology adoption in agriculture faces a number of challenges. Okay, now we are talking about we should use 5G here, 5G there, but in reality, if you see in agriculture, if you see a farmer hardly earns, a small farmer hardly earns, the profit I am talking about is 2 to 3 lakhs in a year. In whole year, he hardly earns 2 to 3 lakhs. He is not going to buy even 5,000 rupees of equipment. He is not going to buy. Okay. So we will have to keep whatever we are designing,
of low cost. So we have to design for agriculture, especially for logistics and smart infrastructure use cases, the cost can be high. But for agriculture, we have to keep the cost of equipment very low. Hardware installation is another issue, where in the farm you are going to install the hardware and how those hardwares will be free from any damage. Subscription to centralized networks. Suppose you have installed some devices to the farms, or a farmer has purchased those devices. But what about the subscription? Will you be providing him or her the subscription to the app? Like suppose you must be using the cameras in your home. So the camera gives you the constant capture, constant footage of whatever it is capturing. But to store that footage, you will have to pay. You can see it in real time, but yeah, once it is gone, it is gone. You can't store it until you don't pay. So a farmer is not going to do that. That is for sure. We don't do for our home if it is not needed. So that you will have to see the subscription to centralized networks and software packages and periodic maintenance. Once installed, we will be means the hardware requires the periodic maintenance. So how we are going to take care of that? These all things we will have to keep in our mind so before developing something for agriculture use cases. So cost is the major concern. Okay. Are you all aware about sensors? What types of sensors are you used generally in your labs? Have you used temperature sensors? You must have used. Students से पूछ रहा हूँ मैं. Students, you must have used temperature, humidity. Have you actually used, or you just saying yes? Actually used? Yeah. So see, so what we can do here is sensors, the devices which are acting as the central coordinator for the sensors, these are not part of 5G. Okay, let it be clear. 5G is only a connecting technology. Connectivity, it will provide the connectivity to your devices. A sensor with a centralized coordinator like microcontroller is an embedded system. Okay, it is not even the IoT. IoT is when you collect data, whatever data you are collecting using the sensors, if you are transmitting it to a distant place, that is IoT. Okay, that distant place doesn't mean the internet only. You can transmit the data from one Arduino or one microcontroller to another microcontroller. That is also IoT. And that IoT technology need not use only 5G. Those might be using, I told you, like Bluetooth, Wi-Fi. There are other technologies like Zigbee. Okay. So these technologies are used. Now, why 5G is required? Because I told you in the previous slide, when we have enormous amount of data, then only 5G comes into picture. Otherwise, why to? Because I told you the 5G device is costly in comparison to 4G device or any other connectivity technologies. So 5G allows for the deployment of IoT sensors throughout farms to collect granular data. Granular data means a lot of samples actually. A lot of samples we can collect in real time, such as soil moisture, nutrient levels, crop health, weather conditions and pest activity. So what will happen if you don't use 5G here? I told you there are other connectivity technologies. But why we are forcing on 5G? Because if you actually connect, you try to, as a BTech student, you try to do that. You take 10 IoT devices. IoT devices means a microcontroller and a sensor and a transmitter, transceiver.
Okay. Now you try to transmit data. You pair, make a pair. You make 5 pairs of those 10 devices, and you try to transmit data continuously. Continuously, you try to transmit data and check whether that data is being received at the receiver or not. You check that, then you will get to know why we are focusing on 5G. Okay. There will be so many errors, so many delays, and even your data will not be transmitted properly. Okay. The data will be collided, and you will have to slow down the speeds of your transmitters. That amount of data that won't be able to handle. So it can support wearable devices on livestock which can monitor animals' health, movement, and behavior continuously. Okay. So with the help of 5G, we can do this as well. So the data collected from the real-time monitoring of soil and environmental conditions can be used to automate the irrigation systems. So once the data is collected, based upon the data, we can take some action, obviously, and that action can be automated using some, obviously, again, embedded hardware. Now, and once the data is collected for a long time, maybe for 1 year, for 2 years, for 3 years, we can use machine learning as well to complete the feedback and fully automate our system. We can do that. Okay. Now the third thing is how we plow our field using the tractors. So we can automate that process as well. Okay. So 5G can connect large number of autonomous vehicles and drones for automated farming tasks like planting, spraying, pesticides, and monitoring crops. Okay, again, drone, the farmers are not going to purchase, but obviously we will have to work in that direction so that farmers are interested in purchasing that, and those things are affordable for them. Okay. And if they are, those things are very beneficial if they buy it for suppose 50,000 and they can increase their profit by 1 lakh, then it will be good. Now it can be used to track and monitor agricultural products from the farm to marketplace. The sensors can monitor storage conditions. The previous speaker was saying, see what is the integrity, what means how you can expect the driver has maintained the temperature that is required to keep the medicine safe. So with the help of the 5G devices or integrated with the sensors, we can do that. The sensors can monitor the temperature and other parameters continuously, and it can transmit the data to a central location. And the GPS can track the location of goods in transit, ensuring quality control and traceability. So we are talking here for agriculture use case. So slightly it has overlapped with the logistics use case. So here I have written in a parenthesis, an integrated device will be needed for cost reduction. So what do you mean by that? See, integrated device means the device. If you suppose if you want to collect data of temperature, suppose, then you will have to place a temperature sensor. If you want to collect data of humidity, you will have to place a humidity sensor. But you need a device to connect those sensors. Okay, and finally read the data and transmit it to somewhere. If you use a single device for a single sensor, then it won't work. It will work, but it will be very, very costly. So a single device that has many sensors in it, and all the circuits are available on that single device, all the components, then its cost will be reduced. Okay. So when you actually design the device like that, the things are actually changed. It is not that easy, but yeah, you will have to do that, especially for agriculture use case. Okay, so key areas of contributions, I have already talked a few of those in the previous slides.
So key areas of contribution in agriculture use case, what we can do, we have to develop low cost integrated solution that monitor soil health, crop growth, water levels and weather conditions in real time. Okay. In real time means the data should be transmitted to us in real time, means as we are seeing it in reality. Okay. Like we do when we do video call, the data should be transmitted to us as soon as possible with very minimum latency. So that is the real time. Helping farmers optimize resources like water, fertilizers and pesticides. Systems that use real-time data from IoT sensors to control water usage automatically based on current soil moisture levels and crop requirements. As a BTech student, you should adopt, means you should take any of the ideas and you should implement at least on the basic level. And create wearable devices for livestock that track health metrics, location and movements. These devices provide real-time alerts if livestock exhibit signs of illness or distress. So, this thing currently some researches are going on which use AI or ML to do this task. Okay, but obviously to capture the data we will have to use the IoT devices connected with 5G. Okay. So now the next thing is, the next use case is logistics. Logistics, some of the points I have already covered, which were overlapping. So 5G use cases include real-time tracking, real-time tracking of the vehicles, supply chain management, autonomous vehicles, warehouse automation. So it allows for continuous communication between fleet vehicles, logistic control centers, transportation hubs. Okay. So sensors and GPS systems in vehicles can transmit data on location, speed, fuel consumption and cargo conditions in real time. So if we are able to transmit data in real time about the condition, whatever is the condition of the vehicle, means what is the food, what is the fuel consumption, means how much fuel is consumed, the speed, the location, then it will be very beneficial for us. Earlier, see what used to happen earlier, the truck drivers used to sell the petrol. Okay. And it was a very big problem in that for the owners of the trucks. So these things can be, see, if the fuel consumption, if a truck runs on the road, then the fuel consumption is linear, almost linear. But suddenly if the fuel is, the tank is half, then obviously we can know that yeah, something is fishy here. So real-time tracking, I have already told you. 5G enables instant tracking of goods and vehicles, providing accurate and real-time information on delivery status. Now with the increased speed and low latency of 5G, logistic managers can make faster and more informed decisions regarding rerouting, inventory levels and delivery timelines. So this line is self-explanatory. So we can actually, means in, like in Zomato, you can see where your driver is. That is happening because only you are accessing data from only one driver, one delivery boy. But if the number of drivers, suppose a logistic manager, he will have to track a lot of drivers, maybe suppose in case of truck drivers. So he have to track 50, 100 or maybe 500. So if you want to receive that data, so 5G will be required in that case. Okay. Automation and IoT integration. 5G connects smart sensors, automated vehicles and other IoT devices, enabling full automation in warehousing, inventory management and fleet tracking. Okay. So then the end-to-end supply chain monitoring, we have already covered it. See, during in the supply chain, we can actually keep some sensors, some devices connected with the 5G, so they can transmit data to the control center in real time. Okay.
Then the predictive analytics, when, see, in every use case, initially when we deploy some devices, after, when we have sufficient data connected, after some months or years, we can use predictive analytics. Okay, so using AI powered by 5G, logistics companies can predict disruptions in supply chains and adjust routes or inventory management accordingly. Okay, so if somebody knows is using the automated learning or AI, we can know suppose our driver is going from this place to that place, which is the optimum route. Although Google tells it, but it doesn't tell using the historic data, means it doesn't use AI. So you must have seen a news where a person took 100 mobile phones and he sat on a road, and in the Google it was showing that here is a traffic jam. You must have seen that. Okay, so Google is not doing it with the help of previous data, historic data. It will show you the current data only. So we can use, we can use the data provided by Google, and with our AI powered 5G, we can do some predictive analysis, and we can smoothly, we can remove the disruptions from our supply chains. Okay. Now the key areas of contributions in this particular use case. An end-to-end visibility platform that offer logistic companies insights into the location, condition and delivery times of goods in real time. See, there are, in the logistics, there are many use cases I have told. So there you will have to actually combine it in a single platform. Okay, so, and it should be, obviously it should be easy to use. And okay, then innovate with autonomous drones, vehicles for last mile delivery, powered by 5G for real-time navigation and communication with central hubs. So nowadays, the Zomato delivery comes with the help of actual humans, the real humans, but you can automate it using the drones. If you have good connectivity using 5G, you can give the commands to drones in real time, and they can directly deliver to you, okay, without any human requirement. Obviously, it will reduce some jobs, but okay, we will see something else for that. Yeah. So then design AI-based predictive analytics tools that use real-time 5G data to optimize fleet management, predict equipment failures, and improve route planning. Okay. So this point we have already talked in the previous slide. Then the smart infrastructure. See, smart infrastructure is actually a very vast topic. There are many small use cases in it. Okay, so smart infrastructure means your vehicles should be connected to each other. Vehicles should be connected to the people which are going on the roads. Your buildings should be automated, many things should be automated. So this particular area is actually very, very vast, and sometimes we develop the use cases which are not actually useful. Like one incident you must have heard, a very tragic incident in Delhi, in Old Rajendra Nagar, one coaching center was locked because of power failure. Okay, have you heard? 2 or 3 students died in there. So why they died? They could have get out easily, but in news what I heard is there it was automatic lock, and with the help of thumb only they could have opened, using the fingerprint only they could have opened the door. Otherwise it will stay locked, and the light was on due to water supply, means excessive water. So the door was locked and they could not provide their fingerprint because the device was switched off. So that is why they died. So these things are actually, these types of use cases
This infrastructure, smart infrastructure has a lot of use cases, but sometimes we should avoid the excessive use of technology as well. Okay. So we have to keep in mind the risk factors what we are developing. We should suppose a company when develops a new product. So because the company has put a lot of effort, lot of money in that, so they try to sell it. But as a user, we should think whether it is absolutely necessary for us or not. Okay. If it is not, then don't use it. If it is, then yeah, obviously go ahead, please. So in smart infrastructure, first thing is smart city. Smart city means smart lights, waste management systems, and public safety services. Okay. So with the help of the security cameras nowadays, a lot of crime has been reduced. Okay. The crime is reduced with the help of security cameras only. Everybody is scared of CCTVs. Okay. So that particular use case can be made much more smarter. Okay. So that it can provide the alert in real time without any human intervention. Okay. Then the smart lighting, your street lights are switched off whenever there is, suppose smart light means your street lights are off in case of any, in case of morning or evening time, and only nights these are switched on. Okay. And then the waste management systems, your bins, when they are full, it can directly transmit some information to the nearby center. 5 minutes. Then the infrastructure monitoring. Okay, we can use 5G enabled sensors to monitor the health of bridges, roads, tunnels, and public utilities in real time, allowing for predictive maintenance and reducing the risk of failures. Then the smart buildings for security, energy efficiency, okay, and occupant comfort. We can design some use cases. See, now these things are okay, like 5G enabled smart grids, water management system, environmental monitoring to optimize resource distribution and consumption. Then the public transportation can be made smarter with the help of 5G connectivity. Okay, now, okay, this is the same thing, means whatever I have told you. Where exactly you can contribute as a student, that I have kept here. So 5G enabled smart cities platform that integrate traffic management, public safety, energy consumption, environmental monitoring into a unified system. Okay. So these things are there. Okay, so I will stop here, but not exactly stop. So what I was trying to tell you, one thing is, some use cases we have seen. We can design all of these use cases without the help of 5G as well. Okay. But when 5G will be required only when you will actually deploy those devices. Because you will not be the only person who is going to deploy that device. So those devices will be deployed by many persons in a small area. The device density will be very huge. In that case, 5G will come into picture. And to reduce the cost, what you can do is, to reduce the cost, there is always a single device, a single 5G device that has the 5G connectivity as well as the connectivity with other nearby IoT devices with any other technology, like I told you, the Wi-Fi, the Bluetooth, or any other thing. So what you can do is, in suppose 100 or 200 IoT devices, in between those you can keep a 5G device. That will, the data from the devices will be collected to that particular center not using 5G, using other technologies like Wi-Fi, Zigbee is another technology. It can collect and finally it can send your data to the cloud or any nearby station that is required. This is where we want to send our data. So a temperature sensor generates hardly 2 or 3 bytes for each sample. Okay. So there is no need to connect a 5G device to collect the temperature data. Okay.
So what we have to do, among 200-300 devices, we will have to keep what a 5G enabled device that has the connectivity to all the devices with the help of another technology like Wi-Fi, Zigbee, these things. And since 200 devices will be transmitting data, this is small data, but at the center the data will be huge. Then you will have to use the 5G, otherwise your efficiency will be reduced. You can use 5G to transmit data to the control center or whatever it is on the cloud. So there you will have to use 5G. Now, if you actually want to develop, there is one board that is named Bharat Pi. The government is doing a lot of inventions nowadays, but using Bharat Pi, you can do that actually. Bharat Pi is a new board, you can purchase it at 2,500, 300 on Amazon. So using that Bharat Pi board, you can actually develop. It has the Wi-Fi connectivity is there, Zigbee connectivity is there, 5G connectivity is there. So you can use that board and other devices to create your own small use case. Then you can show it to someone, then you can take it forward. Okay, thank you. This is it from my side. We are going for our last session. I would like to invite on the stage Dr. Chintan Pathak sir, advocate and cyber security experts in Surat. He will cover cyber crime and cyber frauds. Prevention lies in awareness. First, I would like to felicitate the sir. I would like Shri J.P. Garg sir to felicitate Chintan Pathak sir. It is our last session and last topic, so please be seated. Within 20 minutes, we will conclude the sessions. Please give a big applause, please. Yeah. Human right perspective, possible policies and legislative steps to improve cloud computing regime in India. Consumer protection in context of e-commerce. As a lawyer and cyber law consultant, Dr. Chintan Pathak sir is working with Surat City Police, Surat Range Police, Vadodara Police and other departments of the police. Please sir. Good evening everyone. Good evening. પાછળ બધા લાંબા થઈ ગયા છે આરામથી પતાવો એમ કહેવા માટે. So first of all, I am really thankful to the TRAI, Mr. Garg, Chandak sir, Raghunathan sir, all the team members of the TRAI. I am really thankful to the SGCCI for inviting me for this session. Of course that I am here to fill up the gap of the session. At the very end, Mr. Garg said, Mr. you need to take one session. Right, but again it's a very important session. Why? Because the October month is known for the cyber safety month, right? Anyone know about this cyber safety month? So government declared the October month as a cyber safety month, and basically a part of that I am going to present this one of the session. So before starting the session, जरा थोड़ुक आपने अलग करी लिए, right? थोड़ुक mind ने refresh कर लिए. Then after we will start our session. Just play the video, please. Music, music, music. Video, I think, because it's a very viral video on the internet, and what kind of message that I'm going to be convey with this video, maybe you understand, right? यानी कि ये वीडियो किसके ऊपर है, क्या है, और मैं क्यों स्टार्ट इससे करना चाहता हूँ, right? So again, that maybe all the technical people sitting over here, maybe you understand why this video is all about, right? अगर नहीं चल रहा है साउंड तो that you can click on, चालू हो रहा है, ठीक है.
This is all about the AI and how AIs work, and again that maybe that you all know that this kind of catwalk is not possible for this kind of legion person. But again, this video is very viral in the last few months, and this basically show that the power of the AI. Now with the AI you can do anything. You can morph, or you can just change the video, you can change the sound, you can clone the sound. So all these things are possible with the AI, right? And again, today's topic is very important as far as this particular subject is concerned. So technology trends में एक ये भी बात आती है कि भाई technology के handle कैसे करना है, right? So every coin has a two sides, right? So the plus is that whatever you are gaining is a good side, but again the negative side is the cyber crime, cyber frauds, right? So again we need to understand all those points also when we are using the technology, especially youth people like you, because again that ઘણા બધા કેસીસ અમારી પાસે એવા આવતા હોય છે જે કે લોકો એવું કહેતા હોય છે મને કે ભાઈ સર મારે બહુ જલ્દી પૈસા કમાઈ લેવા છે, બરાબર છે, એટલે બધા ક્રિપ્ટો કરન્સી છે, પછી બધા કોઈ બી જાતના નવા છે તે રોજ નવા મુદ્દા આવે, રાઈટ? So they are going to be invest in that kind of thing and they are badly cheated. So today's session is all about what kind of cyber crimes are going on, how you are going to be handled. Acha, if you are victimized, how can you report? Which kind of government initiatives taken by our Indian government, and again the TRAI has also initiated number of things in the last few years. So this is all going to be discussed in this session. Please next slide. So the topic is cyber crime and the cyber fraud prevention lies awareness. So I always used to say that the first defense in the cyber world is your awareness, right? So our Honorable Prime Minister rightly said that the technology for me discover, learn, evolve and implement, right? So again that it's combined of 3S: speed, simplicity and the service. Technology is fast, technology is simple, technology is brilliant way to serve people, right? And it is also a great teacher. The more we learn about technology and the more we learn through technology, the better it is, right? So again that we need to understand the importance of the technology here. We need to understand the power of the technology, and we need to use the technology for new kind of thing or maybe for the innovation. That is the whole purpose of this session. Yes, so again, this is a very well-known post of the Sachin Tendulkar. Maybe you are aware about this post. Anyone aware about this post? Yes. So what Sachin Tendulkar is saying in this post? So he basically is saying that कि मेरी बेटी है वो एक गेम खेल रही है और वो गेम पे जितने वो खेलते हैं उसको इतना पैसा मिल रहा है वो गेम के थ्रू, राइट? So he is what saying. लेकिन ये सचिन तेंदुलकर बोल रहा है यहाँ पे, is basically a clone voice, it's a deep fake voice, right? So it's a deep fake video. So after that सचिन तेंदुलकर ने अपना ऑफिशियली ट्वीट से ये चंद्रशेखर जी को, मिनिस्टर को भी ये बोला था कि सर दिस इज ऑल काइंड ऑफ वीडियोस आर गोइंग ऑन माय नेम. So this is not only Tendulkar, all the major celebrities are basically a victimized of the deep fake, right? अगर NSC का वीडियो हो या नारायण मूर्ति सर का वीडियो हो या अगर मिस्टर मुकेश अंबानी का वीडियो, so every deep fake videos are going on the internet. Again that, and this is a very important concern by the Honorable Prime Minister in G20 is ये dangerous के सामने क्या किया जाए. So our Niti Aayog made some kind of regulation for the AI, how we can use the AI in a positive manner. This is important. Now this is a current scenario of 2024. Now these are the different platforms. Basically nowadays the youth are using each and every platform. What they are doing in every 60 seconds on the different platform. If you observe that almost 3.5 billion chats, Snapchats are created in the 1 minute. Only 1 minute, right? Again, then if you observe that tweets are going to be up around 350k. This kind of tweets are going to be occur on the Twitter, right? Or maybe now X. Then Google search are 6.3 million search are doing on every 1 minute, right? Again, that if you observe that the shopping online, 6 million people are shopping online and every 1 minute. Now, why I am sharing this data with you? ये डेटा मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्या इससे क्या पता चलता है? ये 1 मिनट के अंदर जो चीजें हो रही है उससे क्या पता चलता है? What do you understand?
एनीवन, सॉरी, फ्रॉड होने का भी उतना चांस, फ्रॉड होने का चांसेस इतना है, राइट। फिर अवेलेबिलिटी ऑन इंटरनेट, अवेलेबिलिटी ऑन द इंटरनेट। नाउ लोगों के पास बहुत टाइम है, नाउ पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन द इंटरनेट। अभी मैं बात कर रहा था इनसे, तो उन्होंने बोला कि सर every 8 hours are now a screen time of every person nowadays in India. 8 hours is a very huge time, right? और क्या सजेस्ट करता है ये डेटा? All ecosystem is going to digital. Yeah, okay. All ecosystem are going to digital. People are spending more or less time on the different digital platform, right? Yes. More and more data for creating deepfake videos and AI models. Absolutely, yes. नेटवर्क यूसेज कि भाई ये जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमारे नेटवर्क यूसेज कितना ज्यादा हो गया, राइट। तो मैं अगर एक बात में इसको मैं समझाना चाहूँ तो मैं क्या बताऊंगा, पता है? इट इज weird, maybe you are concerned with that. This is my line. Once you are predictable, you are vulnerable. Now you are more predictable due to your technology use. मुझे ये पता है कि भाई ये आदमी बंदा है, XYZ बंदा है, ये क्या, ये समय पे क्या देखने वाला है, ये क्या करने वाला है। Whatever you are doing is creating your digital footprint on the internet. Yes or no? तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि सर मैंने तो ये अकाउंट क्रिएट किया, मैंने फेक अकाउंट बनाया, मैंने डिलीट कर दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? किसी ने बोला कि सर मैं इनकॉग्निटो मोड में सर्च करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी हिस्ट्री तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही है, मैंने क्या सर्च किया, तो ये पॉसिबल है? Yes or no? So basically internet का एक नियम है that you need to be remember every time. Internet never delete, internet never forget. What is it? Internet never delete, internet never forget. Once is online is always online. यानी आज की तारीख में अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी पोस्ट कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पे आपका रहता है। और आप ये सोच के खुश होते हैं कि यार तो मैंने तो सब निकाल दिया, तो नो। And why I am sharing this thing? Because nowadays youth are more victimized, and again that the who are basically commit the crime, youth are committed more and more crime, and that's why you need to be understand the seriousness of this technology. Now जैसे 2G, 3G, 5G का जैसे सब लोगों ने इतना डिस्कशन किया, तो मैं अभी क्राइम का डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जो एरा में 2G, 3G, 4G, 5G, वैसे क्राइम भी बढ़ते गए। ये ऑफिशियल डेटा है, राइट? मे बी जो FIR रजिस्टर होती है उसका इंडिया का डेटा है, लेकिन द क्राइम्स आर 100 टाइम मोर ऑफ दिस डेटा, राइट, जो रजिस्टर नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इज द बिगेस्ट कंसर्न। सो टेक्नोलॉजी का यूज करना ये कोई गलत बात नहीं है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में यूज करें, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल करें, इट इज मोर डिजायरेबल। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में यार सर पहले सर्च क्या करते हैं? हाउ टू हैक द फेसबुक अकाउंट, हाउ टू हैक द इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट? और कई लोग ये सारे लिंक पे जाने के बाद वो लिंक को डाउनलोड करते हैं और फिर बाद में दूसरा अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले क्या होता है? उसका अकाउंट ही हैक हो जाता है, राइट? एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं अगर किसी के लिए कुआं खोदूंगा तो पहले कौन गिरेगा? मैं ही गिरूंगा। तो दैट्स व्हाई द क्राइम इज आल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल, अगर आप नीति आयोग का अगर आप उनका जो ड्राफ्ट देखेंगे 2018 का जो उनका AI बेस्ड ड्राफ्ट है, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस, फॉर द इनोवेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ही पुट इन दिस, राइट? तो अगर आपने देखा होगा कि SaaS बेस्ड कई सर्विसेज आती है, पीछे क्यों जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है? डाउन नहीं हो रहा। सो जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, नाउ द साइबर क्राइम एज अ सर्विस आ गया है, राइट? मालवेयर एज अ सर्विस आ गया है, ट्रोजन एज अ सर्विस आ गया है, वायरस एज अ सर्विस आ गया, राइट? So again if you want to hack any account, you can officially pay your Bitcoin or maybe officially pay your USD. You can do, or you can hack any account. You can plan a keylogger. You can put the DDoS attack. You can hack any email. You can hack any social media account. You can hire any person, any you can hire any bouncer जो बोलते हैं ना, जो killer बोलते हैं, जो वैसे को भी hire कर सकते हैं। So again that all things are basically available on the internet with the help. वैसे मेनू आता है ना, होटल में कैसे जाते हैं? मेनू आता है, क्या आइटम कितने रुपए की,
वैसा ये मेनू ऑफिशियली डार्क वेब पे अवेलेबल है। डार्क वेब सबको पता है, यस और नो? तो डार्क वेब पे मेनू ऑफिशियली अवेलेबल है एंड पीपल आर यूजिंग ऑल दिस थिंग। Now these are the some of the cases that what exactly we covered. Now this is an ongoing case, digital arrest, right? अगर आप देखोगे तो ultimately there are the case of, if your first case is farmer 1.4 crore rupees loss. Now ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट केस क्या होता है पता है किसी को? डिजिटली अरेस्ट किसी को करना क्या होता है पता है? एनीवन नो दैट? मोडस ऑपरेंडी? नहीं, आपको तो पता है थोड़ा। और कोई दूसरा पीछे लास्ट में जो आजू बाजू वाले को समझा रहे वो। So digital arrest is a case where people are basically what they are doing, they are basically impersonate the person. किसकी आइडेंटिटी लेके आते हैं? कोई कुरियर सर्विस की बात करते हैं, कुरियर सर्विस के नाम पे बात करते हैं आपसे। ये बोलते हैं आपको कि सर एक काम करिए, आपका एक पार्सल है यहाँ से यहाँ जा रहा था और ये पार्सल के अंदर हमको आपके ये पार्सल में आपके नाम से पार्सल है और ये आपका आधार कार्ड है, आपकी आइडेंटिटी ये है और ये पार्सल में 10 फेक सिम कार्ड मिले हैं 10 नामों के, इसके अंदर 4 पासपोर्ट मिले हैं, कुछ कपड़े मिले, 2 लैपटॉप मिले और एवरीथिंग इज अवेलेबल और उसमें कुछ 10 का भी कुछ मिला है, ऐसा करके आपको बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसा मेरा तो कुछ है नहीं। अच्छा आपका ऐसा नहीं है, एक काम करिए सर, ये नंबर है, आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, आप ये पुलिस वाले हैं, यहाँ पे आप इसका कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए। तो ये आपको एक जैसे टेलीकम्युनिकेशन में आता है सीधा डायरेक्टली वहां से लिंक, उनका इंटरकॉम का एक लिंक बनता है 1 और 9 डायल, कुछ भी डायल करने के लिए बोलते हैं, then you can dial that number और आपको वहां से बोलते हैं कि सर मैं यहाँ ये फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और आप यहाँ पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा लिए। Now what they are doing, they are getting your more and more trust। हमको हमारे पास एक ट्रस्ट शब्द बहुत बढ़िया होता है, ट्रस्ट का हम विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, राइट? वी इंडियंस आर बिलीव। हमको किसी ने बोला नहीं आप पुलिस वाला, हाँ पुलिस वाला ठीक है मान लिया आपने, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है वो आपको धीरे धीरे करके अपनी बातों में लेके देन वी आर आस्किंग यू द मनी। और ऐसे 50, 100, 1000, 2000 रुपए की बात नहीं है। दिस पर्टिकुलर लेडी वाज चीटेड विद द 1.4 करोड़ रुपीस, राइट? दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अच्छा ये तो फार्मर थी, लेकिन दूसरी जो थी बाद में जिसके अंदर जो था वो एक डॉक्टर थे, ही लॉस्ट 25 लाख रुपीस, राइट? और उनको जिले अरेस्ट किया था बैंगलोर में व्हेन ही ट्रैवलिंग इन द बैंगलोर, राइट? सो आगे क्यों जा रहे हैं? बैक में नहीं, आगे जा रहे हैं। अच्छा बैक में डायरेक्ट ले लेना भाई, क्या थी बैक में ले ले बैक। हाँ ये नहीं चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। मैन्युअली कर दो, मैन्युअली बैक में, मैन्युअली बैक 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 बैक, यस यस बस। Then again, प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज चीटेड विद 12 लाख रुपीस इन स्टॉक मार्केट स्कैम। अगर मैं ये कई बार कहता हूँ, ठीक है सर रहने दीजिए कोई बात नहीं, बंद हो गया ना, ओके। सो पीपल नाउ नीड टू अर्न वेरी क्विक मनी। तो लोगों के पास ऐसा है कि मुझे कल ही कल करोड़पति बन जाना है, तो बहुत सारे ऐसे एनएससी के डीपफेक वीडियो चलते हैं, कई सारे आपके सोशल मीडिया पे आपको ऐड आते हैं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड दे आर प्रोवाइडिंग यू दैट काइंड ऑफ आपको क्या करते हैं, आपको टिप्स देते हैं। तो उसका एक अकाउंट आपका खुलवाते हैं, वहां पे आपको ज्यादा मनी, यानी कि अगर रेगुलरली 8-9% मिल रहा है तो आपको 12-15% आप इसीलिए अर्न कर सकते हैं, ऐसा आपको बताते हैं। फॉरेन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज के अंदर रोकने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बताते हैं। So every time they are basically putting different kind of scheme to provide you and earn money. So ऐसे प्रोफेसर सर थे, ये हमारे पास मैटर आया था, he already lost 12। अच्छा ये प्रोफेसर थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज के, ठीक है? So he's an engineer person, right? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है, he's an engineer person, right? Second is a doctor, 7 लाख। अच्छा डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गया, तो they are lost money in the different kind of scams, right? तो ये जो है डॉक्टर चीटेड विद 7 लाख रुपीस सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट स्कैम में, राइट? देन द रिटायर्ड बैंकर। अच्छा ये बैंकर थे, ये जब हमारे पास आए ये जेंटलमैन, तो उन्होंने ऑलरेडी 20 लाख का इनका एक हमने कंप्लेंट फाइल किया था, और पैरेलली उनका 25 लाख का दूसरा उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी एक कंपनी, यानी दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट के बात कर रहे थे। he didn't inform us कि सर मैंने दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है। Actually we got at least 10 lakh rupees from the 45 lakh rupees, लेकिन 35 लाख उनके लॉस हुए। कैसे लॉस हुए
क्योंकि उन्होंने अलग अलग जो टिप्स थे उसमें उसने पैसा डाला। एक सर्वर बनाते हैं आपका, जैसे आपको पता है क्या करते हैं कि आपको यूजर आईडी दिया जाता है, आपको एक सर्वर वर्चुअल सर्वर आपका बन जाता है, वहां पे यूजर आईडी में पासवर्ड डालते हैं, आपको वहां पे स्टॉक मार्केट का आपका पूरा एक फेक यानी सर्वर जो वहां पे आपको दिखता है, अच्छा आपके रुपए इतने हुए, आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपके अभी कितने हुए 50 लाख हो गए, आपको दिखा दे नेवर गोइंग टू बी रिटर्न यू एनी सिंगल पाई। ठीक है, तो एक भी रुपया अगर आप जब मांगोगे तो आपको एक भी रुपया कोई देगा नहीं, और तब जाके धीरे धीरे अगर आपको रिटर्न लेना है तो क्या बोलेंगे, सर अगर आपको प्रॉफिट के साथ चाहिए तो यू नीड टू पे अ टैक्स फॉर दैट। तो कितना टैक्स चाहिए अभी पे करना है, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। Then again that people are basically invested more and more money, so that's why they are badly cheated. Businessman, then political person और जज, ये सारे बड़े बड़े नाम है, जज है, ये भी सारे हमारे पास बैठे थे। पॉलिटिकल पर्सन, बिजनेस, इनके पास क्या होता, इनके पास एक मैसेज आया, उन्होंने कुछ फेसबुक के अंदर अपना एक किसी कोई अननोन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था फ्रेंड की, फिर बाद में अचानक उनको एक कॉल आता है, किसको, मैसेंजर के ऊपर एक कॉल आता है, मैसेंजर पे कॉल के थ्रू उन्होंने बात किया, उनको बोला कि सर एक काम करो अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो उसने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, और वहां पे उनको रात को एक कॉल आता है, जब वो सोए होते हैं, जनरली हम सोए होते हैं तो रात को ऐसे उन्होंने कॉल ले लिया, राइट। तो अगर बॉय होता है तो गर्ल, या गर्ल होता है तो बॉय, ऐसे अपोजिट जेंडर में, तो इसका न्यूड वीडियो चल रहा था उसके ऊपर, राइट, एंड दे रिकॉर्ड द एंटायर स्क्रीन, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद वो बता रहे कि सर एक काम करिए, आपका पूरा जो है आपका रिकॉर्ड हमारे पास वीडियो का है, अगर आपको ये अगर नहीं पैसे देते इतने तो हम लोग सारे आपके कांटेक्ट को ये भेज देंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपन। आज की तारीख में 2 दिन पहले एक सीनियर सिटीजन सूरत के थे, सीनियर सिटीजन से ज्यादा इसमें विक्टिम होते हैं, और दे आर रेप्यूटेड पर्सन, जो रेप्यूटेड पर्सन वो ज्यादा इसमें विक्टिम होते हैं। तो उनका एक आया और इतना घबरा गए, क्योंकि उनको लगा यार सर मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, ऐसा किसी ने वीडियो बना लिया तो ही इज नॉट सपोज टू टेल और शेयर विथ हिज सन। उनके सन के साथ भी वो बात करने से इकरा थे, उसके सन को उन्होंने बात नहीं की, ही इमीडिएटली कॉल टू अस, फिर बाद में हमने देखा उनका, अभी जाके उनको सारी हमने ब्लॉक की। लेकिन दिस थिंग आर हैपन, इसको बोलते हैं आज के नए जमाने का एक्सट्रोजन, इसको बोलते हैं सेक्सट्रोजन। तो दिस काइंड ऑफ क्लिप्स आर गोइंग ऑन। देन अगेन द डॉक्टर चीटेड विद द टास्क फ्रॉड। ये एमएस के अंदर, ये मेडिकल सर्विस में एमएस पढ़ रहे थे, डॉक्टर हो गए थे लेकिन एमएस की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको लगा कि मैं टास्क के अंदर किसी ने बोला कि भाई आप टास्क एक कहीं लाइक करेंगे, एक आध चीज लाइक करेंगे कोई भी, या फिर आप कोई रिव्यू आप फाइल करेंगे गूगल का, या फिर अगर आप कोई वीडियो लाइक करेंगे तो आपको हर एक लाइक का हम लोग इतना पैसा आपको देंगे। और उसको स्टार्टिंग में दिया भी, पहले 1000 रुपया दिया, फिर 2000 दिया, फिर उनके अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं, ABC प्लान, और उनका एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के ऊपर। बेसिकली दे आर यूजिंग टेलीग्राम, मे बी यू अवेयर अबाउट इट, राइट। तो टेलीग्राम पे इनका एक ग्रुप बनता है, और वो बताते हैं कि सर इसमें आपका टेलीग्राम का ये मेंटोर है, और मेंटोर के थ्रू आपको क्या करवाते हैं, धीरे धीरे करके लाइक के चक्कर में घुसाते हैं। फिर इनका प्लान जो भी होता है वो क्या होता है, तो आपको पहले 10,000 भरने, उसके बाद आपको मिलेंगे 40,000, 1 लाख भरोगे तो 4 लाख मिलेंगे। तो पीपल आर बेसिकली परचेज दिस प्लान, पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसे ऐसे करके इनके पास 11 लाख निकलवा लिए, राइट। So again that cryptocurrency fraud, ED का मैटर अभी हमारा चल रहा है अभी। So again that people are using the different, अभी म्यूल अकाउंट बहुत चल रहे हैं। म्यूल अकाउंट पता है किसको क्या होता है, और यू नो अबाउट म्यूल अकाउंट, जो अकाउंट किसी की फेक आइडेंटिटी क्रिएट होते हैं जनरली। अभी कल की बात, 2 दिन पहले की बात, मतलब जैसे फेक अकाउंट होते हैं, फेक नंबर्स होते हैं, या दूसरे नंबर को रख लेते हैं। अभी कल 2 दिन पहले एक झारखंड में या कहीं से, एग्जैक्टली आई फॉरगेट दिस प्लेस, एसबीआई का एक फेक ब्रांच पूरा निकला। एसबीआई का ब्रांच पूरा फेक है ना, फेक बैंक, टोटली ब्रांच को अभी पकड़ा गया, राइट। वहां पे बैंक ही नहीं, एक्चुअली फेक ब्रांच बना दिया एसबीआई का। सो नाउ सी दैट इज हाउ द पीपल आर डूइंग। अभी पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि आदमी को फेक कर रहे थे, लेकिन अभी ब्रांच को भी फेक कर रहे थे, राइट। और खास करके ट्राई के नाम पे बहुत सारे कॉल आते थे, ये डिजिटल अरेस्ट के अंदर तो मैक्सिमम कॉल ट्राई के नाम पे आते हैं। So these are the ED matter going on, cryptocurrency transfer था, hotel booking cases of the lawyer। अच्छा, वो लॉयर भी हमारे क्लाइंट है। तो लॉयर ने क्या किया कि अभी बीच में जब छुट्टी आई थी 3-4 दिन की, तो दे आर सर्चिंग ऑन द वेबसाइट कि भाई कहीं पे कोई मिल जाए। तो एक होटल का उनको मिला कि भाई पर्टिकुलर दमन के अंदर ये होटल है, और इसका जो है इसमें आपको ये पैकेज मिल रहा है। तो उसने उसको कोऑर्डिनेट किया, फिर उसको बेस्ट डील उसने दी। उसने कहा चलो सर आप ये मेल से पैसे भेज दीजिए अकाउंट में। उसने भेज दिए, फिर जाके उसने देखा तो अभी वो अकाउंट एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो ये जो बेसिकली वो जो वेबसाइट थी वही फेक वेबसाइट थी, जो होटल की वेबसाइट थी वो। तो इट इज कॉल्ड द फिशिंग साइट, राइट। एक फेक वेबसाइट बना के उसको चीट किया गया था।
तो अगेन दैट ये भी मैटर अभी चल रहा है, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ का ही मैटर था ये। ऑनलाइन शॉपिंग के बैंक के एमडी थे, राइट। तो जैसे आप देखते हो कि कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हो गूगल पे या कहीं पे भी, तो आपको वैसी एड बाजू में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आनी चालू हो जाती है, फेसबुक हो या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, यस और नो। तो कैसे होता है वो? थ्रू दी एआई, राइट। वो एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको डिटेक्ट कर रहा है व्हाट यू वांट, दे आर गोइंग टू बी शो यू इन द सेकंड पार्ट, राइट। तो वो आपको डिटेक्ट करता है। और उससे क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया, वो सर्च कर रहे थे एक रिक्लाइनर चेयर। तो रिक्लाइनर चेयर का प्राइस क्या होता है जनरली 20-25,000 के आजू बाजू होता है। तो हर बार वो सर्च करते थे तो उनको बाद में एक ऐड चालू हो गया फेसबुक में 2500 में रिक्लाइनर चेयर। तो पहले उसको लगा यार सारा 25,000 का 2500 में मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसको लगा क्योंकि वो भी एमडी थे तो बोला नहीं ऐसा इतना सस्ता तो नहीं मिलता होगा। फिर बाद में उसने उसको इग्नोर किया, बोला नहीं है ये गलत है। फिर दूसरी बार हफ्ते के बाद वापस वो ऐड आया, तीसरी बार ऐड आया, चौथी बार उनको लगा यार सारा ये भी लास्ट अपॉर्चुनिटी ले लेना चाहिए। तो उन्होंने जैसे क्लिक किया तो अमेजोन का एक साइट खुला, यानी कि अमेजोन का एक फेक वेबसाइट खुला। वहां पे उन्होंने 2500 रुपये बोला कि भाई आपको पहले पे करना होगा। सीओडी का वहां ऑप्शन नहीं होता है, सीओडी ऑप्शन होता यू नीड टू बी पे फर्स्ट। तो उन्होंने पहले पे कर दिया, आज की तारीख में रात देख रहे अभी रिक्लाइनर चेयर आया नहीं, राइट। तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद दैट बैंक एमडी, राइट। अच्छा ये जितने भी लोग हैं ना इसमें देख लो सब पढ़े लिखे लोग ही है। आप ऑब्जर्व करो 99% जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने बहुत कम हमारे पास केसेस आते आए हुए जो लोग जो वो इतने इग्नोर यानी इतने वो इंटेलिजेंट नहीं है, इनको इतना पता नहीं है। तो 99% आर द वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, नाउ दे आर विक्टिमाइज्ड। देन अगेन दैट डेटिंग ऐप, ये एक यंगस्टर की थी, आजकल यंगस्टर बहुत डेटिंग ऐप बहुत देखते हैं, टिंडर जैसे। तो टिंडर तो फिर भी ऑफिशियल है, लेकिन टिंडर के जैसे बहुत सारे एपी के आते हैं मार्केट में। तो अगेन दैट व्हाट एवर यू आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, वैसे उसके बेस पे आपको कई सारे अलग अलग जगह से लिंक आने चालू होते हैं। तो अगेन दैट यू क्लिक ऑन लिंक, तो वहां पे एक आपका पर्सनल उनके सर्वर से ये पूरा डेटिंग का काम चालू होता है। तो अगेन दैट पर्सन इज जेंटलमैन, ये बच्चा था अभी खाली 18-19 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। तो अगेन दैट ही बेसिकली चीटेड विद 2 लाख। उसने कहीं से पैसे निकाल के घर से 2 लाख रुपए दे दिए और आज की तारीख में कैसे दिए, बिकॉज यार बेसिकली कवरिंग हिज पिक्चर, उसका वीडियो एक बना लिया था, तो उसके कारण उसका ये फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन गेमिंग, कमीशन, म्यूल अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो अगेन दैट ऑनलाइन गेमिंग आज की तारीख में, अच्छा गवर्नमेंट नवंबर में गेमिंग का एक बहुत बड़ा प्रमोट कर रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को, इंडियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई हम लोग इतने सारे पैसे बाहर लगा रहे हैं, अपने बच्चे बाहर लगा रहे हैं, लोग खेलने वाले बाहर कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इंडिया के अंदर उसको खेलो और ऑफिशियली काम किया जाए, ठीक है। अनऑफिशियली मत करो कुछ भी करना है तो। लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नाम पे दे आर बेसिकली प्लेइंग, वो आपको दिखाते हैं, लेकिन दे आर यूजिंग दोस अकाउंट्स फॉर द मनी ट्रांसफर, फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर मेजर कंसर्न। तो ये सारे यूज केसेस जो है ये अब तक हमारे आ चुके हैं, ये तो हर रोज बढ़ते हैं, नए नए मॉडल्स ऑपरेंडी हर रोज बढ़ती है। ये एक बिजनेसमैन का था केस डेफॉर्मेशन का लास्ट में, ये ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन था, लेकिन उसका केस हमने किया था यहाँ इंडिया के अंदर, बिकॉज द पर्सन, उनके साथ जो लड़की थी जो काम कर रही थी, उसने यहाँ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आकर उनके खिलाफ कुछ गलत लिखा है एक वेबसाइट के ऊपर और उसको डिफेम करने की कोशिश की गई, राइट। लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि उसको वहां पे वीजा नहीं मिला तो लड़की यहाँ पे आके उसको डिफेम करने की कोशिश की। तो अगेन दैट पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू फॉर द सेक ऑफ द मिस एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फॉर एनीवन। तो डिफॉर्मेशन के लिए भी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ गया है। नाउ साइबर क्राइम एक्सपेक्टेड 2018 दिस इज 13.82 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी कितने की है भाई, कितने की ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कितने की बात कर रहे हैं, ये 28 तक का क्राइम का रेशियो कितना है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। 13.82 ट्रिलियन, that is the biggest ratio, that is the biggest concern nowadays of the entire world, and that is a true. Now again the cyber index which India is the 10th country in that particular area. हम लोग 10वें नंबर पे है, हमारे आगे और 9 कंट्री है। I'm not going into depth in that. Now who are the which are the epicenter of that? तो इतने सारे स्टेट में अलग अलग जो है, ये जो अभी रिसेंटली IIT का एक स्टार्टअप है फ्यूचर क्राइम रिकॉर्ड करके, उनका रिसेंटली इन्होंने डेटा निकाला हुआ है। तो ये जितने स्टेट है उसमें कौन कौन से सेंटर है जहां से मेजर क्राइम जो है इनिशिएट होते हैं। सूरत का नाम भी गुजरात के अंदर है उसमें से एक, राइट। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व तो सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली सराउंडिंग के अंदर है।
बाकी झारखंड है, उसके बाद में तमिलनाडु, तेलंगाना, अब तक इतने जगह पे दीज आर द मेजर एरियाज। नाउ अच्छा, ये एरिया के अलावा ये चार्ट क्या बता रहा है कि कौन कौन से जगह है, कौन कौन से गांव। पहले जामताड़ा का नाम सबने सुना है, वो जामताड़ा सीरीज देखा होगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट भरतपुर ऑफ द राजस्थान, ये सबसे ज्यादा ये एपिसेंटर है क्राइम का। मथुरा, नौ और अगर बाकी है, लेकिन दिस आर द मेजर सिटीज जो इनिशिएट द क्राइम। नाउ हूज आर अफेक्टेड विद दिस क्राइम। तो इंडिविजुअल की बात करें, कौन कौन से क्राइम इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है? ईमेल स्पूफिंग, फॉर्जरी, फिशिंग, क्रेडिट कार्ड, डेटा थेफ्ट, डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, ये जो क्राइम है इंडिविजुअल के है। देन द सोसाइटी, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रेडमार्क वायलेशन, ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ये सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं। और ये है नेशन के डिफेसिंग वेबसाइट, साइबर टेररिज्म, हैकिंग, बैंकिंग टर्मिनल। अच्छा, बैंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं बैंकिंग के ऊपर होते हैं, सिस्टम के ऊपर होते हैं, नेटवर्क अटैक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, राइट। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली जो मेन पॉइंट पे जाऊंगा। 10 पॉपुलर इंटरनेट स्कैम्स। कौन कौन से स्कैम चलते हैं? अच्छा, ये जो स्कैम होते हैं उसकी बेसिकली ये स्कैम क्यों होते हैं पहले तो ये समझना चाहिए, राइट। क्यों ये स्कैम होते हैं? बेसिकली the attackers or maybe the fraudsters are playing with the psychology of the people। हमारी साइकोलॉजी क्या है? क्या साइकोलॉजी होती है? लालच। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या है? मुझे कुछ फ्री में मिल जाएगा, फ्री में कुछ भी मिल जाएगा मैं ले लूंगा, राइट। तो देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। और इंटरनेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखना। यू आर नेवर गेटिंग एनीथिंग फ्री ऑन द इंटरनेट, राइट। तो अगर जहां जहां आपने ये देखा कि फ्री वर्ड देखा, वहां थोड़ा अलर्ट हो जाना, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी। सेकेंडरी, अच्छा, एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड की है वो सारी फ्री होती है, यस और नो? मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री है, राइट, फ्री है ना। तो व्हेन यू आर डाउनलोडिंग द फ्री एप्लीकेशन, अगेन दैट यू आर पुटिंग योर प्रिवेसी ऑन द एज। ना ये एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन लेती है आपके पास? Then storage, right, contact, then your camera, microphone, right. So everything is covered, right. So there is nothing like free. Now you are under observation, right, 24/7, ठीक है। So again that these scams are based on what kind of thing you are doing with your digital device, right. ये सारे स्कैम कैसे होते हैं भाई? मैं शॉपिंग का देखने गया तो शॉपिंग में आपको नए नए ऑफर आने चालू हो गए। तो बेसिकली इज अ ग्रीड ऑफ द पीपल। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है हमारी? ग्रीडी नेचर, अरे यार मिल जाए मुझे। सेकेंडरी होता है नीड। अच्छा, कोई जरूरत है तो हमने सर्च करने की कोशिश की, तो नीड इज दैट। देन द डिस्काउंट कूपन, अगेन इज अ ग्रीड, मुझे फ्री में कुछ मिल जाए। पेटीएम के ऊपर तो बहुत सारे क्राइम हो गए। रिसेंटली आपने देखा पेटीएम जो केवाईसी का चल रहा था बीच में, नंबर ऑफ पीपल आर विक्टिमाइज्ड। और आज की तारीख में पेटीएम में होते हैं, पेटीएम से सबसे ज्यादा डेटा लीक होता है। आई डोंट नो कि वेदर यू आर अंडरस्टैंड और नॉट, लेकिन पेटीएम सबसे ज्यादा डेटा जो है आपका वहां से लीक होता है। देन दी OLX बाय और सेल, बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं OLX में। आपको पता होगा वो आर्मी मैन के नाम पे आते थे ऑफर। पहले मैं आर्मी मैन हूँ, यहाँ से ये मुझे बेचना है, ठीक है। तो आप बोलोगे अच्छा आर्मी वाला है, तो ये दिस इज अगेन हमें एक अहोभाव होता है, यार आर्मी है, चलो आर्मी के साथ तो अच्छा ही होगा ना, आर्मी वाला तो अच्छा ही होगा। लेकिन व्हाट दे आर पुटिंग अ स्कैम ऑन द OLX। तो वहां पे अच्छा ये आर्मी मैन नहीं, यहाँ पे तो आप अरविंद केजरीवाल की डॉटर भी विक्टिमाइज हुई थी इसके अंदर। अरविंद केजरीवाल तो पता है दिल्ली के CM रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक सोफा बेचने के लिए रखा था, राइट, ऑन दी OLX। तो बंदे ने बोला ठीक है मैं सोफा आई एम गोइंग टू परचेज ऑफ 35,000। उन्होंने बोला सर मैडम मैं आपको पहले 10 रुपए भेजता हूँ, आप अपने खाते में आके देख लिया। उन्होंने बोला हाँ 10 रुपीज आ गए। अच्छा मैं आपको एक QR कोड भेजता हूँ, आप उसको स्कैन कर ले, बाकी के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। उन्होंने QR कोड जैसे स्कैन किया, पैसे चले गए। QR कोड स्कैन करने से पैसे आते नहीं, पैसे चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ बेसिक थिंग। लेकिन कई बार हमें ये समझ में नहीं आता, हम लोग वही मेंटालिटी के साथ रखते हैं, यार मुझे तो मेरा पैसा मिल रहा है ना, जस्ट गो फॉर इट, राइट। सो अगेन दैट डेटिंग स्कैम मैंने अभी बताया। ATM पिन एक्सपायरी, तो कई बार ये मैसेज आते हैं ATM पिन एक्सपायरी के, ठीक है। फेक जॉब, यूथ को खास करके बहुत सारे जॉब के फेक ऑफर आते हैं विद वेरी गुड कंपनी। डोंट गो विद, जस्ट गो विद द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ द कंट्री ऑफ द कंपनी, जस्ट गो वहां पर रिक्रूटमेंट है या नहीं है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी विक्टिमाइज। कई लोगों ने ऐसे फॉर्म भरने में बहुत सारे यूथ ने पैसे गवाए, वो तो अच्छा तो उनके खाते में पैसे नहीं थे। वी हैव अ नंबर ऑफ केस,
2000 5000 छोटी छोटी अमाउंट, लेकिन चली गई 2000 रुपए, 2000 गए थे बाजू वाले को, मैंने कहा ना, तो ये जाते ही है, राइट। देन फिशिंग इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट अटैक। फिशिंग बहुत सारी तरह से होता है, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। आइडेंटिटी स्टीलिंग, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्कैम, तो अगेन फेक रिक्वेस्ट बहुत सारे आते हैं। तो दीज आर द मेजर स्कैम हैपनिंग। अच्छा, कितनों लोग को ये .apk फाइल का मैसेज आया था ऐसा बैंक का, .apk का? अगर ये मैसेज बहुत कॉमन है, .apk, दिस इज ये एक हेडर को एनालिसिस कर रहे हैं हम मैसेज को। ये क्या आता है कि सर आपका डियर कस्टमर एक्सिस बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे। अगर आपको ये ब्लॉक नहीं करना तो यू कैन डाउनलोड दिस एपीके। एपीके का मतलब क्या होता है? ये जो फाइल है, दिस इज नॉट द सॉफ्टवेयर, इट्स बेसिकली सिचुएटेड ऑन द डिफरेंट सर्वर। जो प्रोड्यूसर का सर्वर है वहां पे ये फाइल है। अगर आप जैसे इसको डाउनलोड करते हैं, योर एंटायर सिस्टम और फोन इज गोइंग टू बी हैक्ड बाय द पर्सन, राइट। सो अगेन दैट, अगर आपको ये मैसेज को वेरीफाई करना है कि भाई ये मैसेज कहां से आया है, राइट, सो यू कैन डू दैट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको ये दो चीजें मैं बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। मैसेज में आता है, जैसे मैसेज ऊपर आया JX, देन SKYCH, दिस इज कॉल्ड द हेडर ऑफ द मैसेज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास ये नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कहां से मैसेज आया आपने वेरीफाई कर लिया तो अगर आप विक्टिमाइज होने से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? तो अगेन दैट, इफ यू सी दिस इज अ नंबर, आपने जो आपको हेडर आया, हेडर को आप 1909 पे आप भेज दीजिए। अगर आप 1909 पे भेजेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा डिटेलिंग कि भाई ये एक्चुअली ओरिजिनेटेड किसको बिलोंग करता है, यानी फेक है, ओरिजिनल है, किसका है, किसने रजिस्टर किया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर इन दैट पर्टिकुलर थिंग। यस, और इसके साथ में देयर आर द टू नंबर्स, SMS header.trai.gov.in, ये ट्राई का भी खुद का एक साइट है, और ये cyberyoddha.org। तो cyberyoddha.org भी एक प्लेटफॉर्म जहां से भी ये प्राइवेट है, बट यू कैन गेट द डिटेल। तो 3 जगह से आप अपने मैसेज को वेरीफाई कर सकते हैं वेदर इज करेक्ट, कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स और नॉट। देन अगेन दीज आर द सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियस ये है, इतने सारे क्राइम के लॉस हो गए चुके हैं बाय द कंप्लेनेंट। लॉस इज अ 450, ये डॉलर्स के अंदर है, यानी 450 करोड़ डॉलर की बात है। इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। BEC का मतलब होता है बिजनेस ईमेल कम्युनिकेशन, राइट। तो जो BEC फेक होते हैं उसके अंदर ये क्राइम होता है ज्यादातर, राइट। सो अगेन दीज आर द नंबर ऑफ क्राइम्स। नाउ कम टू द पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड। नाउ अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई एवरीथिंग इज सिक्योर और हम लोग आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स अ मिथ इन द साइबर वर्ल्ड। नो वन इज गोइंग टू बी प्रोवाइड यू एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास आईफोन है और आईफोन मेरा 100% सिक्योर है, नो। आपने पेगासस का नाम सुना है? सुना? ये सुनो, राइट। तो जो पेगासस जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अटैकर्स आर 6 स्टेप अहेड देन द डिफेंडर। जो अटैकर्स होते हैं वो 6 स्टेप अहेड होते हैं, यानी कि अगर आज जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको उन्होंने कब का उन्होंने एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मच मोर अहेड। सो अगेन दैट द स्मॉल स्टेप टुवर्ड द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस will be make a difference। तो आपको छोटे-छोटे स्टेप्स समझने पड़ेंगे, क्या-क्या कर सकते हैं, राइट। सो अगेन दैट these are the some of the best practices। क्रिएट द इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। अगर ये दोनों के लिए, बिजनेस अगर है तो बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर आप इंडिविजुअल है तो भी। तो क्रिएट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान फॉर एवरी साइबर थ्रेट। जो भी कुछ होता है उसके लिए आप एक प्लान अपना रिस्पॉन्स, जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक आता है, अगर कुछ होता है तो व्हाट कैन वी डू, राइट। तो वैसे आपको इंसिडेंट रिस्पांस का प्लान भी आपको बनाना है। सेकेंडरी, यू कैन कीप ऑल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन अप टू डेट। जितने भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसको आपको अपडेट कंटिन्यूसली करना है। अगर आपका मोबाइल में आपका एंड्रॉइड का नया वर्जन आया है, आपके विंडोज में अगर विंडोज का नया वर्जन आया है, कुछ पैचेज आए, यू नीड टू बी इमीडिएटली अपडेटेड। अगर आप नहीं करते हैं तो वहां पे आप वल्नरेबल होने के चांसेस है, वहां पे आप विक्टिमाइज हो सकते हैं। अगेन दैट अपडेट आउटडेटेड हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी। तो जितने भी आउटडेटेड है सिस्टम है, विंडोज में एक्सपी का जो अपना था वो बंद कर दिया था, विंडोज एक्सपी का जो सपोर्ट था, राइट। जो जितने भी हमारे यहाँ सर्वर्स थे पहले बैंक के, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द विंडोज एक्सपी। सर्वर बंद कर दिया, देयर आर नंबर ऑफ क्राइम्स आर गोइंग टू बी हैपन एट दैट टाइम। So these are the some of the point। Report all suspicious activity। तो जितनी भी suspicious activity होती है, तो RBI बोल रहा है, कई सारे हमारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, इनका गाइडलाइन है RBI का कि जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, वो बैंक अगर कोई भी suspicious activity वहां होती है, they need to be report all those activity to the
और उनको फिर बाद में रिपोर्ट करने के बाद उनकी टीम को रिपोर्ट करना है, दे आर गोइंग टू रिपोर्ट टू द आरबीआई। देन द प्रैक्टिस सेफ वेब सर्फिंग। तो सेफ वेब सर्फिंग क्या होता है? अगेन दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज मैलिशियस थिंग। अगर आपको कोई गलत वेबसाइट अगर आती है तो अगेन देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज यू कैन नो। HTTPS का आपका प्रोटोकॉल अगर आता है दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज HTTPS, एनीवन? राइट। तो लेकिन HTTPS होता है वो सिक्योर ही होता है 100%, यस और नो? वो भी सिक्योर नहीं होता है, राइट। अगेन दैट इफ यू बिलीव कि HTTPS भी सही है तो नो, यू नीड टू बी कम अप विद द डिफरेंट काइंड ऑफ, ये दूसरे का टूल्स है जो आपको इस्तेमाल करना है। वायरस टूल का नाम सुना है किसी ने? इट्स अ वेरी गुड टूल एक्चुअली। देन अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस ईमेल एंड अटैचमेंट। तो अभी एक रिसेंटली केस आया था हमारे पास, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने जो अपने स्पैम अकाउंट है उसमें से एक मेल ओपन किया और ओपन करने के बाद बोला यस वायरस टोटल। वायरस टोटल इज अ वेरी गुड टूल एक्चुअली, इट्स अ गूगल फंडेड टूल, ओपन सोर्स 36 और 37 एंटीवायरस वो सारे उसमें एक साथ काम करते हैं फाइल को डिटेक्ट करने, ये सब करने के लिए। सो अगेन दैट ईमेल अटैचमेंट होते तो स्पैम में जाके उन्होंने ईमेल खोला और वहां पे बहुत सारे वो फेक सीबीआई के छप्पे मारे हुए, बहुत सारे ऐसे उनके अलग अलग एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है ईडी के, ऐसे उनको लेटर मिले और उन्होंने उनको एक मैसेज आया था कि भाई आपने ये तारीख को ये समय को चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी थी। वो अचानक शॉक हो गए, यार मैंने तो कभी ये खोला नहीं है, मैंने तो कभी ये देखा नहीं है, स्पैम में मैसेज आता। लेकिन ही बिलीव, ये लेवल के ऑफिसर थे वो, फिर भी ही बिलीव यार साला ये कुछ गलत हो गया मुझसे। तो ही कॉल मी एट द नाइट, यार मुझे ऐसा मेल है। मैंने कहा सर आप काम करो मुझे मेल भेज दो। फिर मैंने बोला सर ये पूरा बोगस मेल है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन क्योंकि वो एक लेवल पे बैठे तो उन्होंने यार मैंने आज तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी नहीं है, साला ऐसा मैसेज कैसे आ गया? चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है बाय द वे, आपको सबको पता है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी अगर आप सर्फ भी करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, इट्स अ क्राइम। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है, दिस इज विद द नॉट चाइल्ड पोर्नोग्राफी बट इज कंसीडर्ड एज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, दिस कॉल्ड द CSAM, राइट। So again that if anyone can contain unknown person, मगर सर मुझे बात करना जरा दो ना, 2 मिनट मुझे बात करना, never give that person. Again that is a very very risky. Create strong and unique password. पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको एक स्लाइड में बताऊंगा। So again that major crimes are happen due to the unsecure password. और जनरली पासवर्ड हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और मे बी दैट ABCDEFG 1 2 3 4, ये अपना नाम या अपना बर्थडे या कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाउस नेम और अपने घर का नाम किसी का, या किसी ने अपना मोबाइल का नंबर डाल दिया। मेरे पास एक लेडी आया था, मुझे बोला कि सर मेरा व्हाट्सएप मेरा अकाउंट हैक हो गया फेसबुक का। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो जैसे अबाउट में देखा, मैंने कहा देखा अपना उनका नंबर डाला, मोबाइल नंबर। मैंने कहा आपका पासवर्ड क्या है? सर यही नंबर है मेरा पासवर्ड। So what she provided each and every detail over there first of all, and she told यार मेरा अकाउंट हैक हो गया। It is not possible. But now because you are not aware which kind of password you need to make, which is a secure password practices, so 99% केसेस में हमारी प्रैक्टिस ऐसी मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक से कि जिनको सिक्योर पासवर्ड यूज करना आता नहीं है। क्यों नहीं करते? बिकॉज वी फॉरगेट द पासवर्ड। हमको याद नहीं आता सर, मुझे याद कैसे रहेगा? तो देयर आर द नंबर ऑफ थिंग्स, वो टिप्स है सारे, मेरी कॉपीराइटेड है लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, कभी बताऊंगा बाद में टाइम मिला तो। Implement a 2-factor and multi-factor authentication, right? So this is the most important practices. कोई भी अकाउंट बनाए, create the multi-factor authentication, right? सभी में अब फैसिलिटी सभी अकाउंट में होती है, right? Conduct regular business risk assessment. तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके रिस्क को एसेस कंटिन्यूसली करिए, बिकॉज एवरी डे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे एंड अगेन द न्यू काइंड ऑफ मॉडल्स ऑपरेटिंग, न्यू काइंड ऑफ क्राइम्स आर गोइंग टू बी हैपन। तो आपको हमेशा वो चेंज करना पड़ेगा। अगर एक बार मैंने बना लिया अच्छा हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, आपको सिक्योरिटी ऑडिट भी कंटिन्यूसली करना होगा। इम्प्लीमेंट नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो नेटवर्क, एक नेटवर्क में लैन में मत बनाइए, उसमें नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क को क्रिएट कीजिए। So it means basically creating more secure network. जैसे इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट सबको पता है, right? So again, if you are creating network under the network, it will be more secure compared to the direct network. Then they provide cyber security training and education. You need to be continuously educate yourself. अगर मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे सब कुछ पता है, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपको सबको पता है मार्क जुकरबर्ग का अकाउंट कितनी बार हैक हो चुका है? कितनी बार हैक हो चुका है मार्क जुकरबर्ग का? 4 बार उसका अकाउंट हैक हो चुका है मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। उसके पास पूरा साइबर सिक्योरिटी का टीम है, उसके पास लॉ का टीम है, सब कुछ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी उसका अकाउंट 4 बार हैक हो चुका है, राइट। सो अगेन दैट इफ यू से यार मैं एब्सोल्युटली आई एम सिक्योर, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है,
दिस इज अ कंप्लीटली मिथ इन द साइबर वर्ल्ड. एनीवन कैन बी विक्टिम. कोई भी बंदा विक्टिम बन सकता है. ये मेरा शब्द याद रखना, एनीवन कैन बी विक्टिम, राइट. Maintain regular data backups. So again, you need to be continuously back up your data. You need to be continuously take your data. Use role-based access control or privilege access management. So again, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको क्या क्या कोई किसका पोस्ट है उसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए. That you need to be come up with the network position, right? Implement data encryption process. तो मुझे किसी ने बताया डेटा इंक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. तो अगेन दैट यू कैन मेक अ डेटा इंक्रिप्शन. डेटा इंक्रिप्शन किसको पता है क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन प्लीज रेज योर हैंड. इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? यस, ये बताइए. आपके जो मैसेजेस है वो आप और सामने वाले तक किसी में एग्जैक्टली. यानी एक व्हाट्सएप में भी आता है कि हम लोग डेटा को आपका इंक्रिप्ट करके भेजते हैं, ठीक है. तो आपका मैसेज बच्चे बीच में से कोई इसको ले नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता. तो वैसे भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है प्रोटोन करके. तो दे आर आल्सो प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस इंक्रिप्टेड डेटा, राइट. प्रोटोन क्या करता है? जीमेल नहीं प्रोवाइड करता लेकिन प्रोटोन कर रहा है. So again that you can encrypt with the software. अगर नॉर्मल मेल में भी मैं encrypt डेटा कर सकता हूँ, so again that it will more secure to communication. So again use the VPN. So again if you are exploring the number of things, यूथ को मैं खास बताता हूँ, जो लोग खास करके डार्क वेब सर्च करते हैं, if you are using a dark web, you are surfing a dark web, you can just use the VPN. और उसमें से कंजूसाई मत करिएगा, पेड VPN यूज करिएगा. पेड VPN बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, so it will be make you more secure on the dark web if you are using that. Then perform regular security test. तो पेन टेस्टिंग सबको पता है, yes or no? पेन टेस्टिंग का नाम सुना है, yes or no? तो पेन टेस्टिंग यानी नेटवर्क का होता है, एप्लीकेशन का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है. तो सबका पेन टेस्टिंग यानी क्या? इसका सिक्योरिटी चेकअप होता है. So again that you need to be continuously do that practices. Perform vendor due diligence. यानी वेंडर का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं किसी की सर्विस ले रहा हूँ, एक जोहो करके एक सॉफ्टवेयर है, जोहो, पता है नाम किसी को? जोहो. तो जोहो प्रोवाइडिंग दी एक्सटर्नल आपको पूरा अकाउंट ही उसको पूरा अपना CRM प्रोवाइड करता है. तो जैसे आप जिसका भी वेंडर का आप ले रहे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उनका भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से उसका डेटा ब्रीच हुआ तो आपका डेटा वहां पे चला जाएगा, राइट. इंस्टॉल बेसिक नेटवर्क एंड डिवाइस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. अगेन दैट हायर अ CISO. CISO का मतलब क्या है? सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. So you need to be put a person who is basically know about the technology, who basically understand the technology. उसका एक सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी और आपका इन्वेस्टिगेटर चाहिए आपको, right? So utilize the third party risk management and utilize the attack surface management. These are the some of the basic things you need to be do. अच्छा, आपको अगर कोई अननोन लिंक आती है, अच्छा वो लिंक आपकी प्रॉपर है कि नहीं, वो आपको अगर सर्च करना है तो वो लिंक को एक्सपांड करना है कि ये लिंक, जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है. तो अननोन लिंक को अगर जानना है उसको एक्सपांड करना, दिस इज अ वेरी गुड टूल कॉल्ड द urs.org. अब ये इसके ऊपर अपना लिंक डाल दीजिए, इसको एक्सपांड कर दीजिए, उसका ओरिजिनल जो URL है वो ऊपर आ जाएगा, राइट. So again that you can put yourself, आप इससे बच सकते हैं, राइट. Then again अगर आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, मोस्टली आपका जितने भी अकाउंट है एसोसिएटेड विद योर ईमेल अकाउंट, अगर ईमेल अकाउंट है आपका जो कॉम्प्रोमाइज होता है तो क्या होता है? आपके सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज. अगर बैंक के साथ लिंक है, आपके सोशल मीडिया के साथ लिंक है, एवरीवन इज लिंक्ड, राइट. तो ये क्या कर रहा है? अगर आपने अपना ईमेल डाला तो आपका ईमेल सिक्योर है कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी शो यू. ग्रीन और रेड आता है, रेड में आ गया तो आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ग्रीन में है तो योर ईमेल इज सिक्योर, अगर रेड में आया तो इमीडिएटली यू कैन change the password of your email. So it is a good practice to change the password immediately. Now this is a password generator tool. अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि it is a way to generate a secure password. लेकिन फिर भी एक साइड है, ये भी आपका पासवर्ड ले सकती है, राइट. यानी यहाँ पे आपने बनाया तो आपका पासवर्ड भी तो उसके पास चला गया. तो what can you do that? You can just generate the password with the alphanumerical, special character, upper lower case. एंड वहां पे अपने एक या दो चीज को अपने नाम के साथ या अपने जो इनिशिएट के साथ आप चेंज करके अपना सिक्योर पासवर्ड बनाते हैं. जस्ट ट्रीट योर पासवर्ड एज योर टूथब्रश. याद कैसे रखें? वो तो कॉपीराइटेड है, मैं बताता हूँ बाद में. तो ये जो है ये चीज ऐसे ही है कि अगर आपको ये आप करेंगे तो जनरली एवरी 3 months यू नीड टू बी चेंज योर पासवर्ड, राइट. अच्छा, मैं जैसे सर ने बताया कि कैसे याद रखे, तो मेरा एक स्टाइल है, अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना कर सकते हैं. यू कैन डू वन थिंग कि भाई आपको पासवर्ड अगर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई अपने यहाँ पे इंडिया इज बेसिकली कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, हमारे साल में बहुत सारे त्यौहार आते हैं. तो अगर ये हर एक त्यौहार के ऊपर एक अपना उसकी डेट है, जो त्यौहार क्योंकि अलग अलग डेट के ऊपर आते हैं, तो उनकी जो डेट है, उनके जो नाम है
उनके साथ में आपका जो ईयर है उनको एक कंबाइन अपर लोअर केस में करके आप उसको याद कर सकते हैं, राइट। तो एक आपका एवरी ईयर के अंदर वो 12 महीने में आपके 12 तेवर तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 12 महीने में अगर आपको 3 या 4 बार आपको चेंज करना है तो इट विल बी इजियर, आपको वहां पे मार्क कर देना आपके कैलेंडर में कि दिस इज व्हाट योर पासवर्ड फॉर दिस ईयर, राइट। तो वहां पे जाके आप उसको ये रिकनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा मेरा पासवर्ड ये है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, दिस इज सम ऑफ द थिंग। अच्छा इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन पुट योर पासवर्ड। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पासवर्ड ज्यादा सिक्योर है पास फ्रेज। पास फ्रेज का मतलब है यू कैन यूज दैट वन लाइन, आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो आई मैंने 1 बना दिया, एल को मैंने कैपिटल कर दिया, ओ को मैंने 0 कर दिया, वी को मैंने कॉमा ये कर दिया, ए को मैंने @ कर दिया। तो अल्फा न्यूमेरिकल अपर लोअर एक पूरा लाइन आ गया और 18 कैरेक्टर के ऊपर आ गया। तो आई लव टू प्ले क्रिकेट इज योर पासवर्ड, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन है वो किसी को पता नहीं, आपके सिवा। So it is also one of the ways that you can put your password stronger. अच्छा ये WhatsApp, ये अब तक कॉलों की बात हो रही थी, लेकिन अभी WhatsApp का ये नया अपडेट है, किसी को पता है साइलेंस ऑफ द स्पैम WhatsApp के ऊपर कॉल आता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? अननोन कॉल आता है WhatsApp के ऊपर, तो क्या करेंगे आप? So again this is a new feature, silence spam WhatsApp calls. So this is again you can practice, क्योंकि अब ज्यादातर कॉल आपको WhatsApp के ऊपर आ रहे हैं, right? So this is a setting you can do, open WhatsApp your Android phone, again that 3 dots ऊपर है उसको क्लिक कर लीजिए आप, वहां पे जाके सेटिंग्स में चले जाइए, then you can go to the privacy, you can put the privacy over here, again then go to the calls, और कॉल के ऊपर silence unknown calls का बटन उसको ऑन कर दीजिए, then again that no one is you are not going to be get the unknown person call, right? So this is a good features of the WhatsApp. ज्यादातर ट्रैक करना WhatsApp को पहले इजी नहीं था, बहुत सारे कॉल आते थे, नाउ WhatsApp इज बेसिकली पुटिंग दिस फीचर, सो अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस। वैसे ही सेम अगर आप आईफोन यूज कर रहे तो आईफोन के ऊपर भी सिमिलर है, आईफोन का भी ये मैंने दिखाया हुआ है, इफ यू हैव आईफोन, राइट, तो प्राइवेसी सेटिंग्स उसमें जाना है, देन कॉल्स एंड यू कैन ऑन द आईफोन, राइट। So these are the some of the government initiative. I4C किसी को नाम पता है? I4C का नाम किसी को पता है भाई? पीछे लास्ट में I4C, दिस इज अ एजेंसी, बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी जो नोडल एजेंसी है, जो जितने भी साइबर क्राइम जो होते हैं वो क्राइम को रिपोर्ट से लेके जो भी चीजें उसकी इन्वेस्टिगेशन की मेथड से लेके जितनी गवर्नमेंट साइड है वो सारी उन्होंने प्रोवाइड की। तो दीज आर द सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ दिस I4C. So these are developed under the Home Ministry particularly, ठीक है। So again अगर अच्छा ये तो हो गया हमारे क्राइम की बात। नाउ अगर कोई क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है और कहां रिपोर्ट करना है, राइट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सर्च सस्पेक्ट मोबाइल, अगर आपको कोई अननोन नंबर से आता है फोन, ठीक है, और अगर आपको लगता है थ्रेटनिंग मेल या मेल आता है या बैंक अकाउंट कोई मुझसे है, सोशल मीडिया अगर आता है, यूपीआई आईडी आता है, एवरीथिंग इज देयर, अगेन दैट यू कैन गो द cybercrime.gov.in, ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नाउ इट्स अपडेटेड। अच्छा ये साइट पे कितने लोग गए अब तक, ये साइट कितने लोगों ने देखा है? देखना बंद हो गया, हैक हो गया। अच्छा ये साइट को कितना, अच्छा 1% इज गुड। तो ये साइट अपडेट हुआ अभी, इफ यू रिमेंबर, ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, और इसमें एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है सस्पेक्ट डेटा। तो सस्पेक्ट डेटा क्या है? सस्पेक्ट अपने सर्च, अगर मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आपको सर्च कोई करना है या फिर अगर उसको कुछ भी रिपोर्ट करना है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट विद दिस पर्टिकुलर पोर्टल। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड पोर्टल। क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? मोबाइल नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, यूपीआई आईडी अगर आपको कुछ गलत है तो यू कैन रिपोर्ट। सिंपली गो थ्रू विद दी, अपना कैप्चा फिलअप कर लीजिए, कैप्चा के बाद वो आपको हो जाएगा। सस्पेक्ट वेबसाइट एप्लीकेशन, सो अगेन दैट कोई वेबसाइट, जैसे मैंने वो क्राइम की बताया ना, वो लॉयर की, तो कोई वेबसाइट का आपको यूआरएल मिलता है कि भाई ये वेबसाइट है सस्पेक्टेड है या फिर ये क्लोन वेबसाइट है या फिशिंग वाली साइट है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो ये आप यहाँ से रिपोर्ट वेबसाइट को भी कर सकते हैं, यू कैन पुट ओवर हियर कौन सी कैटेगरी में आती है यूआरएल, अगर यूआरएल पेस्ट करिए मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप का नाम लिख दीजिए, बिकॉज नंबर ऑफ मोबाइल ऐप नाउ इज अवेलेबल, फेक मोबाइल ऐप ऑन दी गूगल प्ले, राइट। सो दिस कैन यू कैन रिपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। देन सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन अगर आपको रिपोर्ट करनी है कहीं से भी, तो इज अगेन देयर यू कैन गो विद दी सस्पेक्ट डेटा, एंड अगेन दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स यू कैन डू ओवर हियर। ये सारे प्लेटफॉर्म है। देखिए व्हाट्सएप को आपको करना है, अपने यूआरएल को करना है, व्हाट्सएप नंबर को करना है, फोन नंबर को करना है, ईमेल आईडी, देन एसएमएस हेडर, सोशल मीडिया यूआरएल एंड डीप फेक। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट डीप फेक का। तो डीप फेक को भी आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर
कोई भी चीज आप अगर एनकाउंटर हो, आपको कहीं से आपको मिल गई, आपको आपको कोई लिंक से आई या आपने कोई इसको देखा, तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी द लिंक एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर, वो डायरेक्टली सीधी वहां से ब्लॉक कर देंगे। तो अगेन दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी। लेकिन कितने लोग ये करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। ऐसा नहीं कि एक लोग ने फिर अच्छा कोई इसमें किसी की राइट वेबसाइट है या फिर अच्छी उसको रिपोर्ट कर लिया तो बंद, ऐसा नहीं होगा, राइट। So they are putting number, how many numbers are reported. So again that website URL insert supporting evidence, so you need to be, आपको सारे evidence वहाँ पे देने होंगे साइट के ऊपर, then you can put that, right. Then the संचार सारथी, this is a very very important development by the TRAI. Really congratulate and really appreciate the TRAI. sorry DOT. तो DOT का ये बहुत ही important side है जो कि इसमें they are come up with a number of features, right. So if you observe there is a चक्षु, there is again a CEIR, अगर फोन आपका चोरी हो जाता है, ब्लॉक करना है, then again टैप ऑफ, कितने आपके नाम पे कितने मोबाइल आपके पास है, नंबर कितने अलॉट आपके हुए, अगर आपका नंबर अलॉट नहीं हुआ है you can directly remove from there or report over there. Then again IMEI नंबर वेरिफिकेशन करना है, अगर सेकंड में आप किसी से फोन लेते हैं you can डायरेक्ट, कई बार चोरी का फोन आ जाता है तो you can verify your number from here, राइट। रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल, अभी तो मुझे ये भी पता चला कि जो ये सारे सेल चलते हैं ना ऑनलाइन में, तो उसमें भी कई बार ऐसा आता है कि जो आपका जो बॉक्स होता है उस पे IMEI अलग होता है और अंदर IMEI अलग होता है। यू नीड टू बी जस्ट कम चेक दी डबल चेक, यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वो सही, तो वो रिफर्बिश हो जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ क्राइम हैपन ऑन विद दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो। रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन नो योर, अच्छा आपके सर्विस प्रोवाइडर में कौन नजदीक में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो जितने भी इंटरनेट कनेक्शन वाले कौन है, सस्ती कौन प्रोवाइड करे किसका, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर। नाउ चक्षु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट द सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। अच्छा ये फ्रॉड कम्युनिकेशन कोई कर रहा है उसको रिपोर्ट करना है, लेकिन आप विक्टिम अगर हो गए तो यू नीड टू बी रिपोर्ट द cybercrime.gov.in, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना नहीं है। कई बार हमको ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, सर मेरे साथ ये हुआ, पुलिस वाले के पास जाते हैं, सर मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, मुझे ये चीज आती है, तो हम इसको क्या करें। तो पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले नहीं सर आपके साथ कोई क्राइम हुआ तभी हम रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट। तो अगर ये सिटीजन जाए कहाँ, अगर इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे फ्रॉड कॉल आते हैं, तो रिपोर्ट कर। तो चक्षु इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन ओवर देयर, तो वहां से इमीडिएटली ये लोग ब्लॉक कर देंगे उसको। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द डॉट। देन दिस इज अ प्रोसीजर, राइट, अगेन सपोर्ट द इन्वेस्टिगेटेड। अगर ओके ये जो है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसके ऊपर हाउ टू रिपोर्ट द क्राइम, ये डिटेलिंग आपको यहां से फिलअप कर सकते हैं। और दिस इज द सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे भी कोई आपको फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कॉल 1930, राइट। तो ये जाते हैं तो यहाँ पे ये लोग रजिस्टर पूरा आपका डिटेलिंग उनके इमीडिएट, इज अ वेरी गुड फैसिलिटी एक्चुअली। एंड बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें बचे, वी हैव एक्चुअली सेव नंबर ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ आवर क्लाइंट विद दैट। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है कि इनका कॉल जल्दी लगता नहीं है, ठीक बराबर है, बहुत बार उसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग अ गुड जॉब। So again, if you are encounter with that 1930, then again all this procedure are already let down over here. Then if you see that अगर पैसे आपके फिर भी नहीं आते कोई जगह पे, तो RBI is a good scheme of nation one amusement scheme. Again, this one of the nodal agency. ये बैंकिंग, अगर बैंक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कोई चीज में, तो बैंक को रिपोर्ट करने के लिए, बैंक आपकी बात नहीं सुन रही है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट विद द अम्यूजमेंट। इनका भी एक कंप्लेंट फॉर्मेट है, right. Then again is the RBI, you can directly log on to that particular website and fill up the everything, the procedure. UPI dispute redressal mechanism, अगर कोई UPI है, UPI से आपका कोई फ्रॉड हुआ है, तो again that you can let down with the NPCI, National Payment Corporation of India, right. So it's a great way to report your UPI फ्रॉड कोई अगर होता है तो। Then again that you need to be keep all this detail, आपको ये सारी डिटेल आपके पास इसमें रखनी चाहिए, राइट। ट्रांजैक्शन पेंडिंग कितना, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डेलीगेट, ये आपको सारा ऑप्शन इसमें मिलते हैं। अगेन दैट यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर केयर नंबर, कई बार ये नंबर लगते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट है नंबर, ये जितने भी वॉलेट प्रोवाइडर है जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी आप यहाँ से रिपोर्ट, अगर उनके बारे में कोई क्राइम, अभी एक क्राइम चल रहा है पेटीएम का और फिर बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी बैंक है उनका, कि वो लोग आपका फेस से डायरेक्टली आपको मैसेज आता है, डायरेक्टली पेटीएम आपने उसको क्लिक कर लिया तो आपका केवाईसी वो लोग कर देते, आपके नाम पे लोन डिस्पर्स कर देते हैं। तो डिस्पर्स करने के बाद आपको जरूरत नहीं, फिर भी वो आपके मांगे कि भाई आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा,
तो एक सारे अभी बहुत सारे ऐसे 3-4 हमारे पास लोग आए कि सर मैंने तो खाली क्लिक किया था और हमारा खाली फेस केवाईसी कर लिया और अब ये बोल रहे कि हमने 10,000 रुपये आपको, मैंने यूज भी नहीं किया पैसा, मेरा पैसा वहां पर है और अभी मेरे पास ये अभी इंटरेस्ट मांग रहे हैं इसका, तो हाउ कैन आई पे दैट? और इसको सेटल करने के लिए वो लोग वापस पैसा मांगते हैं, एटीएम और ये सारी चीजें। तो अगेन दैट इट्स अ, तो ये चीजें हो रही है, ठीक है, आपको अवेयर मींस सी एवरीथिंग हैज अ ऑप्शन, लेकिन एक चीज है कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा फॉर द राइट प्लेस, राइट? देन अगेन these are the some of the very important agencies number. Again, you can contact to the any lawyer or any cyber expert who basically know about the technology crime. You can file a complaint in your cyber police station. Cyber police station में सूरत के अंदर ऐसा है कि if you have a complaint of more than 5 lakhs, then they are going to be reported in the cyber police station. 5 लाख के नीचे का कोई कंप्लेन अगर आपका होता है तो आपको अपने लोकल जुरिडिक्शन जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपको अपना कंप्लेंट फाइल करना होता है, राइट? So again, these are the some of नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, यहाँ पे भी कंज्यूमर रिलेटेड कोई ऑफेंस है। अच्छा, नया जो कंज्यूमर लॉ है 2019 कंज्यूमर एक्ट है, वहां पे ऑनलाइन जितनी भी चीज आप परचेज करते हैं उसके लिए आपको कोई कंप्लेन है, कोई चीज ठीक से नहीं आई है, राइट? तो उसके लिए भी 1950 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म, कंज्यूमर रिट्रेसल मैकेनिज्म। देन द हेल्पलाइन पोर्टल इज दैट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अच्छा, कई बार ये होता है कि यार ये वॉलेट है सर, ये वॉलेट है, ये कौन, इसका नोडल एजेंसी कौन है, कहां पे मैं कांटेक्ट करूं, ये वॉलेट का नंबर मुझे कहां से मिलेगा, इसका ऑफिसर कौन है, ये बैंक का ऑफिसर कौन है? Whatever you need to find, this is a very good search engine 420.in. You can find any nodal agency number, any audit number from this particular search engine. अगर आपने यहाँ पे डाल दिया, then you can get each and every detail from this particular nodal agent number, right? So last but not least, मैं ये कहना चाहूंगा खाली don't be a victim, be a responsible डिजिटल सिटीजन। अगर आप टेक्नोलॉजी का सेंसिबल यूज करेंगे, इनोवेशन में यूज करेंगे, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी विक्टिमाइज। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी ये पड़ेगी हमको कि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो चीजें उसको आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट? और क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कोई कंस्ट्रक्टिव वे है या नहीं है, ठीक है? अगर मैं कंस्ट्रक्टिव पर्पज से यूज नहीं कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी, क्या करेगा वो, मेरी अगेंस्ट में काम करेगा। इट्स गोइंग टू बी टेक माई टाइम, इट्स गोइंग टू बी वैनिश माई पोटेंशियल। जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं वो मेरा टाइम कहां चला जाएगा, अननेसेसरी थिंग में, रील देखने में। ना ज्यादातर टाइम कहां जाता है अपना, रील देखने में जाता है ना, 90% तो रील देखने नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं सर मैं उसमें सीखता हूं, लेकिन क्या सीखते हो रील देखने में, क्या सीखते हो रील देखने में, राइट? So these are the some of the nowadays mentally problem are also arising. ठीक है, इसका फाइनेंशियल लॉस तो ठीक है, लेकिन जो मेंटली लॉस है ये तो इरिपेरेबल है, इसको रिपेयर करना भी मुश्किल है। और कई लोग अभी 2 दिन, आज कल की बात मैं करूं, एक इन्फ्लुएंसर है, तुर्की की इन्फ्लुएंसर लेडी है, 25 इयर्स की, आज की या कल की उसमें है, उसका पेपर में है, सी कमिटेड सुसाइड, इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है? उससे पहले भी एक फॉरेन की, एक पाकिस्तानी एक थी जो मॉडल थी, उसने सुसाइड कमिट किया था। इज अ वेरी टिकटॉक गर्ल, उसका नाम था, टिकटॉक में वो बहुत फेमस थी। तो ये जो फेमस जो आपको ये ख्याति मिलती है शॉर्ट टाइम में, ठीक है, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड से आप जितना बाहर निकलोगे, ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें हमने ये सीखी कि भाई वर्चुअल वर्ल्ड को इंटरेक्ट कैसे करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसका सेंसिबल यूज कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माइंड को इफेक्ट करती है, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि इंडियन कल्चर को आपको समझना होगा। जैसे तो वेस्टर्न कल्चर का एक है, वहां पे वो लोग इस तरह से रहते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर का बेस पकड़ के चलेंगे अगर, तो आप कहीं पे पीछे नहीं जाएंगे, राइट? तो अगेन वी नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर कोर वैल्यूज ऑफ आवर नेशन। हमारे नेशन की कोर वैल्यू क्या है ये हमें समझनी होगी, और ये खास करके यूथ को समझनी होगी। क्यों समझनी होगी? क्योंकि आपको आगे जाके लीड करना है, इसलिए। सो वंस अगेन आई कंक्लूड माय सेशन, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, तो मैं गांधी जी के एक लास्ट सेंटेंस से अपने कंक्लूड करूंगा। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड बी अननोन पर्सन। सर मुझे बात करना जरा दो ना, 2 मिनट मुझे बात करें। नेवर गिव दैट पर्सन। अगेन दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की। क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको एक स्लाइड में बताऊंगा। So again that major crimes are happen due to the unsecure password. और जनरली पासवर्ड हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? और मे बी दैट ABCDEFG 1 2 3 4, ये अपना नाम, ये अपना बर्थडे, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाउस नेम, वो अपने घर का नाम किसी का, या किसी ने अपना मोबाइल का नंबर डाल दिया। मेरे पास एक लेडी आया था, मुझे बोला कि सर मेरा व्हाट्सएप मेरा अकाउंट हैक हो गया फेसबुक का। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो जैसे अबाउट में देखा, मैंने कहा अपना उनका नंबर डाला, मोबाइल नंबर। मैंने कहा आपका पासवर्ड क्या है? सर यही नंबर है मेरा पासवर्ड।
So what she provided each and every detail over there first of all, and she told me, "यार मेरा account hack हो गया." It is not possible. But now because you are not aware which kind of password you need to make, which is a secure password practices, so 99% cases में हमारी practice ऐसी मैंने observe किया है अब तक से कि जिनको secure password use करना आता नहीं, क्यों नहीं करते? Because we forget the password. हमको याद नहीं रहता सर, मुझे याद कैसे रहेगा? तो there are the number of things. वो टिप्स है सारे, मेरी कॉपीराइटेड है लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, कभी बताऊंगा बाद में टाइम मिला तो. Implemented two-factor and multi-factor authentication, right? So this is the most important practices. कोई भी अकाउंट बनाए, create the multi-factor authentication, right? सभी में अब फैसिलिटी सभी अकाउंट में होती है, right? Conduct regular business risk assessment. तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके रिस्क को एसेस कंटिन्यूसली करिए, बिकॉज एवरी डे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे एंड अगेन द न्यू काइंड ऑफ मॉडल्स ऑपरेटिंग, न्यू काइंड ऑफ क्राइम्स आर गोइंग टू बी हैपन. तो आपको हमेशा वो चेंज करना पड़ेगा. अगर एक बार मैंने बना लिया अच्छा हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा. कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, आपको सिक्योरिटी ऑडिट भी कंटिन्यूसली करना होगा. इम्प्लीमेंट नेटवर्क सेगमेंटेशन. तो नेटवर्क, एक नेटवर्क में लैन में मत बने, उसमें नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क को क्रिएट कीजिए. So it means basically creating more secure network. जैसे इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट सबको पता है, right? So again, if you are creating network under the network, it will be more secure compared to the direct network. Then they provide cyber security training and education. You need to be continuously educate yourself. अगर मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे सब कुछ पता है, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, आपको सबको पता है मार्क जुकरबर्ग का अकाउंट कितनी बार हैक हो चुका है? कितनी बार हैक हो चुका है मार्क जुकरबर्ग का? 4 बार उसका अकाउंट हैक हो चुका है मार्क जुकरबर्ग का. ठीक है, उसके पास पूरा साइबर सिक्योरिटी का टीम है, उसके पास लॉ का टीम है, सब कुछ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी उसका अकाउंट 4 बार हैक हो चुका है, राइट? So again that if you say कि यार मैं absolutely am secure, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, this is a completely myth in the cyber world. Anyone can be victim. कोई भी बंदा विक्टिम बन सकता है. ये मेरा शब्द याद रखना, anyone can be victim, right? Maintain regular data backups. So again you need to be continuously back up your data. You need to be continuously take your data. Use role based access control or privilege access management. So again अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको क्या क्या कोई किसका पोस्ट है उसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए, दैट यू नीड टू बी कम अप विद द नेटवर्क पोजीशन, राइट? इंप्लीमेंट डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस. तो मुझे किसी ने बताया डेटा इंक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. तो अगेन दैट यू कैन मेक अ डेटा इंक्रिप्शन. डेटा इंक्रिप्शन किसको पता है क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन प्लीज रेज योर हैंड. इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? यस, ये बताइए. आपके जो मैसेजेस है वो आप और सामने वाले तक किसी को एग्जैक्टली. यानी एक व्हाट्सएप में भी आता है कि हम लोग डेटा को आपका इंक्रिप्ट करके भेजते हैं, ठीक है? तो आपका मैसेज बच्चे बीच में से कोई उसको ले नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता. तो वैसे भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है प्रोटोन करके, तो दे आर आल्सो प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस इंक्रिप्टेड डेटा, राइट? प्रोटोन क्या क्या करता है? जीमेल नहीं प्रोवाइड करता लेकिन प्रोटोन कर रहा है. तो अगेन दैट यू कैन इंक्रिप्ट विद द सॉफ्टवेयर. अगर नॉर्मल मेल में भी मैं इंक्रिप्ट डेटा कर सकता हूं, तो अगेन दैट इट विल मोर सिक्योर टू कम्युनिकेशन. तो अगेन यूज द VPN. So again, if you are exploring the number of things, यूथ को मैं खास बताता हूँ, जो लोग खास करके डार्क वेब सर्च करते हैं, if you are using a dark web, you are surfing a dark web, you can just use the VPN. और उसमें से कंजूसाई मत करिएगा, पेड VPN यूज करिएगा. पेड VPN बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, so it will be make you more secure on the dark web if you are using that. Then perform regular security test. तो पेन टेस्टिंग सबको पता है, yes or no? पेन टेस्टिंग का नाम सुना है, yes or no? तो पेन टेस्टिंग यानी नेटवर्क का होता है, एप्लीकेशन का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है. तो सबका पेन टेस्टिंग यानी क्या? इसका सिक्योरिटी चेकअप होता है. तो अगेन दैट यू नीड टू बी कंटिन्यूअसली डू दैट प्रैक्टिसेस. परफॉर्म वेंडर ड्यू डिलिजेंस. यानी वेंडर का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं किसी की सर्विस ले रहा हूँ, एक जोहो करके एक सॉफ्टवेयर है, जोहो, पता है नाम किसी को? जोहो. तो जोहो प्रोवाइडिंग दी एक्सटर्नल, आपको पूरा अकाउंट ही उसको पूरा अपना CRM प्रोवाइड करता है. तो जैसे आप जिसका भी वेंडर का आप ले रहे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उनका भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से उसका डेटा ब्रीच हुआ तो आपका डेटा वहां पे चला जाएगा, राइट? इंस्टॉल बेसिक नेटवर्क एंड डिवाइस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. अगेन दैट हायर अ CISO. CISO का मतलब क्या है? सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. So you need to be put a person who is basically know about the technology, who basically understand the technology. उसका एक सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी और आपका इन्वेस्टिगेटर चाहिए आपको, राइट? So utilize the third party risk management and utilize the attack surface management. These are the some of the basic things you need to be do. अच्छा, आपको अगर कोई अननोन लिंक आती है, अच्छा वो लिंक आपकी प्रॉपर है कि नहीं, वो आपको अगर सर्च करना है तो वो लिंक को एक्सपांड करना है कि ये लिंक, जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, तो अननोन लिंक को अगर जानना है उसको एक्सपांड करना, दिस इज अ वेरी गुड टूल कॉल्ड द urls.org.
अब ये इसके ऊपर अपना लिंक डाल दीजिए, इसको एक्सपांड कर दीजिए, उसका ओरिजिनल जो यूआरएल है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। सो अगेन दैट यू कैन पुट योरसेल्फ, आप इससे बच सकते हैं, राइट। देन अगेन अगर आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, मोस्टली आपका जितने भी अकाउंट है एसोसिएटेड विद योर ईमेल अकाउंट, अगर ईमेल अकाउंट है आपका जो कॉम्प्रोमाइज होता है तो क्या होता है, आपके सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज, अगर बैंक के साथ लिंक है, आपके सोशल मीडिया के साथ लिंक है, एवरीवन इज लिंक्ड, राइट। तो ये क्या कर रहा है, अगर आपने अपना ईमेल डाला तो आपका ईमेल सिक्योर है कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी शो यू। ग्रीन और रेड आता है, रेड में आ गया तो आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ग्रीन में है तो योर ईमेल इज सिक्योर, अगर रेड में आया तो इमीडिएटली यू कैन change the password of your email. So it is a good practice to change the password immediately. Now this is a password generator tool. अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि it is a way to generate the secure password. लेकिन फिर भी एक साइड है, ये भी आपका पासवर्ड ले सकती है, राइट। यानी यहाँ पे आपने बनाया तो आपका पासवर्ड भी तो उसके पास चला गया। तो what can you do that? You can just generate the password with the alpha numerical special character upper lower case, एंड वहां पे अपने एक या दो चीज को अपने नाम के साथ या अपने जो इनिशिएट के साथ आप चेंज करके अपना सिक्योर पासवर्ड बनाते हैं। जस्ट ट्रीट योर पासवर्ड एज योर टूथब्रश। याद कैसे रखें? वो तो कॉपीराइटेड है, मैं बताता हूँ बाद में। तो ये जो है ये चीज ऐसे है कि अगर आपको ये आप करेंगे तो जनरली एवरी 3 months यू नीड टू बी चेंज योर पासवर्ड, राइट। अच्छा, मैं जैसे सर ने बताया कि कैसे याद रखे, तो मेरा एक स्टाइल है, अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना कर सकते हैं। यू कैन डू वन थिंग कि भाई आपको पासवर्ड अगर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई अपने यहाँ पे इंडिया इज बेसिकली कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, हमारे साल में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो अगर ये हर एक त्यौहार के ऊपर एक अपना उसकी डेट है, जो त्यौहार क्योंकि अलग अलग डेट के ऊपर आते हैं, तो उनकी जो डेट है, उनके जो नाम है, उनके साथ में आपका जो ईयर है, उनको एक कंबाइन अपर लोअर केस में करके आप उसको याद कर सकते हैं, राइट। तो एक आपका एवरी ईयर के अंदर वो 12 महीने में आपके 12 त्यौहार तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 12 महीने में अगर आपको 3 या 4 बार आपको चेंज करना है तो इट विल बी इजियर, आपको वहां पे मार्क कर देना आपके कैलेंडर में कि दिस इज व्हाट योर पासवर्ड फॉर दिस ईयर, राइट। तो वहां पे जाके आप उसको ये रिकनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा मेरा पासवर्ड ये है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, दिस इज सम ऑफ द थिंग। अच्छा, इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन पुट योर पासवर्ड। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पासवर्ड इज द सिक्योर पास फ्रेज। पास फ्रेज का मतलब है यू कैन यूज दैट वन लाइन, आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो आई मैंने 1 बना दिया, एल को मैंने कैपिटल कर दिया, ओ को मैंने 0 कर दिया, वी को मैंने कॉमा ये कर दिया, ए को मैंने @ कर दिया, तो अल्फा न्यूमेरिकल अपर लोअर एक पूरा लाइन आ गया और 18 कैरेक्टर के ऊपर आ गया, तो आई लव टू प्ले क्रिकेट इज योर पासवर्ड। लेकिन उसका कॉम्बिनेशन है वो किसी को पता नहीं, आपके सिवा। So it is also one of the ways that you can put your password from. अच्छा, ये WhatsApp, ये अब तक कॉलों की बात हो रही थी, लेकिन अभी WhatsApp का ये नया अपडेट है, किसी को बताइए, साइलेंस ऑफ द स्पैम WhatsApp के ऊपर कॉल आता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? अननोन कॉल आता है WhatsApp के ऊपर, तो क्या करेंगे आप? So again, this is a new feature, silence spam WhatsApp calls. So this is again you can practice, क्योंकि अब ज्यादातर कॉल आपको WhatsApp के ऊपर आ रहे हैं, right? So this is a setting you can do. Open WhatsApp your Android phone. Again that 3 dots ऊपर है, उसको क्लिक कर लीजिए आप, वहां पे जाके सेटिंग्स में चले जाइए. Then you can go to the privacy. You can put the privacy over here. Again then go to the calls, और कॉल के ऊपर silence unknown calls का बटन है, उसको ऑन कर दीजिए. Then again that no one is you are not going to be get the unknown person call, right? So this is a good features of the WhatsApp. ज्यादातर ट्रैक करना WhatsApp को पहले इजी नहीं था, बहुत सारे कॉल आते थे. Now WhatsApp is basically putting this feature. So again it's a good practice. वैसे ही सेम अगर आप iPhone यूज करें तो iPhone के ऊपर भी सिमिलर है. iPhone का भी ये मैंने दिखाया हुआ है. If you have iPhone, right? So privacy settings उसमें जाना है. Then calls and you can on the iPhone, right? So these are the some of the government initiative. I4C किसी को नाम पता है? I4C का नाम किसी को पता है? भाई पीछे लास्ट में I4C. This is a agency, basically government agency, जो नोडल एजेंसी है, जो जितने भी साइबर क्राइम जो होते हैं वो क्राइम को रिपोर्ट से लेके जो भी चीजें उसकी इन्वेस्टिगेशन की मेथड से लेके जितनी गवर्नमेंट साइड है वो सारी उन्होंने प्रोवाइड की. तो these are the some of the very important units of this I4C. So these are developed under the Home Ministry particularly. ठीक है. तो अगेन अगर अच्छा ये तो हो गया हमारे क्राइम की बात. नाउ अगर कोई क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है और कहां रिपोर्ट करना है, राइट? इट इज मोर इंपॉर्टेंट.
तो सर्च सस्पेक्ट मोबाइल, अगर आपको कोई अननोन नंबर से आता है फोन, ठीक है, और अगर आपको लगता है थ्रेटनिंग मेल या मेल आता है या बैंक अकाउंट कोई पूछता है, सोशल मीडिया अगर आता है, यूपीआई आईडी आता है, एवरीथिंग इज देयर। अगेन दैट यू कैन गो टू cybercrime.gov.in, ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नाउ इट्स अपडेटेड। अच्छा, ये साइट पे कितने लोग गए अब तक, ये साइट कितने लोगों ने देखा है? देखना बंद हो गया, हैक हो गया। अच्छा, ये साइट को कितना, अच्छा 1% इज वो, तो ये साइट अपडेट हुआ अभी, इफ यू रिमेंबर, ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, और इसमें एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है सस्पेक्ट डेटा। तो सस्पेक्ट डेटा क्या है? सस्पेक्ट अपने सर्च, अगर मोबाइल नंबर, ईमेल है, आपको सर्च कोई करना है या फिर अगर उसको कुछ भी रिपोर्ट करना है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट विद दिस पर्टिकुलर पोर्टल। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड पोर्टल। क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? मोबाइल नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर आप रख सकते हैं, यूपीआई आईडी अगर आपको कोई चला जाए तो यू कैन रिपोर्ट। सिंपली गो थ्रू विद दी, अपना कैप्चा फिलअप कर लीजिए, कैप्चा के बाद वो आपको हो जाएगा। सस्पेक्ट वेबसाइट एप्लीकेशन। सो अगेन दैट, कोई वेबसाइट, जैसे मैंने वो क्राइम की बताया ना, वो लॉयर की, तो कोई वेबसाइट का आपको यूआरएल मिलता है कि भाई वेबसाइट ये सस्पेक्टेड है या फिर ये क्लोन वेबसाइट है या फिशिंग वाली साइट है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो ये आप यहाँ से रिपोर्ट वेबसाइट को भी कर सकते हैं। यू कैन पुट इट ओवर हियर, कौन सी कैटेगरी में आती है यूआरएल, अगर यूआरएल पेस्ट कर लीजिए, मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप का नाम लिख दीजिए, बिकॉज नंबर ऑफ मोबाइल ऐप्स नाउ इज अवेलेबल, फेक मोबाइल ऐप ऑन दी गूगल प्ले, राइट? सो दिस कैन यू कैन रिपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। देन सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन अगर आपको रिपोर्ट करनी है कहीं से भी, तो इज अगेन देयर यू कैन गो विद दी सस्पेक्ट डेटा, एंड अगेन दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स यू कैन डू ओवर हियर। ये सारे प्लेटफॉर्म है। देखिए, व्हाट्सएप को आपको करना है, अपने यूआरएल को करना है, व्हाट्सएप नंबर को करना है, फोन नंबर को करना है, ईमेल आईडी, देन एसएमएस हेडर, सोशल मीडिया यूआरएल एंड डीप फेक। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट डीप फेक का। तो डीप फेक को भी आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज आप अगर एनकाउंटर हो जाए, आपको कहीं से आपको मिल गई, आपको कोई लिंक से आई या आपने कोई इसको देखा, तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी द लिंक एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर, वो डायरेक्टली सीधी वहां से ब्लॉक कर देंगे। तो अगेन दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी। लेकिन कितने लोग ये करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट? ऐसा नहीं कि एक लोग ने फिर अच्छा कोई इसमें किसी की राइट वेबसाइट है या फिर अच्छी उसको रिपोर्ट कर लिया तो बंद हो, ऐसा नहीं होगा, राइट? So they are putting number, how many numbers are reported. So again that website URL insert supporting evidence. So you need to be, आपको सारे evidence वहाँ पे देने होंगे साइट के ऊपर. Then you can put that, right? Then the संचार सारथी. This is a very very important development by the TRAI. Really congratulate and really appreciate the TRAI. Sorry DOT. तो DOT का ये बहुत ही important side है जो कि इसमें they are come up with a number of features, right? So if you observe there is a चक्षु, there is again a CEIR. अगर फोन आपका चोरी हो जाता है, ब्लॉक करना है, then again टैफकॉफ, कितने आपके नाम पे कितने मोबाइल आपके पास है, नंबर कितने अलॉट आपके हुए, अगर आपका नंबर अलॉट नहीं हुआ है you can directly remove from there or report over there. Then again IMEI नंबर वेरिफिकेशन करना है, अगर सेकंड में आप किसी से फोन लेते हैं you can डायरेक्ट, कई बार चोरी का फोन आ जाता है तो you can verify your number from here, right? Report incoming international. अभी तो मुझे ये भी पता चला कि जो ये सारे सेल चलते हैं ना ऑनलाइन में, तो उसमें भी कई बार ऐसा आता है कि जो आपका जो बॉक्स होता है उस पे IMEI अलग होता है और अंदर IMEI अलग होता है. You need to be just check the double check. यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वो सही तो वो रिफर्बिश हो जाता है. So there are number of crime happen on that with that particular thing also. Report incoming international call तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं. अगेन नो योर, अच्छा आपके सर्विस प्रोवाइडर में कौन नजदीक में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो जितने भी इंटरनेट कनेक्शन वाले कौन है, सस्ती कौन प्रोवाइड करे किसका, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर. नाउ चक्षु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिपोर्ट द सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन. अच्छा ये फ्रॉड कम्युनिकेशन कोई कर रहा है उसको रिपोर्ट करना है, लेकिन आप विक्टिम अगर हो गए हैं तो यू नीड टू बी रिपोर्ट द cybercrime.gov.in. तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना नहीं है. कई बार हमको ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, सर मेरे साथ ये हुआ, पुलिस वाले के पास जाते हैं, सर मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, मुझे ये चीज आती है, तो हम इसको क्या करें? तो पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले नहीं सर आपके साथ कोई क्राइम हुआ तभी हम रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट. तो अगर ये सिटीजन जाए कहाँ, अगर इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे फ्रॉड कॉल आते हैं तो रिपोर्ट कर. तो चक्षु इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म. यू कैन रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन ओवर देयर. तो वहां से इमीडिएटली ये लोग ब्लॉक कर देंगे उसको. तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द डॉट. Then this is a procedure, right? Again support the investigated. Okay, ये जो है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसके ऊपर हाउ टू रिपोर्ट द क्राइम ये डिटेलिंग आपको यहाँ से फिल अप कर सकते हैं. और दिस इज द सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम.
जैसे भी कोई आपको फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कॉल 1930, राइट। तो ये जाते हैं तो यहाँ पे ये लोग रजिस्टर पूरा आपका डिटेलिंग उनके इमीडिएटली, इज अ वेरी गुड फैसिलिटी एक्चुअली। एंड बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें बचे। वी हैव एक्चुअली सेव नंबर ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ आवर क्लाइंट विद दैट। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है कि भाई इनका कॉल जल्दी लगता नहीं है, ठीक बराबर, बहुत बार उसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग अ गुड जॉब। So again, if you are encounter with that 1930, then again all this procedure are already let down over here. Then if you see that अगर पैसे आपके फिर भी नहीं आते कोई जगह पे, तो RBI is a good scheme of nation one amusement scheme. Again, this one of the nodal agency. ये बैंकिंग, अगर बैंक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कोई चीज में, तो बैंक को रिपोर्ट करने के लिए, बैंक आपकी बात नहीं सुन रही है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट विद द अम्यूजमेंट। इनका भी एक कंप्लेंट फॉर्मेट है, right? Then again is the RBI, you can directly log on to that particular website and fill up the everything, the procedure. UPI dispute redressal mechanism, अगर कोई UPI है, UPI से आपका कोई फ्रॉड हुआ है, तो again that you can get down with the NPCI, National Payment Corporation of India, right? So it's a great way to report your UPI fraud कोई अगर होता है तो। Then again that you need to be keep all this detail, आपको ये सारी डिटेल आपके पास इसमें रखनी चाहिए, राइट। ट्रांजैक्शन पेंडिंग कितना, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डेलीगेट, ये आपको सारा ऑप्शन इसमें मिलते हैं। अगेन दैट यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर केयर नंबर, कई बार ये नंबर लगते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट है नंबर, ये जितने भी वॉलेट प्रोवाइडर है जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी आप यहाँ से रिपोर्ट, अगर उनके बारे में कोई क्राइम, अभी एक क्राइम चल रहा है पेटीएम का और फिर बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी बैंक है उनका, कि वो लोग आपका फेस से डायरेक्टली आपको मैसेज आता है, डायरेक्टली पेटीएम आपने उसको क्लिक कर लिया तो आपका केवाईसी वो लोग कर दे, आपके नाम पे लोन डिस्पर्स कर देते हैं। तो डिस्पर्स करने के बाद आपको जरूरत नहीं, फिर भी वो आपके मांगे कि भाई आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो एक सारे अभी बहुत सारे ऐसे 3-4 हमारे पास लोग आए कि सर मैंने तो खाली क्लिक किया था और हमारा खाली फेस केवाईसी कर लिया, और अब ये बोल रहे कि अपने 10,000 रुपये आपको, मैंने यूज भी नहीं किया पैसा, मेरा पैसा वहां पर है और अभी मेरे पास ये अभी इंटरेस्ट मांग रहे हैं इसका, तो हाउ कैन आई पे दैट? और इसको सेटल करने के लिए वो लोग वापस पैसा मांगते हैं, पेटीएम और ये सारी चीजें। तो अगेन दैट इज अ, तो ये चीजें हो रही है, ठीक है। आपको अवेयर मींस सी एवरीथिंग हैज अ ऑप्शन, लेकिन एक चीज है कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा फॉर द राइट प्लेस, राइट। देन अगेन these are the some of the very important agencies number. Again you can contact to the any lawyer or any cyber expert who basically know about the technology crime. You can file a complaint in your cyber police station. Cyber police station में सूरत के अंदर ऐसा है, if you have a complaint of more than 5 lakhs then they are going to be reported in the cyber police station. 5 लाख के नीचे का कोई कंप्लेंट अगर आपका होता है तो आपको अपने लोकल जुरिडिक्शन जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपको अपना कंप्लेंट फाइल करना होता है, राइट। So again, these are the some of नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। यहाँ पे भी कंज्यूमर रिलेटेड कोई ऑफेंस है, अच्छा नया जो कंज्यूमर लॉ है 2019 कंज्यूमर एक्ट है, वहां पे ऑनलाइन जितनी भी चीज आप परचेज करते हैं उसके लिए आपको कोई कंप्लेन है, कोई चीज ठीक से नहीं आई है, राइट, तो उसके लिए भी 1950 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म, कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म। देन द हेल्पलाइन पोर्टल इज दैट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अच्छा कई बार ये होता है कि यार ये वॉलेट है सर, ये वॉलेट है, ये कौन, इसका नोडल एजेंसी कौन है, कहां पे मैं कांटेक्ट करूं, ये वॉलेट का नंबर मुझे कहां से मिलेगा, इसका ऑफिसर कौन है, ये बैंक का ऑफिसर कौन है। Whatever you need to find, this is a very good search engine 420.in. You can find any nodal agency number, any authorized number from this particular search engine. अगर आपने यहाँ पे डाल दिया then you can get each and every detail from this particular nodal number, right? So last but not least मैं ये कहना चाहूंगा खाली, don't be a victim, be a responsible डिजिटल सिटीजन। अगर आप टेक्नोलॉजी का सेंसिबल यूज करेंगे, इनोवेशन में यूज करेंगे, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी विक्टिमाइज। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी ये पड़ेगी हमको कि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो चीजें उसको आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट। और क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कोई कंस्ट्रक्टिव वे है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव पर्पज से यूज नहीं कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी, क्या करेगा वो मेरी अगेंस्ट में काम करेगा। इट्स गोइंग टू बी टेक माई टाइम, इट्स गोइंग टू बी वैनिश माई पोटेंशियल। जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मेरा टाइम कहाँ चला जाएगा, अननेसेसरी थिंग में, रील देखने में। ना ज्यादातर टाइम कहाँ जाता है अपना, रील देखने में जाता है ना, 90% तो रील देखने नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं सर मैं उसमें सीखता हूँ, लेकिन क्या सीखते हो रील देखने में, क्या सीखते हो रील देखने में, राइट। So these are the some of the nowadays mentally problem are also arising, ठीक है। इसका फाइनेंशियल लॉस तो ठीक है, लेकिन जो मेंटली लॉस है ये तो इरिपेरेबल है, इसको रिपेयर करना भी मुश्किल है।
और कई लोग अभी 2 दिन, आज कल की बात मैं करूं, एक इन्फ्लुएंसर है, तुर्की की इन्फ्लुएंसर लेडी है, 25 इयर्स की, आज की या कल की पेपर उसमें ही, उसका पेपर में है, सी कमिटेड सुसाइड, इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है। उससे पहले भी एक फॉरेन की, एक पाकिस्तानी एक थी जो मॉडल थी, उसने सुसाइड कमिट किया था। इज अ वेरी टिकटॉक गर्ल, उसका नाम था, टिकटॉक में वो बहुत फेमस थी। तो ये जो फेमस जो आपको ये ख्याति मिलती है शॉर्ट टाइम में, ठीक है, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड से आप जितना बाहर निकलोगे, ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें हमने ये सीखी कि भाई वर्चुअल वर्ल्ड को इंटरेक्ट कैसे करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसका सेंसिबल यूज कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माइंड को इम्पैक्ट करती है, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि इंडियन कल्चर को आपको समझना होगा। जैसे तो वेस्टर्न कल्चर का एक है, वहां पे वो लोग इस तरह से रहते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर का बेस पकड़ के चलेंगे अगर, तो आप कहीं पे पीछे नहीं जाएंगे, राइट। तो अगेन वी नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर कोर वैल्यूज ऑफ आवर नेशन। हमारे नेशन की कोर वैल्यू क्या है, ये हमें समझनी होगी, और ये खास करके यूथ को समझनी होगी। क्यों समझनी होगी? क्योंकि आपको आगे जाके लीड करना है, इसलिए। सो वंस अगेन आई कंक्लूड माय सेशन, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, तो मैं गांधी जी के एक लास्ट सेंटेंस से अपने कंक्लूड करूंगा। The difference between what we do and what we are capable of doing would be suffice to solve most of the world's problems. So again, that is not all. I am just concluding my session. Thank you very much once again. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Thank you so much, sir. Your key points will always become helpful in cyber fraud situation. Once again, thank you so much. Now, I would like to request Shri J.P. Garg, sir, for a vote of thanks. Thank you. Hope all are awake. Honorable Sri B. Raghunandan, ex-secretary TRAI, and our honorable chief guest of this function, Sri S.S. Chandak Saab, advisor regional office TRAI, Sri Vijay Mewawala, president SGCCI, Sri Nilay Mandalewala, secretary SGCCI, our distinguished panel of speakers, Professor Dr. Upena Dalal, NIT Surat, Sri Amit Anand, Head Regulatory Affairs Industry Relation Nokia, Sri Arvind Burganti, Global Vice President IDS System, Dr. Raghavendra Pal, Assistant Professor NIT Surat, Dr. Chintan Pathak, Advocate Cyber Security Expert Surat, officers and telecom professionals from BSNL, Airtel, Jio and BIL, member of our consumer advisory group, members of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, our most valued invited guests, ladies and gentlemen, and also students from various colleges and faculty members, print and electronic media representatives. I am honored to present a vote of thanks on behalf of Regional Office of TRAI for a very enlightening and interactive whole-day event on emerging trends in 5G use cases in key sectors. I stand before you today not only as a representative of TRAI, but also as someone deeply appreciative of the collective efforts that has gone in making in this event as a ground success. Today's event has been a remarkable journey into the ever-evolving world of high-speed internet, and it wouldn't have been possible without the active participation from all of you and dedication of our esteemed learned panel speakers, whose insights have been duly enlightening us. 5G use cases applications bring a lot of value in all aspects of our daily life, be it smart city, industry, manufacturing, agriculture, and any field. Firstly, I would like to thank our honorable chief guest, Sri B. Raghunandan sir, ex-secretary TRAI, for taking time out of his busy schedule to join us from Delhi and grace the occasion. Sir, your gracious presence and sharing insight on the importance of such event certainly made this event a memorable one. Further, I want to express my sincere gratitude to Mr. Vijay Mewawala, President SGCCI and Vice President, to be our special guest of honor of this function and grace the occasion. Sir, I am thankful for providing such vast infrastructure for this program
We appreciate the time and efforts you took for this program. Sir, our world may not be capable of communicating our deep sense of gratitude and deepest thanks to our eminent and learned speakers, Upena Dalal Madam, Sri Amit Anand Ji, Arvind Borgani Ji, Dr. Raghavendra Pal, for sharing their invaluable insights and knowledge of emerging trend of 5G use cases in various sectors that have sparked an important conversation that will surely continue beyond today. Sir, your words have truly inspired us, and we all hope to implement these learnings from this event in our personal and professional life. We are truly grateful for the time and efforts that you have put into preparing and delivering such an informative and engaging presentation. I am very much thankful to Dr. Chintan Pathak sir also, who accept our last minute request to take this session on this cyber crime and cyber fraud and prevention line is very awareness insight on this. This session is very important as we can't imagine our life without mobile and internet. I must mention our deep sense of appreciation to all the participants from telecom service providers, CAG members, member of Southern Gujarat Chambers of Commerce and Industry, and our most valued invited guests and officers who actively engage in thorough provoking discussions and ask insightful questions and added value to the discussion and commitment to staying updated in the fast-paced technological environment. I must also acknowledge our tireless volunteer and technical support team extended by Sri Nilay Mandlewala Secretary and Sri Viral Mehta Ji, Deputy Secretary SGCCI, and his entire team who ensured the seamless organization of this event. I also would like to acknowledge our gratitude to media personnel for covering this event and giving event a wide publicity. I also like to mention name of Sri our SS Chandak sir, advisor sir, our mentor guiding right from the planning, regular review of execution of this each task. Without otherwise it would not be possible to organize this event. Last but not least, I may like to express our sincere thanks to all other personnel directly or indirectly associated with this event for their contribution, making this event a grand success. In closing, this seminar has been a testament to the importance of staying updated with this fast evolving technology and landscape. TRAI remain committed to promoting technological advancement and ensuring a conducive regulatory environment. We hope that the knowledge gained during this seminar will inspire future innovation and pave the way for more connected and smarter world. Thank you once again for unwavering support and participation. We eagerly anticipate similar type of event in future too on the topic of common interest and emerging field in the telecom and broadcasting sector. Thank you once again for all of you. Thank you.